never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G. We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek Hyper Engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G. We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek Hyper Engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that never
never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G. We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek Hyper Engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G. We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek Hyper Engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that
never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G. We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek Hyper Engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G. We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek Hyper Engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that
never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G. We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek Hyper Engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G. We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek Hyper Engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that
never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G. We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek Hyper Engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love. Three, two, one, दे दो. So hey guys, welcome back to Qualifier's day 2 of this event right now, which is MediaTek presents BGMI Gaming Masters powered by JioGames. This event is happening for a prize pool of 12.5 lakhs, as you all might know already. And along with us, we have Raider as well with us. And the first match itself is in Erangel here. Beautiful map. And the flight path, as you can see, from Melta Power towards Georgiapol. It's definitely a classic flight path. What do you think about the flight path, Raider? It seems to be like playing classic in the old days, you know? Yeah, of course. कहीं ना कहीं ये जो हमारा प्लेन पाथ जाता है वो दिखेगा. It is going from the eastern area to the western area and it is cutting the map in a diagonal direction. एक diagonal direction में यहाँ पे कट करता हुआ दिखेगा. इसका सबसे बड़ा जो एक इम्प्लीमेंट है वो यहाँ पे होता हुआ दिखेगा. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो यहाँ पे है दैट इज टीम्स कैन गो एवरीवेयर. कहीं भी जंप कर सकती है. एक अच्छा रोटेशन यहाँ पे काट सकती है. टीम्स कैन गो एवरीवेयर व्हाटएवर दे वांट टू डू एंड यहाँ पे अच्छी खासी लूट उनको मिल सकती है. फिलहाल फॉर एग्जांपल अगर हम बोले जॉर्जियापोल की बात करें, if we talk about रोजॉक, if we talk about military base, these kind of places are easily accessible. टीम्स यहाँ पे जा सकती है, आराम से लूट कर सकते हैं. कुछ अच्छी फाइट्स भी आपको ऑन द वे यहाँ पे देखने मिलने वाली है जरूर से. कुछ अच्छी फाइट्स, कुछ अच्छे कार्नेजेस यहाँ पे देखने मिलेंगे. वी हैव 14 टीम्स, 53 प्लेयर्स लिविंग इन द लॉबी एंड देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पे ओवर पावर कर पाती है, कौन सी टीम निकालती है आज का पहला चिकन डिनर. लगातार आपको बैक टू बैक 4 मैचेस देखने मिलने वाले हैं. सो स्ट्रीम पे बने रहिएगा. इस मल्टीपल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ पे चलती हुई दिखेगी पूरी की पूरी स्ट्रीम. यूट्यूब पे है, आई गेस ऑन फेसबुक इज देयर एंड उसके अलावा जियो गेम्स एंड जियो टीवी पे भी आपको स्ट्रीम यहाँ पे देखने को मिलने वाली है. तो एंजॉय कर सकते हो. विच एवर प्लेटफॉर्म यू आर गोइंग टू चूज, जस्ट चूज इट एंड एंजॉय द स्ट्रीम. एंड यहाँ पे मैं एज अ कास्टर रीडर एंड हमारे साथ यहाँ पे पापा गेमिंग आपको देखना मिलेंगे फॉर द कास्टिंग एंड ऑल. यहाँ पे तो एंजॉय करेंगे पूरे पूरे मैच के लिए. क्लस्टर्स, पहले बात कर ली जाए क्लस्टर्स की. यहाँ पे तो मुझे पोचिंकी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ क्लस्टर देखने को मिल पा रहे हैं. पोचिंकी के आसपास इफ यू कैन सी दैट गाइस, यहाँ पे टीम जंप करती हुई दिखेंगे. वहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा क्लस्टर देखने को मिल सकता है. जॉर्जियापोल नॉर्थ वेस्ट सिटी कुड बी अ गुड क्लस्टर जहाँ पे टीम जंप करती हुई दिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट टीम टीएस एंड ऑल, तो इनके आसपास मुझे 3 टीम्स को जंप करती हुई दिखेंगी विच कैन बी अ वेरी कार्नेजियस मूवमेंट. बिकॉज सब टीम ज्यादा होती हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, लूट में आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पे हिस्सेदारी हो जाती है. और वहाँ पे जब लूट होती है तो शायद फाइट में आप कहीं ना कहीं टेक डाउन हो जाए, कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाए. ये सारी चीजें होती रहती है. तो इवेंचुअली देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पे ओवर पावर कर पाएगी और लूट किसका कैसा रहता है, कौन कैसे एस्टैब्लिश करता है अपने गेम प्ले को एंड कौन कितना ज़्यादा आगे जा पाता है, कितनी लूट उनको मिलती है. ये सारी की सारी चीज़ों पर फोकस हमारा जरूर से बना रहने वाला है. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इवेंचुअली. अगर हम बात करें फाइट की, वो भी हमें बहुत ही जल्द देखने मिलेगी. बहुत ही जल्द कुछ अच्छे मोमेंट्स, बहुत ही जल्दी कुछ अच्छी फाइट्स भी आपको यहाँ पे देखने मिलने वाली है. सो लेट्स सी. टीम टीएस की तरफ से वी हैव रिप्रेजेंटिंग सिड, वी हैव जुनैद, वी हैव आरू एंड उसके अलावा चेतन भी देखने मिलने वाले हैं. दिस इज द लाइनअप ऑफ टीम टीएस. अच्छी खासी गन कॉम्बो एंड अच्छे खासे लूट के साथ ये टीम अपना गेम कन्वर्ट करने की कोशिश जरूर से करेगी यहाँ पे. Well, definitely. And as you said, Raider, the fights are going to start right now. And Georgiapol northern cities are being, like targeted by teams. And we have the diagonal flight path, which actually helps to get the vehicles as much as possible for the teams to make some really quick rotations. They can go north and south. Meanwhile, we also have the first zone already in the match. And meanwhile, this event is already being streamed live on multiple platforms, guys, as Raider said. So you can see it on JioGames YouTube official channel here. You can also see it on JioGames app, Jio TV Esports HD channel, as well as Facebook and YouTube channels here.
Meanwhile, kindly do download JioGames app from the Play Store, which is available readily for you guys. Those who are aspiring to be new streamers, you can actually download it, upload your streaming content. You can even do live streams on JioWatch. So that will be where you will be getting much of your followers as well. So kindly do check that out for yourself. And meanwhile, we also have MediaTek, where they have some exciting products, exciting gadgets also on sale. And you can actually check for the new updates and what are they having in new. Meanwhile, we have some really good shots from Evil Dada here, taking a knock on Panther, team number 25, already having some really damage on Water City here. And he's being lost, I should say, because, in this situation, there is no hope that he could be survived by anybody. So crossbow already in the hands, also with an AKM. And meanwhile, we have team number 14, another player here. We can see him closing in on team number 25. Smokes are being done already, trying to give a revive. Meanwhile, we have a cover fire already coming in from Fearless here on the left side. But I think UMP already in the hands. UMP is really dangerous as a close range weapon. He has level 2 helmet. Level 2 vest and level 1 helmet with a level 2 back. So a pretty decent loot on the start, I should say, because as soon as they got the drops, two teams are currently in Water City, and healables and everything is being used to the maximum. So let's see how far this actually goes out. So how do you think this fight will pan out, Raider? Yeah, I can think that यहाँ पे जो टीम्स है वो फाइट लेने की कोशिश जरूर से करेंगे, बट द थिंग इज दैट टीम नंबर 14 इज ऑलरेडी अंडर मैन पावर. इनके पास यहाँ पे कुछ कम मैन पावर देखने में, लेकिन द सेकंड गाय इज प्रीटी मच एफके आई गेस यहाँ पे, बिकॉज इनके पास शॉट्स ये जा रहे थे. बट द थिंग इज दे हैव ऑलरेडी अचीव वन फिनिशेस. इफ आई टॉक अबाउट एविल दादा, दिस इज द गाय जो कि काफी ज्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पे देते हुए दिखेंगे. ही हैज ऑलरेडी नॉकड आउट 2 ऑफ द गाइस ऑफ टीम नंबर 25, एंड यहाँ पे काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस में उस टीम को यहाँ पे लाके रखते हुए दिखेंगे. तो लेट्स सी हाउ दे विल टर्न आउट द होल मैच, और यहाँ पे किस तरीके से अपना गेम यहाँ पे निकाल पाते हैं. बट टॉक अबाउट अनिकेत, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट सम मोर फिनिशेस. हाथ में माइक्रो उजी अलॉन्ग with the DPS is there. And if I talk about Fearless Look, this is the guy with M762, or we can know also as a Beryl, and उसके अलावा M16A4 देखने मिलेगी इनके बैकपैक में. वहीं अगर ड्रैगन की बात करें जाए, this guy has S12K, whatever the name is. So ये कुछ ऐसी गन यहाँ पे देखने मिलेगी. This is a very close range beast gun, but यहाँ पे इसको close range में आप यूज कर सकते हो. तो that is why I don't think Dragon यहाँ पे अपने गेम को इंप्रूव कर पाएंगे, अपने गेम को यहाँ पे दिखा पाएंगे इस फाइट के अंदर, until unless the closing begins. यहाँ पे अभी क्लोजिंग के लिए अगर हम बात करें, टीम्स थोड़ा सा यहाँ पे काफी फैन आउट होती हुई दिखेंगी. खासकर if I talk about team number 14, they are looking forward to get some more angles. कुछ अच्छे एंगल्स एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है टीम, जहाँ से शायद इनको कुछ अच्छा क्लोजअप मिल पाए, कुछ अच्छी फाइट्स के अंदर कुछ अच्छे नॉक्स, कुछ अच्छे फिनिशेस, कुछ अच्छे क्लोजर्स यहाँ पे दे पाए. दैट इज व्हाट दीस गाइज आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. तो ये हमारी लॉबी की फर्स्ट एवर फाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल पा रही है, जिसमें दोनों ही टीम्स ने एक कैजुअलिटी डील कर ली है. बट द थिंग इज दैट टीम नंबर 14 इज ऑलरेडी अंडर पावर्ड. यहाँ पे कहने के काफी ज्यादा इनके पास मैन पावर भी कम है, उसके ऊपर से इन्होंने अपने प्लेयर को ऑलरेडी यहाँ पे लूज कर दिया. नाउ द फाइट इज बिटवीन 2 versus 3, and already team number 25 is pushing. As you can see, micro Uzi speeds are going on. That was beautiful knockout by this guy, and यहाँ पे हाथ में निकाली है DBS. Well, there we go. DBS versus S12K. That was a damn good knockout. This guy has done it. यहाँ पे 1v2 करते हुए दिखेंगे. Well, there we go guys. That was an amazing shot. काफी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने मिल पा रही है इस बंदे की तरफ से. इजी फिनिशेस यहाँ पे निकालते हुए दिखेंगे. Well, this is what and competitive performance is called. बहुत ही अच्छा लगा ये परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिए. But there we go. Easy finishes guys. Easy finishes. If I talk about team 25, now they are under man advantage. अब इनके पास कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्ट्रगल करने की जगह बच गई है. Fearless लोग अकेले बचे यहाँ पे. He is the last one signing of his team. Still struggling a lot at the moment. तो वेट कर रहे हैं मौके का. अब ढूंढेंगे अपने लिए अपॉर्चुनिटी. जिस तरीके से टीम 14 ने अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढी, फिर फॉल बैक किया, मौका मिला उनको, उन्होंने टेक डाउन यहाँ पे किया बहुत ही ब्यूटीफुली. एक्जैक्टली दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द लॉबी वंस अगेन. आपको दोबारा से वही सेम चीजें देखने मिलने वाली हैं. दैट Fearless लोग इज ईदर गोइंग टू फॉल बैक और ही इज गोइंग टू फाइट बैक. बट करंटली आई गेस फॉल बैक करना इनके लिए एक ज्यादा बड़ा ऑप्शन बनता हुआ दिखेगा. द थिंग इज दैट ही हैज टू गो फॉर द पोजीशन पॉइंट्स राइट नाउ. ऑलरेडी टॉप 14 के अंदर खेल रहे हैं यहाँ पे. अब अगर पोजीशन पॉइंट्स के लिए जाते हैं, इफ ही सर्वाइव्स अ लॉट, तो कहीं ना कहीं ये टॉप 3 के अंदर, टॉप 2 के अंदर, #6 तक, टॉप 5 के अंदर पहुंच सकते हैं यहाँ पे. तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर हिज टीम, बिकॉज देखिए अब यहाँ पे फिनिशेस पॉइंट की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा चोक कर गए हैं वो चीज में. बट अगर हम बात करें यहीं पे पोजीशन पॉइंट्स की, तो मे बी ही कुड एक्यूमुलेट सम गुड पोजीशन पॉइंट्स. Well, definitely. Like team number 25 really had some really bad mistakes being done on Water City up front. So they have only one guy left who will have to take on position for that surviving points and take his team as much as possible to survive as much as possible, get those placement points as much as he can as well. And meanwhile, that 1v2 being done from team number 14, that was really good as well. DBS combo with Uzi. So both are close range beasts. So that was a really good one. And like the caliber of the players in recent days has been really, really nice. So Fearless Shlok will be moving back, and meanwhile we have number 6 already having a fight in the JioGames Northern Cities, and you can see that they were trying to retreat on that way.
And TS already having some early knockouts, but will that be capitalized by the opposing team? We have to wait and watch, because one knockout has been done, but they have some really proper Qualifier there already being given there from with a Scarl here. We can see that. So I think a revive will be easily possible here, but a retreat, it's not in the answers right now. So I think they will need some really good smoke screens here in order to get back to their, a proper cover. Maybe they have some vehicles. They should be looking to go to some really good zone advantage points. So let's see how that's going to pan out. And meanwhile, we have team number 6 still having 3 members remaining. One guy has been thirsted out really early in the game. So on the opposite end, we have team number 16 completely poised. They have a really good high ground. They have the high cover. They are on top of those buildings, and they'll be having a really good view as well. So what are they going to do? Let's wait and watch. So what do you think, Raider? Yeah, the thing is that they have the high ground, but they are unable to take that advantage. The thing is that they are actually undermined. The thing is that इनके पास अगर हम बात करें गन्स की, तो वो सारी की सारी गन्स इनके पास क्लोज रेंज देखने को मिलेगी, एंड दैट इज वाई थोड़ी सी दिक्कत है इस टीम को जरूर से होती हुई दिखेगी. फिलहाल वी हैव फीनिक्स इन द सीन विद दैट ब्यूटीफुल M4 सेक्शन आई गेस, एंड साथ ही यहाँ पे एक देखने को मिलने वाली है. बट आई गेस स्मोक के मामले में कहीं ना कहीं और स्कोप के मामले में कहीं ना कहीं टीम अंडरमाइन होती हुई दिखेगी. टीम TS की अगर बात करी जाए, दे आर क्लियरली गोइंग टू फॉल बैक एट द मोमेंट. So we have Sid OP, we have Junaid and Chetan on the buggy. They are really going to fall back and बहुत ही अच्छे तरीके से फॉल आउट करते हुए दिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज जानते थे कहने कि इस फाइट के अंदर डिफिकल्टीज बढ़ सकती थी इनके लिए. दे वांटेड टू अवॉइड दैट होल फाइट, एंड जब जोन यहाँ पे श्रिंक होगी, जोन के अलॉन्ग इफ दे मूव, इफ दे वर्क अलॉन्ग द जोन यहाँ पे, एंड जोन के साथ साथ अगर अपना काम करते हैं, अच्छी खासी लूट यहाँ पे करते हैं, कुछ आर्टिफिशियल कवर्स यानी कि कुछ अच्छी व्हीकल्स यहाँ पे इकट्ठी करते हैं, दैट वुड बी ग्रेट फॉर देम. बिकॉज आप लोग जानते हैं गाइस, कॉम्पिटिटिव के अंदर कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल कवर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बिकॉज दे आर मेनी टाइम्स, दे आर मेनी सर्कमस्टेंसेस जब आपके पास यहाँ पे अच्छे कवर नहीं होते, व्हेन यू आर वेरी ओपन ग्राउंडेड, और आप कहने क्या ओपन में आप अगर ग्राउंडेड हो जाते हो, किसी ने आपको टेक डाउन कर दिया, तो वहाँ पे आपकी व्हीकल से आपके लिए काफी ज्यादा आपकी टीममेट के लिए आर्टिफिशियल कवर बन के आती है. एंड नाउ दे आर गोइंग टू पिक अप सिड, एंड उसके बाद यहाँ पे एक अलग रोटेशन करती हुई दिखेगी इस टीम की, एक अलग गेम प्ले यहाँ पे देखने को मिल पाएगा इस टीम के अकॉर्डिंग. और अगर हम बात करें मिलिट्री बेस, यहाँ पे देखिए फिलहाल गाइस कुछ अच्छे क्लैशेस आपको देखने मिल सकते हैं बहुत ही जल्द, बिकॉज टीम ACBC is fighting with team SOG at the moment. ACBC, one of those elite teams which are going to fight back. We have Shock, we have Hexer, we have Snow and Capron in the scene, going to take down team number 2, यानी कि टीम SOG को टेक डाउन करने की कोशिश जरूर से करते हुए दिखेंगे, बट विल दे बी एबल टू टेक देम डाउन, ये एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा. फिलहाल स्लो की तरफ से शॉक की तरफ जाता हुआ दिखेगा, पुशन पूरा प्रॉपर पंचिंग देने की यहाँ पे कोशिश करते हुए दिख रहे हैं. बट द थिंग इज टीम नंबर 2 इज आल्सो गेटिंग सम सीरियस स्ट्राइक्स एट द मोमेंट. यहाँ पे ग्लिच के स्कूबा देखने मिलेंगे, चुपचाप ये बंदा वेट करता हुआ दिखेगा, एंड देयर वी गो, ही हैज बीन स्पॉटेड. यहाँ पे स्पेस देने की कोशिश सुपर डुपर लेडी यहाँ पे किया, लेकिन नॉकआउट नहीं कर पाए. द थिंग इज यहाँ पे कहीं ना कहीं और इमीडियस की वजह से दोनों ही प्लेयर्स को टैक आउट किया इन्होंने. स्नो को भी काफी अच्छा खासा हिट किया, एक्सेल को भी हिट किया. SOG Urvi is also taken down. You can see that fight by fight these teams are going to suffer. Now Noob Sayer अपना एक अच्छा नीड डालने की कोशिश करते हुए दिखेंगे. These nades can be very harmful, and there we go, the nade has been launched. Nade इनके ऊपर भी आता हुआ दिखेगा. That was a damn good knockout. क्या बात है guys. अब अकेले यहाँ पे बच्चे हैं TT69. He's the last man standing of his team, surviving in the fight. Let's see can he take him down. देखते हैं फटाफट से क्या होता है. उर्वी को रिवाइवल देने की कोशिश करी जाएगी, उससे पहले डालेंगे एक ब्यूटीफुल नेड सो दैट कनेक्टिविटी यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दी जाए. थोड़ा सा यहाँ पे टीम ACBC को बैकफुट पे लाएंगे, लेकिन एक और डेडली नेड मूव पे आता हुआ दिखेगा. दिस नेड कैन एंड दिस फाइट, एंड देयर वी गो गाइस. आई गेस उर्वी इज टेकन डाउन. नाउ DT69 इज द ओनली सर्वाइवर ऑफ हिज टीम. अकेले बचे यहाँ पे फर्स्ट एड्स का यूज करते हुए दिखेंगे. 1v4 करना काफी डिफिकल्ट यहाँ पे हो जाएगा, बट द थिंग इज ही विल हैव टू ट्राई. इनको कोशिश करनी पड़ेगी, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट इन द लॉबी. तो लेट्स सी कार्नेजेस बिगिन. और यहाँ पे देखते हैं DT69 को अगेन टैग करते हुए दिखेंगे. अगेन फॉल बैक की स्ट्रैटेजी. अब बार बार यहाँ पे वही चीज से देखने को मिल पा रही है, सेम चीजें देखने को मिल पा रही है, दैट व्हेन यू आर अनेबल टू फाइट बैक यू जस्ट फॉल बैक. तो वही चीज़ यहाँ पे देखने मिल पा रही है इनकी तरफ से. अब DT69 अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे चुपचाप फॉल बैक करते हुए दिखेंगे, बिकॉज जानते हैं कहीं ना कहीं दैट इस जोन में आउट ऑफ जोन फाइट लेना इज नॉट वर्थ इट. एंड कहीं ना कहीं टीम ACBC ऐसी टीम पे जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी एक दबदबा बना दिया इनके ऊपर, एक प्रेशर सा क्रिएट कर दिया है, उनके सामने फाइट लेना आई गेस वो फीजिबल नहीं था. दैट इज वाई दिस टीम इज गोइंग टू फॉल बैक एट द मोमेंट. अपनी डासिया लेके क्लियरली ये फॉल बैक यहाँ पे करते हुए दिखेंगे. एंड नाउ वी शुड सी सम अदर फाइट जो कि यहाँ पे होती हुई दिखेंगी लॉबी के अंदर. दैट इज टीम नंबर 25 फियरनेस लोक इन द सीन. टीम रेड एक्स की तरफ से यहाँ पे आते हुए दिखेंगे. रेड एक्स के मेट्स इनके सामने यहाँ पे आ चुके हैं. तो वी हैव रेड एक्स निखिल OP, वी हैव अरमान एंड वी हैव ज़ेरा फैन. उसके अलावा आर्टो भी देखने को मिलेंगे हमें यहाँ पे. Well, definitely, we have some cluster of teams in Yasnia. We have a couple of teams in Yasnia as well, and we have here Fearless also going down here with that headshot. Yeah. So I think that was the last guy from team number 25 being taken out really easily in this way, and team number 25 getting an exit out of this lobby really early in the game, and we have 13
more teams remaining in the lobby. So let's see what's going to happen. So maybe the zone will be circling around Yasnia this time. Let's hope where it goes actually. But maybe it can also take a hard shift towards Mansion or towards the southern end. Okay, Milta. So still Yasnia is in the circle. So I would say ACBC is having a really comfortable rotation. Look at that rotation right now being done from ACBC here. 4 different vehicles. Everybody having a vehicle. They will be having some really good artificial covers. So I feel that this team is actually going to get a really good position in this match. So let's see what's going to happen. And meanwhile, on the Georgia Pole Bridge, we can also see a cluster of teams already there heading their way up towards the center. I think Shelter is going to be the target for these teams. And we can see both these teams already heading to their way into the center location of the map where all the roads actually collide. So I think we'll be having some really exciting fights in this open area. Shelter could be a really good location because, you have some really good dips. You have those tunnels. You have those, what do you call that, cams or whatever it is. So you have a really good shelter there, as the name suggests, and teams can actually have, a really good position to make some cover. They can wait there in the center of the zone until the zone actually closes in, and they would be able to have a really good field of view on and around, like looking at the team's rotation and everything. And that's what ACBC is also doing here. They are actually going on rotations. They're trying to get some hard cover here where they will be able to have a really good field of view and a really good selection from ACBC, I should say, because they have a really good compounds here, which they can take with their vehicles. And that's what is being done. So let's see what's going to happen. And we have some teams also traveling from Rozok here. Water City is also being exited right now. And all of them are actually moving ahead. So Yasnia team will also be, they'll be there for quite some time. But let's see the next circle where it goes, Raider. या ऑफ कोर्स अगर हम बात करें फिलहाल यहाँ पे पंचेस की टीम टीएस अभी आप तक 0 फिनिशेस निकाल के आ चुकी है। फिलहाल फिनिशेस के मामले में इस टीम का पे हाथ काफी तंग देखने को मिलेगा। बट द थिंग इज वी हैव टीम नंबर 8 जिनका रोटेशन जस्ट अभी यहाँ पे करता हुआ दिखेगा। टीम टीएस के सारे प्लेयर्स अपनी रोटेशन काट चुके हैं। नाउ टीम नंबर 8 यानी कि टीम यूआरसी आई गेस यूएनसी की टीम शायद यहाँ पे टीम एसीबीसी की काफी ज्यादा क्लोज आती हुई दिखेगी। बट दिस इज अ वेरी फ्रेजाइल कंपाउंड। द थिंग इज दैट यहाँ पे काफी ज्यादा क्लोज कॉम्बैट होते हैं, काफी ज्यादा दूर से आपके पास ओपनिंग्स मिल सकती हैं। एंड ये एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे काफी ज्यादा एंगल्स यहाँ पे आपके ऊपर शॉट्स पड़ सकते हैं। यू हैव प्रीटी मच 0 कवर गाइस। अगर यहाँ पे चारों तरफ आपकी टीम यहाँ पे आ जाती है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। छोटे मोटे कवर आपको जरूर यहाँ पे देखने मिलेंगे, बट फिर वो कवर आपको पिन डाउन यहाँ पे कर देते हैं। यू कैंट मूव फ्रॉम दिस एरिया, यू कैंट एक्चुअली डिफेंड फ्रॉम दिस एरिया, यू कैंट इवन गेट सम मोर फिनिशेस फ्रॉम दिस एरिया। बट एनीवे हमारी जो यहाँ पे 13 टीम्स बची हैं, 44 प्लेयर्स यहाँ पे देखने मिल पा रहे हैं, वो यहाँ पे फाइट लेते हुए दिखेंगे। एंड नाउ वी हैव 30 seconds more to go after that the zone will shrink in. Let's talk about the first team which has been eliminated. So that was team number 25. As you all can see, the first ever team to be eliminated from today's lobby was team number 25. The thing is that they have been eliminated. इसका स्टार्ट हुआ था कहीं ना कहीं वाटर सिटी की तरफ से। वाटर सिटी में काफी ब्रूटल मैचेस मुझे यहाँ पे देखने मिल पाए थे जहाँ से इनको बहुत ही बुरी तरीके से टेक आउट यहाँ पे किया गया था। एंड आफ्टर दैट फियरलेस स्लोक वाज द ओनली गाय लेफ्ट राइट नाउ। एंड द थिंग इज उनको भी टेक डाउन किया गया। कोशिंकी के पीछे वाले कंपाउंड के अंदर ब्यूटीफुल हेडशॉट्स की कनेक्टिविटी देखने को मिली एंड थ्रू दैट इनको टेक डाउन किया गया। एंड यहाँ पे टीम नंबर 8 यानी कि टीम यूएनसी का कॉम्बैट अब यहाँ पे टीम एसीबीसी के काफी ज्यादा क्लोज आके इनके खड़ा करता हुआ दिखेगा। दिस कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट फाइट। एसीबीसी इज वन ऑफ दोस टीम जो कि अभी कुछ किल्स यहाँ पे इकट्ठा करके आई है, कुछ किल्स रैक अप करके आई है। एंड डायरेक्ट स्लैम इन, Boni was already taken down. Now we have Deto X. Oh dude, this is like a piece of cake for team ACBC. Literally घुसे यहाँ पे easy pick off and there we go. Not even a single knockout, not even a single put down. There we go. And just like that, team ACBC managed to turn the table. That was something beautiful, guys. Well, that's true, and ACBC already having their really good gameplay here being done, and they have already secured that compound. So we have a really good loot in ACBC right now. So team number 11 looking so poised in that center location, and they will be trying to move ahead to get a chicken dinner. Let's see if that's going to happen. But meanwhile, as Raiders said, this match could go either way. So as he said earlier, that compound was actually a fragile compound, and that's what they actually paid it. So team number 8 was actually halting there for quite some time. Yeah. But since they did not have any cover, so they will be taken down as well. And meanwhile, we have ACBC here getting all the kills in this location. Look at those utilities. They have level 3 vests, level 3 helmets. They have level 3 bag. They have a decent loot, really good bandages as well. 30 bandages with them. So I think that's something else. So I think he will even go for a heal battle on the worst case scenario. But still, the circle still closing in on the center part. And ACBC seems to be in a really comfortable position where they don't have to make any hasty movements as of now. And we have some teams already moving in from Pochinki. We have some teams moving in towards the schools or towards the apartments. They will be moving in towards the center areas. So Yasnia still seems to be, having an exit of those teams. So a couple of teams in Yasnia, they'll be trying to make their exit.
exit really fast. I think they already felt the zone is not going to make it, but this was a mistake from him. No vehicles on them, and they have been going on foot onto the back end where it's a completely open area, a completely open field, and team number 13 already having a really cool view of, field of view there, and spotting team number 7 completely out in the open and will be pinned down here. And this will be a really miracle for him if he can actually pop some smokes and get back to proper cover. But meanwhile, team number 13 also cannot push out into the open because they will be completely exposed as well. So let's see what's going to happen. What do you think, Raider? I think his teammates already have vehicles. Maybe one of them could actually come in and pick him up, right? Yeah, I can see that in a minimap. We can see that the other guy is here right now. काफी ज़्यादा पास में यहाँ पे आ चुके हैं. Let's talk about that guy also. We have this Nilay 143. This is the guy who is pretty much close, and इन्होंने यहाँ पे मशरूम टावर को ऑक्यूपाई किया है. यहाँ से फाइट लेने की कोशिश करते हुए दिखेंगे. Moreover, this guy has a carnated, I guess, and साथ ही यहाँ पे AKM देखने मिलने वाली है. देखिए यहाँ पे पोजीशन एक्सपोज करने की कोई बात नहीं थी, but there we go. Team number 7's one player has been taken down. Marka Lord already finished out. Now Kevin यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं. They are going to fight back with team number 4. 2v4 की फाइट यहाँ पे देखने मिलेगी. The thing is, because इनके बाकी के प्लेयर्स ऑलरेडी यहाँ पे पिन पॉइंट देखने मिलेंगे. निलय इज देयर ऑन द बैकअप वे. निलय यहाँ पे वापस आते हुए दिखेंगे. आरपी रहते की तरफ से एक ब्रूटल नेड यहाँ पे आ सकता है. देवी को द नेड्स हैव बीन कुक्ड. दो नेड्स यहाँ पे डालते हुए दिखेंगे. केविन काफी ज्यादा मुश्किल हालतों में यहाँ पे देखने मिलने वाले. लेट्स सी द नेड्स आर हियर. प्रॉपर कॉम्बो एंड ऋतिक यहाँ पे किया जाएगा. ऋतिक को पिक ऑफ यहाँ पे कर दिया गया. दैट वाज लवली. यहाँ पे जो केविन का नेड था काफी ब्यूटीफुली कनेक्ट करते हुए दिखेगा. अगेन द शॉट्स आर गोइंग ऑन. आजल के शॉट्स लेने की कोशिश, बट केविन वाज आल्सो पुल डाउन. एंड यहाँ पे अगर बात करें जाए निलय की यहाँ पे, तो निलर के लिए भी डिफिकल्ट चॉइसेस यहाँ पे बनती हुई दिखेगी. टॉक्सिक एक्मी वाज देयर एंड एक अच्छा नीड यहाँ पे काफी ज्यादा काम चमा कर सकता है. काफी ज्यादा चेंजेस यहाँ पे ला सकता है. द नीड वाज देयर, बट यहाँ पे नीड कहीं ना कहीं इन्होंने दूसरी बाउंड्री के ऊपर यहाँ पे दिया था. ऑन द वॉल वाज द नीड, सो दैट इज व्हाई नो टेक डाउन्स वर देयर. बट अगेन एक और नीड डालने की कोशिश करेंगे. दोबारा से रीट्राई किया, बट फिर से यहाँ पे शॉट्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे. नीड यहाँ पे काफी ज्यादा इनके लिए हेल्पफुल नहीं बन रहा है. पीछे से एक और व्हीकल आती हुई दिखेगी. द कॉम्पिटिशन इज ऑन. यू कैन सी दैट स्पेस देने की कोशिश. द पुट डाउन कैन बी देयर, बट यहाँ पे टीम नंबर 6 निकलती हुई दिखेगी. बार बच के यहाँ पे वो निकलते हुए दिख रहा है. दैट वाज लवली. इफ वी टॉक अबाउट टॉक्सिक एंकी, वो भी आपको देखने मिलने वाले. ओपन एजेस में यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश. नीड्स यहाँ पे दोबारा पुल किए जाएंगे. द नीड कुड बी कनेक्टेड वेरी सून. यहाँ पे देखते हैं नीड इनका कनेक्शन देता है या फिर नहीं देता. नो, आई डोंट थिंक द नीड विल कनेक्ट टू एनीवन. सो दैट इज व्हाई टीम नंबर 7 इज गोइंग टू लूज देयर 2 players. एंड इफ आई टॉक अबाउट विजन डीआर, यू कैन सी दैट ही इज स्टिल सफरिंग एट दैट एरिया राइट नाउ. आई गेस यहाँ पे वो अभी भी फंसे होंगे. या आप देख सकते हैं फिलहाल काफी ज्यादा डैमेज इनको हो चुका है. इनका हेलमेट उड़ चुका है. इनके पास लेवल 1 का बैकपैक देखने मिलेगा. ही हैज दैट लास्ट फर्स्ट एड व्हिच ही इज एक्चुअली अप्लाइंग. एंड उसके अलावा 3 बैंडेड्स यहाँ पे देखने मिलेंगे. साथ ही यहाँ पे लेवल 2 का वेस्ट अभी जरूर से यहाँ पे इनके पास बचा है, बट दैट इज नॉट इनफ फॉर द होल फाइट राइट नाउ. आई गेस यहाँ पे इनको लूट भी करनी पड़ेगी. कहीं ना कहीं खुद के लिए कुछ अच्छे स्टैंड्स यहाँ पे इंक्रीज करने पड़ेंगे, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटीज ही जस्ट हैव 3 बैंडेड्स लेफ्ट इन हिज बैकपैक, व्हिच इज नॉट एट ऑल इनफ. बट अगर हम बात करें तीसरी प्ले जोन की, तो वही कहीं श्रिंक होती हुई दिखेगी. एज यू कैन सी द जोन इज गोइंग टू श्रिंक इन वेरी रैपिडली. एंड ये जो हमारी थर्ड जोन है वो आपको बनती हुई दिखेगी इन द एरिया ऑफ शेल्टर एंड ऑल. तो शेल्टर के पास वाले पूरे एरिया में कॉम्पोजिशन यहाँ पे देखने मिलेगा जोन का, विच इज क्वाइट लिटरली ब्यूटीफुल. तो देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पे सर्वाइव कर पाती है शेल्टर के एरिया में. टीम एसओजी इज ऑलरेडी ट्राइंग टू रोटेट फ्रॉम द लोअर एरिया फ्रॉम द सर्दर्न एज. एंड इसके अलावा टीम आपको देखने मिलेगी एक और टीम 14 भी देखने मिलने वाली है. बट इफ आई टॉक अबाउट अनदर टीम, यहाँ पे देखने मिलेंगे निलय जो की फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं. ट्राइंग टू पुट रिली टैग हिम आउट एंड देयर वी गो. टॉक्सिक टेक्स हिम डाउन एंड बहुत इजीली फिनिश ऑफ करते हुए दिखेंगे. जस्ट लाइक दैट टीम नंबर 7 इज गोइंग टू से गुड बाय टू द लॉबी एंड देयर वी गो. टीम नंबर 7 यहाँ पे फिनिश ऑफ होती हुई दिखेगी. एंड टीम नंबर 4 टेक्स 4 ब्यूटीफुल फिनिशेस विदाउट अ लॉस ऑफ इवन अ सिंगल प्लेयर. 4 AG सानू वाज टेकन डाउन, बट उनको बड़ी जल्दी इजीली यहाँ पे रिवाइवल दिया जाएगा. दे आर स्टिल आउट ऑफ द जोन, बट दे कैन इजीली बी इन द जोन बाय द टाइम ऑफ जोन एंडिंग. Well, definitely team number 4 already having those loots as well. So they have a really good time in order to go into the zone. They are currently outside the zone. They still have some time to actually get all those loots and, maybe get some vehicles. But currently that Dacia seems to be like propped up against the wall will be of no use as well. Yeah. So team number 4 will be moving ahead as well into the game. We still have 37 people alive in the lobby. 11 teams are still there. And let's see who's going to get that winner chicken dinner. Meanwhile, the circle's still circling around, having shelter as the center location right now. So teams will be trying to move in. Maybe the next circle will be a hard shift towards the prison area. Not sure. So let's wait and watch. Because yesterday we had an eastern shift in Narangal. And we actually predicted to be having a zone ending at prison. But did not happen. So let's see if this match is going to have it at prison. Or maybe it will be on shelter. So we still have ACBC currently there in the center as well. And 3 teams we can see already there in the center, and maybe the remaining teams will be taking their time to actually come in, and we will be having some team in Milta as well. We can see that they are having a split loot here and a split drop, and they will be waiting for the teams to move in. And this scenario, like, we can never predict like which team is going to win, because the match is going to get dragged out towards the last zone. So as I said,
It's having prison in the circle. It's also having a little bit of shelter in the circle. But I would say that the next zone is going to be having a hard shift towards the prison, more or less. So I think prison should be a really good spot for the teams to actually capture. What do you think, Raider? Yeah, the prison should be a very good spot to capture by the teams. But यहाँ पे टीम नंबर 9 की अगर बात करी जाए, उनकी भी रोटेशन यहाँ पे अपर एजेस में निकलती हुई दिखेगी एंड दे आर एमिंग फॉर द सदर्न एज राइट नाउ. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. यहाँ पे जोन के अंदर जाने के बाद किस तरह की एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे ले पाते हैं, कितनी लूट इनके पास है, किस तरीके से पूरी फाइट यहाँ पे लेंगे, वो काफी ज्यादा मैटर करता है. इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल कवर दे डोंट हैव दैट मच ऑफ कवर राइट नाउ. इनके पास मात्र एक यूएस यहाँ पे देखने को मिलेगी विच इज अ कम्युनिटी एंड साथ ही साथ एक लोकोमोटिव यहाँ पे देखने को मिलेगा. तो निकलना चाहिए इनको जोन के अंदर फटाफट, एक अच्छी जगह पे होल्ड करना चाहिए. देवी को बगी इनको मिल चुकी है, तो बगी को यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा फटाफट से एक बंदा. यहाँ पे एक और अच्छी कवर मिलती हुई दिखेगी इनको. That's beautiful. Now if I talk about another team, you can see that team ACBC is quite beautifully going into the zone right now. They are going to occupy that area which is prison area. यहाँ पे ACBC के members निकलते हुए देखेंगे. Haxer is on the way right now. साथ ही टीम नंबर 15 भी पूरा क्लोजर यहाँ पे देती हुई दिखेगी. टीम नंबर 15 is also going towards the zone. As you all can see, we have Drunken Star 15, we have Albin Adi, and साथ ही मनाली देखने मिलेंगे. Drunken X is also right here, and they have already occupied this kind of zone right now. So that's beautiful. जिस तरीके से यहाँ पे जोन को हैंडल किया जा रहा है, that is quite lovely. But यहाँ पे टीम ACBC से इनका सामना होने वाला है बहुत ही जल्द. ACBC will just put them down. I guess यहाँ पे टीम ACBC का अगर एग्रेशन की हम बात करें, that was quite beautiful. But now it might be ending. Maybe यहाँ पे possibly चीजें बदल सकती है because they are very much open. If I talk about Snow, there we go. The sprays are going on. Oh, Snow was taken down by ACBC. Drunken Star यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ACBC स्नो को पिक ऑफ किया जाएगा Drunken Star 15 की तरफ से. बट स्नो बीइंग अ कॉम्पिटिटिव प्लेयर काफी अच्छी तरीके से खुद को कवर में यहाँ पे लेके जाते हुए देखेंगे. उस पेड़ के पीछे से उन्होंने चुपचाप कवर में गए, वो खुद को लेके गए, एस्टैब्लिश किया सो दैट उनको यहाँ पे बिल्कुल शॉट्स ना दे पाए, कोई सामने वाला बंदा प्लेयर उनको बिल्कुल एक्सपोज ना कर पाए. एंड एक्जैक्टली वही चीज यहाँ पे देखने को मिली. तो उनके दूसरे मेट यानी कि शॉक यहाँ पे आ चुके हैं, फटाफट से इजीली रिवाइवल इनको देंगे. वंस अगेन स्नो विल बी बैक इन द मैच. आई गेस यहाँ पे बहुत ही जल्द स्नो वापस देखने को मिलेंगे आपको. कैप्रोन की बात करी जाए, कैप्रोन इज प्रीटी मच प्रोन्ड और यहाँ पे कहीं ना कहीं सांप बनते हुए घुसने की कोशिश करेंगे. ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट सम मोर एंगल्स. यहाँ पे एक अच्छा एंगल, एक अच्छा स्पॉट यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ से कुछ अच्छे पिक ऑफ्स यहाँ पे निकाल पाए, जहाँ से कुछ अच्छे फिनिशेस यहाँ पे निकाल पाए. दैट वुड बी क्वाइट लवली टू सी दैट हाउ ही विल एक्चुअली एंगेज इन अ फाइट. तो अभी के लिए 6 फिनिशेस टीम निकाल चुकी है. कैप्रोन हैज ओनली 1 फिनिशेस. इफ आई टॉक अबाउट स्नो, स्नो हैज आल्सो ओनली 1 फिनिशेस. हैक्सर के पास यहाँ पे देखने मिलेगी हाउ मेनी फिनिशेस. लेट्स टॉक अबाउट दैट गाय. वी हैव हैक्सर विद 3 फिनिशेस. दैट्स ब्यूटीफुल. एंड विद 2 फिनिशेस, आई गेस विद 2 or 1 finishes, yeah, Shock is with only 1 finishes. That's beautiful. Now let's talk about this kind of zone. You can see that one drop is also coming on the way. Let's talk about what this drop contains. इस ड्रॉप के अंदर आपको यहाँ पे MG3 लाइट मशीन गन देखने को मिलने वाली है, विच इज अ प्रीटी गुड गन. यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया ये गन आपके लिए कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकती है. बट द थिंग इज इट्स रीलोड टाइम, इट इज वेरी हेफ्टी. 9.5 सेकंड्स आई गेस इट टेक्स टू रीलोड द होल गन. तो यहाँ पे ये एक डिफिकल्ट चीज बन जाती है. अलॉन्ग विद दैट वी हैव 100 ammo of 7.6. देन वी आल्सो हैव 4x scope, which is pretty much good for this kind of zone because the 5th zone is going to come in. And if I talk about the whole vest and helmet backpack and scenario, that is level 3, and we have adrenaline syringe for 100% boost. Now let's talk about the fights. As you can see, out of zone we are facing some serious fights. टीम नंबर 13 के प्लेयर्स बिल्कुल लगे हैं कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ पे करने की कोशिश करते हुए दिखेंगे. आउट ऑफ जोन टीम नंबर 9 इज गोइंग टू सफर अ लॉट. स्पेक्टर इज ट्राइंग टू कम बैक एंड देयर वी गो. अ ब्यूटीफुल स्प्रे बाय स्पेक्टर, बट ही इज सुपर डुपर लेट. एंड देयर वी गो. टीम नंबर 10 टेक्स हिम डाउन वेल. देयर वी गो गाइस. 3 एंगल से यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा पूरी फाइट के अंदर. इजीली पिक ऑफ यहाँ पे किया जाएगा. नाउ इफ आई टॉक अबाउट टीम एसओजी, दिस वाज द टीम जिनको ACBC ने बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइम दिया था. तो इसी टीम को यहाँ पे कवर के अंदर आने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है. नाउ दे आर इन द टॉप 8. दैट्स ब्यूटीफुल. सर्वाइवल कहीं ना कहीं इस टीम की तरफ से काफी अच्छा देखने को मिल पा रहा है, which actually motivates him and motivates us to see something amazing by this team also. तो देखते हैं क्या होता है गाइस, किस तरह का स्ट्रगल रहता है इनका. वही टीम नंबर 13 की बात करी जाए, दे आर प्रीटी मच आउट ऑफ द जोन. दे हैव टू बी इन द जोन एंड बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा बिकॉज यूटिलिटीज का बहुत यूज करना पड़ेगा. दे हैव टू गेट सम आर्टिफिशियल कवर्स, AKA सम व्हीकल्स टू रोटेट इन द जोन. वही टीम ACBC के मेंबर्स टीम नंबर 10 के प्लेयर्स को पिक ऑफ करने की कोशिश करते हुए दिखेंगे. स्टफी इज आल्सो गेटिंग टू गेट सम मोर टैग्स. स्टफी को भी टैग यहाँ पे पड़ सकता है बहुत ही जल्दी. टीम ST के लफी को यहाँ पे टैग्स देने की कोशिश करी जा रही है. वही अगर टीम नंबर 10 की हम बात करें, उनके यहाँ पे देखने मिलेंगे चप्पल उस भी जो कि यहाँ पे दे रहे हैं रिवाइवल. वी हैव थंडर Whitey was taken down. Luffy is here, and we also have Sahil in the scene, which is looking forward to get some more cover. So देखते हैं किस तरीके से टीम कवर के अंदर पहुंच पाती है अभी. Well, definitely. We still have those scenarios still pending. So top 8 team scenario already on the screen for you guys. And let's see what's going to happen. So here we have, we are almost ending the, match slow and steady here. So team number 13 still trying to move in. Team number 10, we are looking at them making some vehicles getaways. So it's still trying to get those locations where the prime locations would be. They will be still trying to make those artificial covers. Look at that.
So having a big rock there, slamming the vehicle on a really perpendicular way so that they can make some really good cover, going prone down there on that ridge. That was really good game sense from that player as well. Anti number 11 still on top, so ACBC still having those high angle, and they are trying to spot the other teams. So Prison still coming down here, and now they don't have the zone in Prison, so ACBC will have to come out, but they have already spotted a team. They will be making it really hard for them to actually get into the zone. They will be making some really hard, like out of the zone rotations right now to actually get into it. But one guy goes down, completely prone down, and a laser spray be given from ACBC here. So now they will be moving into the zone. So let's see how it's going to be. So they still have some time because we have, much breathing space for all the teams here. 24 people alive and 8 teams are still there. And now in the center, we still have a few teams already there poised out, and ACBC already coming in. They are having, their strategy is like on a split domination here. 2 guys are inside the circle. They are having the fights there. 2 guys are outside the circle, taking the fights, not letting anybody to actually get into the zone. The last guy is actually coming into the zone just in time. Now there's again a hard shift coming completely into the bottom. So let's see what's going to happen. Maybe TS still has a chance to get this dinner, or will ACBC change the chances? I really have no idea. So what do you think, Raider, is going to happen? I'm thinking team number 12 has a pretty much good angle because they are already occupying the 0.5% of the zone. 50% of the zone has been occupied by this team only. Team Redix has to do it. Redix, Arto, we have Zeref, we have Arman, and साथ ही आप इनके लोग भी देखने मिलेंगे. Pretty much जोन को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑक्यूपाई इन्होंने किया और कुछ अच्छे फिनिशेस निकालने की कोशिश आप करते हुए दिखेंगे. खासकर आप निखिल ओपी की बात करी जाए, इज आउट ऑफ जोन और यहाँ से पूरा इनका स्प्रे यहाँ पे ट्राई करते हुए दिखेगा. और फिलहाल यहाँ पे टीम ACBC के प्लेयर्स को पिक ऑफ करने की कोशिश. स्पेस आर गोइंग ऑन. यहाँ पे स्नो के ऊपर काफी अच्छी खासी कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश की. कैप्टन वाज टेकन डाउन बाय रेडिक्स अरमानी, और यहाँ पे देखते ही देखते टीम ACBC को चैलेंज यहाँ पे कर दिया गया है. टीम ACBC के प्लेयर्स को पिक ऑफ करने की कोशिश यहाँ पे करी जा रही है. टीम ACBC के लिए ट्रबल बढ़ता हुआ दिखेगा. स्नो वाज आल्सो टेकन डाउन. नाउ द ट्रबल इज हियर फॉर टीम ACBC. as well can see 2 players have been taken down already for team ACBC. they have achieved 10 finishes, but currently अगर हम बात करें 3 players finish off होते हुए दिखेंगे. now Shock is the only survivor from team ACBC. I don't think they will make it out to the chicken dinner. बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है इस टीम के लिए, बहुत ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे इनके लिए बढ़ता हुआ दिखेगा. आई एम थिंकिंग दैट दे आर गोइंग टू गो डाउन प्रीटी सून. बहुत ही जल्दी यहाँ पे जोन के अंदर ट्रैवल करने के चक्कर में ये टीम को पिक ऑफ यहाँ पे किया जाएगा. दैट वुड बी अ वेरी ग्रेट लॉस फॉर द टीम बिकॉज एक हाथ में आया हुआ चिकन डिनर कहीं ना कहीं निकलता हुआ दिखेगा. तो लेट्स सी यहाँ पे स्लो का किस तरह का मोमेंटम रहता है. स्लो का आप क्या यहाँ पे डिसाइड करते हैं, हाउ वी विल ट्राई टू फाइट बैक एंड किस तरीके से अपने गेम को एस्टैब्लिश करेंगे. ये जरूर से यहाँ पे देखने में इंटरेस्टिंग रहने वाला है. स्पॉट किया है यहाँ पे देखिए, निखिल को बहुत इजीली पिक ऑफ करते हुए देखेंगे. दैट वाज अ डैम गुड शॉट एंड यहाँ पे इजीली DP28 का जो स्प्रे है उसके बाद MG3 लाइट मशीन गन को यहाँ पे कन्वर्ट किया, बैकपैक में निकाला एंड स्लैम देने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखेंगे. बट एक अलग एंगल यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं शॉक, बट क्या ये अलग एंगल इनको मिल पाएगा? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. यू कैन सी दैट द स्लैमिंग्स आर गोइंग ऑन, मल्टीपल व्हीकल्स आर रोटेटिंग इन द लॉबी. ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहा था. इफ आई कंपेयर दिस लॉबी टू डे 1 लॉबी, दैट दिस मैच इज क्वाइट इंप्रेसिव एंड शॉक इज गोइंग टू गो डाउन बाय टीम रेडिक्स. मेरे को लगा ही था यही टीम पिक ऑफ करेगी एंड एक्जेक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड. सो नाउ द लास्ट जोन फाइट्स आर हियर राइट नाउ. एज वेल कैन सी लास्ट जोन के कुछ क्लचेस, लास्ट जोन के कुछ फाइट्स, लास्ट जोन के कुछ एग्रेशंस आपको यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं. वेल देव गाइस, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग व्हिच आई वांटेड टू सी इन द लॉबी फॉर सो लॉन्ग. यहाँ पे 3 टीम्स 9 प्लेयर्स देखने मिलेंगे. टीम TS की तरफ से यहाँ पे 2 फिनिशर्स देखने मिल पा रहे हैं. एंड अगेन इफ आई टॉक अबाउट अनदर टीम, तो यहाँ पे मुझे देखने मिलेगी टीम नंबर 10. दे हैव 5 फिनिशर्स, दैट्स ब्यूटीफुल. इफ आई टॉक अबाउट टीम रेडिक्स, वेल लुक एट इट, 5 फिनिशर्स यहाँ पे. जब हमने इनकी यहाँ पे बात करी थी, जब इन्होंने जोन के अंदर प्लेसमेंट लिया था, दे जस्ट हैड ओनली 1 फिनिशर्स, बट राइट नाउ दे हैव 5 फिनिशर्स. दैट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. काफी अच्छा अपना गेम यहाँ पे निकाल रही है टीम. करंटली दे आर स्टिल आउट ऑफ द जोन. अभी यहाँ पे जोन के अंदर ट्रैवल भी करना है. 57 सेकंड्स मोर टू गो. आफ्टर दैट दे हैव टू बी इन द जोन. यहाँ पे अगर जोन के अंदर सही टाइम पे नहीं पहुंचे तो इनके लिए स्ट्रगल जरूर से यहाँ पे जारी हो जाएगा बिकॉज अभी मैन पावर जरूर से है, बट क्या इस मैन पावर को ये कंटिन्यू कर पाएंगे? इस मैन पावर को अपने फेवर में ले पाएंगे? इस मैन पावर को अपने चिकन की तरफ ये टीम लीड कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी? ये काफी ज्यादा एक चैलेंजिंग चीज यहाँ पे बन के आती है. तो निखिल यहाँ पे देखने मिलेंगे. अरमान की तरफ से शॉट्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं. वही टीम नंबर 10 की बात करी जाए, उनकी तरफ से कुछ एक तरह से यहाँ पे स्लो पेस गेम देखने मिलेगा. टीम्स रुक के खेलेंगी, टीम्स बच के खेलेंगी, टीम्स समझना चाहेंगी आगे के गेम प्ले को किस तरीके से कन्वर्ट यहाँ पे किया जाए. लफी को स्पॉट यहाँ पे कर लिया गया है. लफी कुड बी पिक्ड ऑफ एंड या दैट्स व्हाट हैपेंड. लफी हैज बीन टेकन डाउन. इजीली फिनिश ऑफ यहाँ पे करेंगे. टीम नंबर 10 के लिए मुश्किलें और बढ़ चुकी है बिकॉज हिज सोल सर्वाइवर गाय इज लेफ्ट राइट नाउ. थंडर अकेले बेचने देखने मिलने वाले हैं, बट देखिए यहाँ पे रिवाइवल दे दिया जाएगा फटाफट. 13 सेकंड्स मोर टू गो. बहुत ही कम टाइम, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखेगा. थंडर हैज बीन स्पॉटेड. सही जगह पे छुपे हुए थे, लेकिन टीम रेडिक्स को एक तरीके से ओपनिंग इन्होंने यहाँ पे दे दी कहीं ना कहीं. एंड टीम TS वर्सेस रेडिक्स 4 वर्सेस 3 का आपको बैटल यहाँ पे देखने मिलने वाला है. नाउ टीम TS हैज टू डू समथिंग अमेजिंग इन द लॉबी. ज़रफ की तरफ से यहाँ पे स्प्रे पड़ते हुए दिखेंगे. ज़रफ के ऊपर शॉट्स यहाँ पे जरूर कनेक्ट किया जा रहा है, बट आई कुड से दैट यहाँ पे जो टीम्स है वो फाइट लेने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगी. बट द थिंग इज टीम TS इज एक्चुअली पिन डाउन. टीम TS के ऊपर चारों डायरेक्शन से यहाँ पे सामने आता
हुआ दिखेगा एंड दिस स्लैम इन कैन टर्न आउट वेरी फेटल एज यू कैन सी। यहाँ पे अगर हम बात करें बहुत ही बढ़िया तरीके से पिकअप करते हुए दिखेंगे निखिल। वंस अगेन क्लोजर देने की कोशिश, अगेन शॉट्स यहाँ पे लिए जाएंगे, फुल ऑन डैमेजेस की यहाँ पे दरकार देखने मिलेगी आपको। दोबारा से स्पेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं फिलहाल निखिल की तरफ से अच्छा खासा कॉम्पोजिशन। नीड साइड बाइंग कुक्ड एंड यहाँ पे मैच हैज एंडेड। द विनर चिकन डिनर इज ओवर राइट नाउ एज वेल। कैन सी हमारा विनर चिकन डिनर निकलता हुआ दिखेगा टुवर्ड्स टीम रेड एक्स। दैट वाज इंप्रेसिव गाइस, काफी अच्छा खेला इन्होंने यहाँ पे। Well, that was an unexpected finish, actually. Like they didn't seem to be getting that winner chicken dinner for quite some time in the start of the match, and I actually expected ACBC to actually make some, like game-changing moments. But the way they were being taken down, TS actually had a really good hand on that, and Team Red X already had a really good hand on that. And it should be like, congratulations to Team Red X on getting that winner chicken dinner with a total of 9 finishes in total, and the way they actually took the game. They actually gathered the pace from the mid of the game, and then they actually eventually, went into circle by circle. They captured the zone inch by inch, and they still had all that manpower that they needed, all 4 members in the team, and they were being able to read the game in such a beautiful way. TS had really no chance because they were being surrounded on all the 4 different angles. And when you get such an onslaught from any team, it's very hard to defend because which area would you like to cover? If it's a 180-degree field of view, it's really easy for you to cover. But when it's 360 degrees, it becomes really hard. And they were coming up to them on a 270-degree angle of view, so that was really hard for them, TS to actually defend. And being one man down as well, and even if they had some artificial covers, it was only a matter of nades and utilities. With that, Team Red X really showed us the struggle that they had, and they were being able to get that winner chicken dinner. So that was a really good match that we had. So you are looking at Battlegrounds Mobile India Gaming Masters here, which is happening for a price of 12,50,000 rupees, being presented by MediaTek, and this is being done in association with JioGames. So kindly do support JioGames and also check them on the Play Store where you have JioGames app. Download it, and whoever wants to be an aspiring streamer, you can actually launch the JioWatch platform where you can be a streamer of yourself. You can upload your content. You can do whatever you want. And also you have MediaTek where they have some cool gadgets and everything on their website as well. So kindly do check them. Check their social handles, which has been given in the description below. So this is me, Baba Gaming, as well as with me is Raider, and we are hosting the first match for day 2 here of the qualifiers, BGMI Gaming Masters. So guys, on that note, we'll take a short break और मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द नेक्स्ट मैच के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग वो मैच भी आपको देखने मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, आप लोग यहाँ पे सारे प्लेटफॉर्म्स में जाके चेकआउट कर सकते हो। यू कैन एंजॉय एनी वन प्लेटफॉर्म एंड वहाँ पे आप लोग बैठ के सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फेवरेट टीम्स को। यू कैन जस्ट कमेंट डाउन एंड वी विल लुक आफ्टर इट एंड ऑल। तो तब तक के लिए गाइस, बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, लव यू ऑल गाइस। Won't you say why you're a stranger now? Your eyes escape mine when I sit you down. Don't you feel like we're holding onto a fairy tale, but the magic's gone? Been months of bluffing the blushes and faking the butterflies. Wake up, yeah, I'm kicking the castle down. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G. We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek Hyper Engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible.
MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G. We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek Hyper Engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G. We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek Hyper Engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible.
MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. Okay, guys, so we are back to Sanok right now, and this is match number 2. And let's look at match number 2 here. We are having MediaTek presenting Battlegrounds Mobile India Gaming Masters here, which is being done in association with JioGames. And this is the first event for myself and JioGames Raider, and I'm actually really excited to actually present an event with JioGames here. And I'm really excited to see JioGames app and Jio Watcher, which will be launched in Play Store, where you guys can download it, and also we can, as a streamer, we can actually upload our content. We can, it's like YouTube, it's like Loco or whatever other platforms that they have. And Jio, having such an extensive background on the end, definitely it will be a really win-win situation for everybody. So looking at the Sanok here, and look at that, the teams are already having their drop locations. A boot camp, we'll be having some exciting fights between 2 to 3 teams, I guess, a cluster being formed in boot camp. This was not there yesterday, but today, I think we'll be having some exciting fights, and we can see couple of teams there, team number 12 already there, and also they will be distributed in and around bootcamp here. So let's see how this fight is going to happen in bootcamp. Are you excited, Raider? What do you think is going to happen? Yes, I am excited. I'm pretty much excited. Let's talk about the whole fight scenario right now. As you can see, team number 1, the player that is known as The Ninja is right here, जो कि यहाँ पे कंपाउंड्स को लूटते हुए देखेंगे. वही WTC शील्ड की बात करी जाए, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं गन्स का यूज आपको जरूर यहाँ पे देखने मिलेगा. अच्छी खासी गन कॉम्बो उनको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है. That's quite beautiful. If we talk about Skull Junior, इनके पास भी यहाँ पे अच्छी खासी गन यानी माइक्रो उजी बैरल यहाँ पे मिलती हुई दिखेगी. वही टीम रेड एक्स की बात करी जाए, our last winner, our last champion. In the last match, they had secured the winner chicken with beautiful 9 finishes. I guess in a single match, they have achieved 24 points. Well, that is quite beautiful. And जहाँ तक मुझे पता चल पा रहा है, I guess only the hashtag 1, the table topper will go towards the next phase, I guess. So that would be quite important for these teams right now. अगर हम बात करें यहाँ पे पोजीशन पॉइंट की, तो फिलहाल यहाँ पे रेड एक्स की टीम अब सफर करती हुई दिखेगी. देखिए टॉप 12 टीम्स यहाँ पे लॉबी के अंदर ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं. वी हैव ओनली 12 टीम्स. तो हैशटैग 1 से लेकर हैशटैग 12 तक पोजीशन पॉइंट्स जो हैं वो तो सबको मिलेंगे. बट इट्स द मैटर ऑफ क्वेश्चन इज दैट किस टीम को कितने पोजीशन पॉइंट मिलने पा रहे हैं, किस तरीके से टीम्स यहाँ पे अचीव करेंगे उन पॉइंट्स को, वो कहने के काफी ज्यादा मैटर कर जाता है. So let's talk about the fights. At the moment, we have R2 in the scene, we have X-Man in the scene. उसके अलावा यहाँ पे SOG के members भी फाइट लेते हुए देखेंगे. Well, there we go. यहाँ पे मल्टीपल एंगल से मल्टीपल फोर्स से फाइट चलती हुई दिखेगी. एंड फाइनली यहाँ पे एक नॉक शायद हमें देखने मिल जाए बहुत ही जल्द. बट दोनों ही टीम्स कोशिश जरूर से यहाँ पे कर रही है कि डिफेंड करे खुद को, यहाँ पे किसी तरीके से पिकअप्स को निकालते हुए दिखें. एंड देखते हैं कौन सी टीम ऐसी निकल के आती है इन तीनों में से. यहाँ पे कौन सी टीम ऐसी रहती है सामने जो आती है अपनी फाइट्स को यहाँ पे डील कर पाती है, किस तरीके से टैली कर पाएंगे. यहाँ पे अब देखिए रेड एक्स के मेंबर सफर करेंगे. निकी को यहाँ पे पिकअप किया जाएगा. अरमान इज आल्सो टेकन डाउन एंड नाउ वी हैव ज़ेरफ इन द सीन. देयर वी गो. टीम रेड एक्स इज सफरिंग अ लॉट एट द मोमेंट. यहाँ पे एक प्लेयर को पिकअप किया जाएगा. इस तरह की कोशिश डाउन पिक ऑफ. Now we have only one guy left and there we go. Just like that, Team Red X secures 3 amazing finishes with the loss of a single player. यहाँ पे ट्रेड काफी ज्यादा बेहतरीन देखने मिला, but even a single player loss is very detrimental for the team. But Team Red X यहाँ पे खेलती हुई दिखेगी इन द एरिया बूट कैंप. बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे हैंडल किया फाइट को एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे 3 फिनिशेस निकालती हुई दिखेगी टीम. बट ऑन द अदर पॉइंट वी हैव सम अदर टीम्स व्हिच आर गोइंग टू फाइट बैक. द फाइट्स आर एंडलेस एट द मोमेंट एंड इजीली यहाँ पे टीम नंबर 7 भी सफर करेगी. विजन DR, the only guy left right now from his team, is going to fight back once again. 1v1 का पे बैटल देखने मिलेगा आपको फिलहाल. तो देखते हैं कौन यहाँ पे सरपास कर पाता है इस बैटल को. हाउ दे विल डील विद द फाइट राइट नाउ. 1v1 लेने की कोशिश, स्पॉट हिम आउट एंड देयर वी गो. जस्ट लाइक दैट यहाँ पे पिक ऑफ करते हुए दिखेंगे. टीम नंबर 9 के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं. आई गेस टीम नंबर 9 के बाकी के 2 प्लेयर्स आपको हाथ में देखने मिलेंगे काफी ज्यादा दूर, प्रीटी मच फार अवे. दे आर लूटिंग एट द मोमेंट. यहाँ पे देखिए आप अगर खेल रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव मैच के अंदर, अगर एंटर कर रहे हैं, नेवर एवर डू दीज काइंड ऑफ थिंग दैट आप अपनी टीम से थोड़ा सा अलग खेलेंगे, अपनी टीम से थोड़ा सा अवॉइड करके खेलेंगे. ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे देती है आपके लिए कॉम्पिटिटिव करियर के अंदर. कहीं ना कहीं आपके पॉइंट्स मिस आउट हो जाते हैं, आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है. मैचेस में आपके लिए यहाँ पे पॉइंट्स नहीं निकल पाते ढंग से और आपकी टीम में सिनर्जी यहाँ पे नहीं बन पाती है. तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है परफॉर्मेंस को यहाँ पे. वहीं अगर हम चलते हैं टीम नंबर 10 की तरफ, पिछला मैच में दिस वॉज द टीम जिनके आई गेस हैशटैग 3 पोजीशन यहाँ पे आई थी. दिस टीम वॉज ऑल्सो वेरी गुड इन द फाइट्स, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं सफर कर गई थी ये टीम. एंड टीम SOG वॉज द टीम जिनका यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टैंड रहा था मैचेस के अंदर. But now they have already lost their one player and that is very detrimental for them. Well, definitely. Again, talking about that fight in boot camp that we had for Red X, I think that was, a little bit of a hasty decision for Red X because the first match you actually got a dinner with really good kills, 9 kills dinner, and then was it a little bit of an overconfidence to actually go into boot camp and go into an assault mode already really early in the game? But still, they got the fight. They lost one guy. How this is gonna be costing them on the end of the match? We still have to wait and watch because what happened in last Erangel, like they were 4
squad. They had all the manpower that they needed on the last zone, but this time they have already lost one guy really early in the game, and that too in a Sanhok map. This might be proving really costly for Red X team. So let's see what's going to happen. Meanwhile, we also saw ACBC was looting in and around Kampong, and I think ACBC is actually having a strategy to actually get and collect as much first aids as possible, because like if you go to Kampong, if you go to Docks area, that would be the only idea for the team, because they'll be trying to like gather as much as possible, and they'll be trying to move into the circle and then get the kills as much as they want. So Sanhok seems to be really good here on the flow. ACBC already taking the rotations. They are on foot right now. Vehicles does not matter much in Sanhok, but still, if you have a vehicle, it's always an advantage for you, added advantage if you get a buggy. Because being this small map, if you can make some quick rotations, if you can make some quick getaways, that is always valuable for you. Because if you're pinned down in a fight, if you're pinned down on a ridge, on a hill, or somewhere else near the cave, or somewhere else, and one guy has to flank it, and if you can take a buggy and make a quick flank, that would be always very invaluable for the fight. And meanwhile, we have the airdrop here, and we have the light machine gun already here with the level 3 gears and some 7 ammo as well. So I believe this would be a deadly weapon in Sanhok, guys, because whoever is gonna be a snake here will be going for some maximum kills with this weapon, and those 75 bullets are gonna hurt a lot. So meanwhile, team number 12 already having that buggy in and around boot camp. They'll be trying to make the rotations. Team number 2, we are looking at them already locating them near the boot camp as well. Will they be engaging it? I don't think so. That would be a good idea. But still, they are taking their positions here. Yes, they have spotted them taking those shots, but a 2x spray with that Scarl will not be connecting it. And he will be making a quick getaway. A few tags being done, half HP being down, but that was a decent spray, I should say. On the go, he was giving some really good reflex, but they will be in and out of the crosshairs, and they will be safe right now. And that was a really good one, a really close one, I should say. And I think they'll be going in for some revenge now. यस अफकोर्स कहीं ना कहीं अपनी टीम को रिग्रुप करने के बाद दोबारा से आप इस फाइट के अंदर एंटर कर सकते हैं. बट इफ आई टॉक अबाउट टीम रेड एक्स, इनके पास कहीं ना कहीं काफी अच्छा एक लक था इनका, यहाँ पे बच गया. अदरवाइज अब अगर हम बात करें टीम एसओजी की प्लेसमेंट की, उनके पास बहुत ही अच्छा खासा एक एंगल यहाँ पे मिल चुका था. बहुत ही इजीली वो बंदे यहाँ पे पिक ऑफ कर सकते थे, बट स्टिल सफर्ड अलॉट. यहाँ पे D369 देखने मिलेंगे टीम एसओजी की तरफ से. हमारी अगर बात करें चाहे नूब स्लेयर की, इनके पास QBZ देखने मिल पा रही थी. QBZ इज ऑलरेडी अ हायर रिकॉल गन, इतना हाई नहीं है, बट स्टिल दिस गन हैज सम काइंड ऑफ पंच. थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल तो जरूर यहाँ पे देखने मिलेगा इस गन के अंदर. तो वहीं यहाँ पे 2x लगा हुआ था. 2x इज नॉट दैट काइंड ऑफ स्टेबल एमिंग स्कोप, तो यहाँ पे वही चीज आपको देखने मिली था. थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर से यहाँ पे रहा था टीम के लिए. विजन की बात करी जाए, पिछले मैच में भी यही प्लेयर सर्वाइवर यहाँ पे बचा था, अपनी टीम का आखिरी प्लेयर यहाँ पे देखने मिला था. इन दिस मैच अनफॉर्चुनेटली ही इज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम दिस मैच, सो यू कैन सी दैट विजन DR यहाँ पे देखने मिलेंगे. बिल्कुल कोशिश यहाँ पे रहने वाली है. नीले 143 केविन एंड महाकाल लॉर्ड वाज ऑलरेडी टेकन डाउन. नाउ विजन DR हैज द होल कंपाउंड एंड हैज द होल मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी इनको पूरी यहाँ पे किसी तरीके से जोन के अंदर जाने की कोशिश करनी पड़ेगी. वही टीम ACBC की बात करी जाए, यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रीजन से अपना जोन के अंदर ट्रैवल करती हुई दिखेगी. इफ आई टॉक अबाउट टीम पाइनान, तो वी हैव टीम नंबर 25, द फर्स्ट एवर एलिमिनेटेड टीम इन द लास्ट मैच. सबसे पहली टीम थी ये जिनको एलिमिनेट किया गया था लास्ट मैच के अंदर. बट इस मैच के अंदर कहने की टीम काफी अच्छे तरीके से खुद को होल्ड कर रही है एंड बचना चाह रही है फाइट से यहाँ पे. एक्जैक्टली लाइक ACBC, दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर द लूट. तो वी हैव स्लोक विद 3 फर्स्ट एड किट्स, वी हैव दिस गाय व्हिच इज पैंथर विद 5 फर्स्ट एड किट, एंड वी हैव ड्रैगन विद 4 फर्स्ट एड किट. तो ऑल इन ऑल टोटल अगर करें तो आप पे 12 फर्स्ट एड किट ये टीम ऑलरेडी यहाँ पे उठा चुके हैं. एंड सानोक इज ऑल अबाउट हील बैटल्स. सानोक में कई बार आपको देखने मिल जाती है हील बैटल जैसी चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रख जाती है सानोक के मैप के अंदर. तो एक्जैक्टली शायद टीम यहाँ पे उसी के पीछे यहाँ पे लुक आफ्टर करते हुए देखेंगे, एंड दे आर लुकिंग आफ्टर टू गेट सम मोर हील्स. एंड यहाँ पे किसी तरीके से खुद को बचा के यहाँ पे जोन के अंदर डीपली ले जाने की कोशिश टीम जरूर यहाँ पे करती हुई देखेगी, व्हिच इज गोइंग टू बी क्वाइट इंप्रेसिव एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग. नो आइडिया हाउ दे आर गोइंग टू स्प्रे, एंड यहाँ पे किसके ऊपर ये स्प्रेज करते हुए देखेंगे. आई गेस रैंडमली अपनी एम को प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं, बट स्टिल गो आई गेस बहुत ही जल्द इनको फाइट यहाँ पे देखने मिलेगी. बहुत ही जल्द कुछ अच्छा कॉम्पिटिशन आपको यहाँ पे देखने मिलने वाला है टीम्स के रिगार्डिंग. बट करेंटली आप देखिए बूट कैंप के पास यहाँ पे एक अच्छा क्लस्टर देखने मिलेगा. वी हैव क्लोज टू 3 टीम्स 4 टीम्स आई गेस व्हिच आर प्रीटी मच क्लोज टू द बूट कैंप एरिया राइट नाउ. एंड बूट कैंप के अंदर ही आई गेस पूरी फाइट होती हुई दिखेगी. अगर हम बात करें कल के मैचेस की, इफ वी कंपेयर फ्रॉम यस्टरडेज मैचेस, तो आज के टीम्स यहाँ पे जो है इस ग्रुप की जो लॉबी 12 की जो टीम्स देखने मिल पा रही है, वो कहने के कॉम्पिटिशन लेवल पे काफी ज्यादा क्लोज आके फाइट लेने की कोशिश करते हुए दिखेंगे. इनिशियली इस पूरे मैच के अंदर, पहले वाले मैच के अंदर बात कर लीजिए और इस मैच के अंदर बात कर लीजिए, टीम्स फाइट के लिए ढूंढ रही है. दे आर लुकिंग आफ्टर फॉर सम फाइट्स, नॉट लाइक दे आर जस्ट गेटिंग अवे फ्रॉम द फाइट, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर मोर फाइट्स. कोशिश करने की और फाइट्स उनको किस तरीके से निकले, कहाँ से मिले, कौन सा एंगल से उनको और फाइट्स यहाँ पर निकल सकती है. तो ये सारी चीजों पर फोकस जरूर से यहाँ पे रहने वाले टीम्स का, which is quite interesting to watch, and देख के अच्छा लग रहा है that teams are actually getting over to get a fight.
Thunder Whitey still holding Well, the you know perspective. what, Raider? You know what, Raider? I would like to say something like, ACBC, TS, and then Red X. Yeah. These are the three teams which I have my eyes on it. Maybe Okay. SEG, maybe they'll be trying to make some difference in this match, because last match they were trying to change the things, but unfortunately they could not. Yeah. But maybe those cluster of four teams there in and around boot camp that we are looking at, those will be the teams which we will have to spectate as much as possible, because they seem to be knowing, what is going to happen in this match. Even though we have a less lobby, like 31 people are still alive and 11 teams are still there. But you know what? For a Sanok map, this is more than enough. And concentrating on those center area of the zone where in and around boot camp we have all those four main teams who are looking to get that dinner. I think the fight is going to be in between those guys. Who is going to get that dinner? That will be the question, right? या ऑफ कोर्स यहाँ पे देखिए सैनोक का जो मैप होता है काफी ज्यादा टैक्टिकल एडवांटेज के लिए यहाँ पे माना जाता है, बिकॉज देखिए यहाँ पे छोटी सी श्रब के अंदर एक छोटे से यहाँ पे ग्रीन कवर के अंदर देखिए कितना ब्यूटीफुली ये बंदा बैठ चुका है यहाँ पे, बहुत ही परफेक्टली इन्होंने अपने कपड़ों को भी अलाइन कर रखा है. ही इज वेयरिंग ग्रीन पैंट्स एंड ऑल, यहाँ पे इस तरीके से बैठे हुए हैं और इनका बैकपैक भी एक तरीके से सेमी ग्रीन देखने मिलेगा. आई गेस कोई भी इनको स्पॉट नहीं कर पाएगा अंटिल अनलेस ही स्प्रेज हिम आउट, या फिर गन इनकी यहाँ पे ओवरथ्रो कर देती है इनके पूरे पूरे लुक को. बट आई गेस बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने खुद को यहाँ पे छुपा के रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये चीज देखने मिलती है. सैनोक में कई बार होता है, इन्हीं को बोलते हैं हम सैनोक के डेडली सांप्स, द डेडली snakes of the Swinok. And we have Drunken Star in the scene, and after that we have Drunken X in the scene. This is Team Drunken. ACBC is finally into some action right now. PLS Slope taken down, completely finished off by Team ACBC. Let's talk about the other rest. Assured guys, we have Dragon and उसके अलावा यहाँ पे Panther भी देखने मिलने वाले हैं. दोनों ही मेंबर्स काफी ज्यादा दूर यहाँ पे आ चुके हैं. टीम ACBC ऑलरेडी यहाँ पे 2 फिनिशेस निकाल चुकी है. पिछले मैच में भी कुछ ऐसे स्टैंड यहाँ पे टीम ACBC का रहा था. इनिशियल जोन से काफी अच्छे खासे फिनिशेस निकाले थे, लेकिन लास्ट में टीम ACBC ने काफी भारी गलती कर दी थी, एंड दैट मिस्टेक वाज टू बी आउट ऑफ जोन. तो इस मैच के अंदर अगर वो गलतियां टीम्स ना दोहराएं तो आई गेस टीम ACBC will be the #1 टीम जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को अगले फेज में देखने को मिल पाएगी शायद. आई गेस इन द क्वार्टर फाइनल्स दैट विल बी. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ACBC शॉक, स्नो, कैपराउन, हैक्सर, these 4 guys are still waiting for the whole perspective. अभी भी यहाँ पे मौके की तलाश में कि कुछ अच्छे फिनिशेस निकल पाए, बट currently they are in the sort of center of the zone right now. That's beautiful. If I talk about team number 16, तो we have Ponic, Mikey, and after that we have 90 FPS Phoenix. In the last match we had 90 FPS bot, but in this match we have only 2 players. Guys, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ पे, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव इवेंट में एंटर कर रहे हो, if you are fighting for some kind of fame, fighting for some kind of lobby, और अगर किसी रूल बुक की वाली लॉबी के अंदर बैठे हो rather than a classic, तो अपने सारे मेट्स को आप ज्वाइन करवाइए, अपनी सिनर्जी को मेंटेन करिए, अपने गेम को आप इंप्रूव करिए, बिकॉज आगे इन फ्यूचर इंडियन ई स्पोर्ट्स इज गोना गो थ्रू द रूफ. तो अगर आप लोग अपनी सिनर्जी अभी से बिल्ड नहीं करोगे, आई गेस एक तरीके से एक पूरा डोमिनेशन बन जाएगा कुछ टीम्स का, कुछ लॉबीज का डोमिनेशन बन जाएगा, एंड आफ्टर दैट यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग इन द लॉबी. तो मेरे हिसाब से आप लोग जब भी खेलो, एटलीस्ट यू कैन डू वन थिंग, दैट यू कैन प्ले टुगेदर. Well, like what you said is really right, Raider, because like the gaming meta has been evolving on a really exponential basis in India, and what we have seen in the last 2 years is really an example for that, because like when PUBG was being introduced and then BGMI came to being, and the evolution of the players that happened in these last 2 years have been really monumental. And meanwhile we also have some fights which have been happening, but still coming back to the point, yes, these game changes, these game changing metas are being done by all the underdog players, and these teams have come out of nowhere. They were nobody, but then they have made a name for themselves, and now we have a lot of players with a high caliber. They are playing the game in such a good level. I would say that the game has really reached its saturation point where you cannot tell the difference of a player who has been practicing for the last 2 months and a player who has been practicing for the last 1 year, because that much amount of hard work is being done. So you cannot actually differentiate between those two. So I would say that, the Indian gaming community, I wouldn't say it's only related to, BGMI or whatever, but compared to all the esports, it's going to be getting a huge boom, because players are, they are more enthralled, and they are more, they are having a vision towards all the different kinds of games that are out there. They are looking into opportunities that's going to happen. So again, coming back to the game, you can see in the map view, all the 4 teams are aligned together. We have ACBC there. On the back end, we have Red X, and here we have team number 10 already having their sights on ACBC, giving 1 knockdown, and ACBC will be giving an easy revive there inside those hard covers. And yes, spotting him out, and with the 3x giving that beautiful knock, and that was a really good one from his end. And team number 10 already having that trade knock already being done from ACBC here, and will they be able to capitalize on this? We have to wait and watch. But meanwhile, these shots will also attract the other neighboring teams who will be looking to make an entry here, a third party fight that will be happening. So let's wait and watch what's going to happen. So I think this is a compound to compound fight. So what do you think is going to happen? Will ACBC be able to capitalize on this, man?
I guess yeah, this match can be capitalized by Team ACBC because they don't have the pressure of moving into a zone at the moment. But यहाँ पे तीसरी जोन भी बहुत जल्द आने वाली है. साथ ही अगर बात करें जाए सैनोक, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच और यहाँ पे काफी ज्यादा टेंटेटिव होती है टीम्स की. यहाँ पे अच्छे खासे थर्ड पार्टीज यहाँ पे दे बिकॉज पीछे से यहाँ पे आके आप स्लैमे दे दो आराम से, अच्छे खासे फिनिशेस यहाँ पे ऑक्यूपाई करो. एंड इफ यू नो दैट यू कांट एक्चुअली ओवरकम द होल फाइट, यू जस्ट हैव टू फॉल बैक. तो यहाँ पे ये चीजें सैनोक में काफी ज्यादा देखने को मिल पाती है. एंड इवेंचुअली अगर हम बात करें, टीम थोड़ा सा क्लोजिंग करने की कोशिश करेंगी. थंडर वाइटी की तरफ से काफी अच्छे खासे फिनिशेस यहाँ पे देखने को मिल पा रही है. I guess one finishes at the moment. Now that is by Sahil, I guess. Thunder Whitey actually managed to get one knockout, but he is currently away from the team. और कहीं ना कहीं यहाँ पे घासों में छुपे दिखेंगे, इस समय आराम से वेट कर रहे हैं. एंड आप देखिए, इवेंचुअली दिस इज द सेकंड जोन, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स आर स्टिल एट द एरिया ऑफ बूट कैंप राइट नाउ. उसी के कोरिस्पॉन्डिंग एरिया में यहाँ पे देखने मिलेगी. लेट्स टॉक अबाउट द हार्डशिप ऑफ द जोन. थर्ड जोन बानी बहुत जल्द आने वाली है. देखते हैं थर्ड जोन किस तरह की बनती है, कैसा हार्डशिप लेके आती है जोन. एंड दे बिकॉज द जोन इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स रुइंस एंड पाइनन एट द मोमेंट. एंड यहाँ पे बूट कैंप का 50% ऑफ द एरिया हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जोन. एंड नाउ टीम्स हैव टू डिसाइड either they have to stay on the boot camp island, or they have to go towards ruin island, or they have to move. I guess if we talk about the Camp Alpha island, I don't think teams will go towards that area because only the 10% of that area is in the zone right now. So मेरे हिसाब से यहाँ पे टीम्स ruins के लिए यहाँ पे look after करेंगे, ruins जाने की कोशिश करेंगी, उस वाले island की तरफ यहाँ पे जाते हुए दिखेंगे. And ये वाला जो एरिया हमें यहाँ पे देखने मिलेगा, majority of this area will be occupied, I guess, in the zone. So let's see how they will actually retaliate. और यहाँ पे देखते हैं हमारी well, you know, like when such kind of a zone actually comes in, you know, like those three houses, like the bridge, the small bridge, and those three shores, one and around boot camp, or the other one coming from Harton, and yeah, that's the same location. That's where the fight is going to be because the teams are going to be aligned on the shorelines. And yes, we can see Red X already coming in with those vehicles on those shorelines, and they'll be giving some shots from the opposite team on the other end. They are not actually giving some shots. They are not revealing the positions yet, but I think it's only a matter of time before the fight actually starts. And ACBC currently outside on the edge of the zone. They will have to battle it out against team number 10 in order to actually move into the zone. And yes, let's see what kind of a rotation they'll be taking in. They are currently engaged very deep in a fight, and there you go, team number 6 already getting those shots. Junaid OP already going down here. And I think this is really bad for team number 6 here. And ACBC, we still have them on the go. And yes, there you go. Again, a knock already being done. That was a swift knock. Immediate reflex here from ACBC. That's what we saw. And team number 6 in some deep trouble. Two more guys left. Will they be able to survive? Will they be able to get in? It's very difficult to say what's going to happen. But ACBC, I think they will be trying to look here forward and also finish this, get those 4 kills, and then move into the match. So let's wait and watch what's going to happen. And as I said, those 3 houses, that small bridge and that shoreline, that's where the fight is going to be at. That's where the zone is going to end. And let's see what's going to happen, Raider. Yeah, of course. But the thing is, let's look at it. The Capron guy was actually very amazing. बहुत ही beautiful, बहुत ही swiftly. एक हल्का सा इन्होंने पीक यहाँ पे निकाला और easily पे इनको अपने यहाँ पे स्टार्टिंग किया और बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशेस यहाँ पे निकाले. That was absolutely brutal. But अब अगर हम बात करें टीम TS की, उनके यहाँ पे देख सकते हैं जुनैद ओपी इस समय पिक्ड ऑफ देखने मिलेंगे. चेतन इज राइट है लुकिंग आफ्टर सम मोर फिनिशेस. एंड आरू की बात करें जाए, उनकी तरफ से यहाँ पे थ्रोएबल्स का यूज किया जाएगा. नीड्स आर गोइंग ऑन द वे टू कैप्रॉन, बट यहाँ पे नीड्स की कनेक्टिविटी काफी पुअर यहाँ पे देखने मिलेगी बिकॉज सैनो के एरिया में इतनी ज्यादा हाइडआउट्स होते हैं, इतनी ज्यादा ग्रासेस होती है दैट यू कैन जज दैट यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन क्या है. यू जस्ट हैव टू थ्रो द नीड. प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पे कि नेट कनेक्ट हो जाएगा आपका कई बार. और अगर हम बात करें लास्ट 4 फाइट्स की, तो वहां पे कुछ इंप्रेसिव चीजें जरूर देखने मिलती हैं. बट करेंटली एज यू ऑल नो दैट दिस इज नॉट द लास्ट जोन. दिस इज स्टिल अ स्टार्टिंग फेज ऑफ द होल मैप बिकॉज दिस इज द थर्ड जोन. आफ्टर दैट वी विल हैव 5 मोर जोन्स एंड वहां पे और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पे देखने मिलने वाली है. एंड एज बाबा गेमिंग एंड आई वाज सेइंग दैट यहाँ पे फाइट्स होती हुई दिखेंगी जरूर से आपको. तो एक्जैक्टली वही चीज यहाँ पे देखने मिलेगी. टीम रेड एक्स ऑलरेडी लॉस्ट देयर 2 players at the moment. We have Arman which is here in the waters, and we have Arto in the scene which is also in the waters right now. They are looking forward to get some more finishes from this area. But comparatively पिछले मैच की अगर हम बात करें, वही सेम फेज इनका देखने मिलेगा दैट दे आर वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग. बिकॉज देखिए पिछले मैच में 6 जोन के बाद से इस टीम ने अपना फाइट यहाँ पे निकालने की कोशिश करी थी. 6 जोन के बाद इन्होंने कहने के एंगेज किया था, बट इन दैट मैच दे हैड द मैन पावर. बट इन दिस मैच बूट कैंप की जो फाइट थी वो कहने के इनके लिए एक यहाँ पे लॉस निकाल के गई. निखिल ओपी को फिनिश ऑफ यहाँ पे किया एंड जेरेफ को जस्ट अभी कहीं ना कहीं पिक ऑफ यहाँ पे कर दिया होगा बिकॉज इनिशियली वी सॉ दैट 3 मेंबर्स वर गोइंग इन दिस वे, बट यहाँ पे उनके एक प्लेयर को फिनिश ऑफ यहाँ पे कर दिया होगा. आई गेस टीम एसओजी के पास एक फिनिश यहाँ पे जरूर से आ चुकी है. दैट इज लवली. एंड ACBC इज वंस अगेन गोइंग टू एंगेज इन द फाइट. देयर वी गो. नाउ ACBC की अगर बात करें जाए, आउट ऑफ जोन टीम 15 के लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए दिखेंगे एंड बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश ऑफ करते हुए दिखेंगे. टीम 15 आल्सो टेकन डाउन. टीम ACBC जस्ट बाय दैट यहाँ पे कर चुकी है proper 8 finishes, and they are just very fluent at the match. And you can see that Capron is finally going to go down, and there we go. Capron is taken down. Capron के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है. Team TS is once again going to avenge the whole fight. Aru OP को भी यहाँ पे ट्रबल पड़ता हुआ दिखेगा. Aru OP के लिए भी मुश्किलें बढ़ चुकी है. He is out of zone and यहाँ पे heal करना पड़ेगा, लेकिन spotted by Luffy from team number 10. There we go. The triangle is here right now. The Bermuda triangle of this BGMI map is here right now. बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है. ना ही टीम ACBC जोन की तरफ जा पा रही है, ना ही टीम नंबर 10 that is team BB is unable to go in the zone right now. And सेम वे हमारी टीम TS
के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है। टीम टीएस के चेतन यहाँ पे अकेले सर्वाइवर देखने मिलेंगे, प्रीटी मच पिन डाउन है, इनके पास ऑप्शंस भी नहीं बचे, ओनली 9 बैंडेड्स एंड 1 पेन किलर इज हियर फॉर दिस गाय राइट नाउ, बट अरू इज गोइंग टू क्लोज इन एंड आई गेस इजीली यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए दिखेंगे, बट दे हैव टू लुक आफ्टर द मिनी मैप बिकॉज 11 मोर सेकंड्स टू गो, 5 मोर सेकंड्स टू गो, आई गेस टू बी एग्जैक्ट यहाँ पे होने वाले हैं कैप्रॉन। वेल दिस गाय इज ऑन फायर राइट नाउ गाइस, 5 अमेजिंग फिनिशेस फॉर कैप्रॉन कंसेक्यूटिवली, ही इज ट्राइंग टू पुट सम डाउन यहाँ पे। आई गेस साहिल को भी पिक ऑफ इन्होंने किया, लगातार ये जो फाइट है इनकी तरफ से काफी ब्रूटल यहाँ पे देखने मिल पा रही है। वेल दैट इज वेरी इंप्रेसिव फॉर द गाय नोन एज कैप्रॉन. Yeah, definitely. Capron has been showing some really good reflex. And look at that game sense he had. He knew that there were players on his back, on his six. Yeah. And immediately while crossing the road, he actually went prone. He actually, his immediate ADS was onto those players and he was trying to, be ready for any reflex shots that needs to be done. And I think he will make some really good getaway into the zone. And team number 6, they also showed some really good matured gameplay there. Even though they were 2 men down and they were taken out in surprise by ACBC, they were able to come back. But meanwhile, ACBC 2 guys are into that zone and they are already having a fight and they are getting those back-to-back kills as well, and proper cover being done. Now smokes also being done on the side. Will there be some popping some nades? We have to wait and watch, but taking down again ACBC, again making the same mistake as in last match. They were getting those initial fights really fast, but those last zone fights, that's what they have to concentrate. And Capron being such a good player, he has been spotting him out. Team number 6 being completely spotted, AD is being provided, but still he has to make his way a larger way into the zone, and he's currently on foot, and this might be really problematic. And as I said, those 3 houses, that's where the center is, and all the teams are actually grouped down on there, and that shoreline will be on fire right now. And let's see what's going to happen. Will Sanok be on fire? Will the grasses be lit? We have to wait and watch. So Redex already coming in. We have ACBC already damaged. Team number 6 also coming out of the same ridge and they're also getting damaged there. And team number 6, we have the last guy remaining for the team. Will he be able to make any changes here? LMG3 already on his hands, and that's what I said. Will this player be able to, unleash those 75 bullets onto those enemies? Because this is going to be lethal as in a close range. But mollies and nades already coming in, giving him a 10 HP damage. And the zone is also closing out. And I think this will be providing him much more damage. He has to pop in a first aid, which he doesn't have. He has only a few bandages. And he's already down to low HP here. He's not even popping a bandage. This might prove to be really bad for him. He spots one guy, tries to take him out, and yes, he does, but unfortunately gets down from the back and from team number 10. And this is what I said, LMG3 being so powerful, but unfortunately not having that health was actually improving him his life. And here we have team number 2 already spotting that, fights happening over the ridge, and they have a really good eye to actually get that third-party view, and they are trying to capitalize on those skills. And Thunder already healing himself up. Team number 11, ACBC, still again alive with 3 members remaining, and they will be trying to close in on that bridge. They will be trying to cross it over. They'll be trying to capture a really good zone, and I think they still have this game in their bags, guys. So let's see what's going to happen. What do you think, Raider? Will ACBC be able to go for a winner chicken dinner? I think there is a possibility for that. Yeah, there is a possibility, and the thing is they have the finishes right now. There we go. यहाँ पे 10 finish भी इनका पे काफी जल्दी निकलते हुए दिखेगा, but the major focus of my is that is यहाँ पे जो team number 12 थी हमारी, जिन्होंने पिछले मैच में चिकन निकाला था, the team Red Rex is already eliminated. So there is a beautiful gap for this team. Team ACBC अगर ये चिकन यहाँ पे निकालती है तो they could easily be in the next phase right now. If I talk about team number 16, बहुत ही ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई दिखेगी. 90 FPS आप फीनिक्स देखने मिलने वाले हैं. लास्ट मैन स्टैंडिंग काफी ज्यादा कॉम्बैट के अंदर आप फंसते हुए दिखेंगे. द मेजर कॉल इज राइट नाउ. देखते हैं फटाफट से फीनिक्स क्या कर पाते हैं, किस तरीके से बंदा यहाँ पे टैली करेगा पूरी फाइट को, बिकॉज ही इज द गाय हु इज इन द जोन राइट नाउ. बट कितनी देर तक यहाँ पे रह पाएंगे, बिकॉज मल्टीपल फ्रंट साइड के ऊपर डैमेज यहाँ पे दिया जाएगा, एंड ये काफी ज्यादा क्लोज पॉइंट इनके लिए बनता हुआ दिखेगा, बिकॉज टीम्स पे टीम्स लोकेशन एंड दे वी गो हैक्सर मैनेज टू स्पॉट हिम आउट, एंड जस्ट लाइक दैट यहाँ पे हेडशॉट करने करके यहाँ पे फीनिक्स को फिनिश ऑफ करते हुए दिखेंगे. टीम ACBC इज जस्ट ऑन फायर एट द मोमेंट. ECBC का एक अलग ही लेवल, एक अलग ही रूप यहाँ पे देखने मिल पा रहा है. पिछले मैच के अंदर टीम ACBC की तरफ से कंपटीशन थोड़ा कम जरूर देखने मिला. कैप्रॉन के स्प्रेज आर डेडली. 3x वर्सेस 3x आप देख सकते हैं. फिलहाल यहाँ पे TT69 को ब्यूटीफुल यहाँ पे नॉकआउट किया, बट आई गेस कैप्रॉन कुड हैव बीन टेकन डाउन. यहाँ पे वही चीज हो सकती थी. कैप्रॉन यहाँ पे देखने मिलेंगे दोबारा स्टार्ट लेते हुए. स्नो यहाँ पे पिक ऑफ हो सकते दिख सकते थे, लेकिन स्नो अब यहाँ पे पानी के अंदर देखने मिल पा रहे हैं. वही कैप्रॉन की बात करी जाए, अगेन टीम ACBC की तरफ से वही सेम मिस्टेक देखने मिलेगी, दैट दे आर फ्लैंकिंग इट आउट. एंड लास्ट वन के अंदर जब आप फ्लैंक आउट करते हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल आपके लिए बढ़ जाती है. यू नेवर नो दैट यहाँ पे कहां से कब कौन पिक ऑफ करते हैं, आप लोग यहाँ पे बैकअप देने के लिए भी नहीं प्रेजेंट रहोगे. एंड उसी का देखिए कहीं ना कहीं एक अपोजिट चीज हमें देखने मिलेगी बाय टीम नंबर 10. बहुत ही अच्छी तरीके से बैक टू बैक ये टीम खेलती हुई दिखेगी. दोनों भी चीजें, दोनों प्लेयर एक साथ जुड़े हुए हैं. एंड सबसे ब्यूटीफुल चीज जो चीज मुझे यहाँ पे देखने मिल पा रही है, दैट इज टीम SOG. फर्स्ट जोन से ये टीम स्ट्रगल कर रही है. फर्स्ट जोन से इनके उर्वी को पिक ऑफ यहाँ पे किया था, एंड तब से ये टीम लगातार 4 फिनिशेस यहाँ पे निकाल चुकी है. बट स्टिल गाइस, दीज बोथ गाइस हैव नॉट लॉस्ट देयर टीम सिनर्जी राइट नाउ, और एक साथ खेलते हुए दिखेंगे, एक साथ अपने मूवमेंट यहाँ पे पूरे करते हुए दिखेंगे, एंड फर्दर अपने पूरे गेम को एक ही साथ निकालती हुई दिख रही टीम. तो मे बी दिस टीम कुड बी बिकम अ कंटेंडर फॉर द चिकन डिनर, बिकॉज अ ब्यूटीफुल एक चीज यहाँ पे देखिए, दैट ऑल द टीम्स हैव ओनली 2 players left right now. This is like a TDM but 2v2v2v2 in a sandbox map.
Well, definitely, and looking at that, ACBC already losing that, like one more guy, and we have only Snow and Capron still there. But look at Capron; he already has lost his helmet and vest. It's completely damaged. It's only for namesake there, so less of utilities. And again, we have a knockout already being done, and ACBC already trying to move in. But team number 10, as you said, still inside, coming inside the zone, and team number 2 trying to hold off their hard cover. They will be able to give a really good revive here instantly, but still, we have to, wait on this map, watch what's going to happen. And there you have it. Captain will have to give a back-to-back revive here for Snow, who was being spotted. And again, team number 10 also moving in, but the zone is actually, closing in. The clock is actually ticking. Let's see, wait and watch what's going to happen. Team number 10 does not have the zone clearly, and they will be going on for a heal battle. 4 first aids already on him, and he popped that first aid really early, and yes, he cancelled it because he knew that it was too early for him to put that first aid. But perfect nades here from team number 9, already closing in from the west end, and they will be going in against team number 2. But on the back end, they also have ACBC also closing in. I think team number 9, if they are on that compound, on that walls, I think they will be easily taken out by ACBC. Yes, they have spotted them out. They will have to rush into those compounds. They will have to get in there. But the zone, look at that zone. Zone is actually out into the open, and team number 10 already being spotted and getting eliminated here from ACBC out into the open. And they are actually proceeding into this match with that kills. And we have the top 3 team scenario that we are looking at here. So team number 2 already still there. We have ACBC still here, and team number 9. Okay, top 2 team scenario already here. Team number 9 also being wiped out. So team number 2 versus ACBC. Who is going to win this match? And what do you think is going to happen? It's a 2v2 battle, man. Raider, what do you think? Who's going to win? The thing is that ACBC clearly has that motivation, clearly has that confidence that they could do this, because the thing is they have already achieved 13 finishes, and that's absolutely beautiful and tremendous. But the thing is, यहाँ पे अगर हम बात करें ओपोनेंट की, उनकी टीम SOG आपको देखने मिलेगी। कैप्रॉन दोबारा से यहाँ पे ओवरपावर करेंगे, DT69 को पिक ऑफ किया जाएगा। Noob Slayer is the only hope for the team, and I guess he is going to go down, and yeah, that's what happened. Capron managed to commandeer that fight, and easily यहाँ पे निकालते हुए दिखेंगे पूरी फाइट को। यहाँ पे ACBC की तरफ से deadly finishes यहाँ पे देखने मिले, 16 finishes with that beautiful chicken dinner that consecutes 31 points in a single match। यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल गाइस, एंड 10 फिनिशेस यहाँ पे कैप्रॉन ने निकाले। वेल, ही इज द MVP फॉर दिस मैच, ही इज द MVP फॉर दिस टीम, एंड पूरी की पूरी इस लॉबी के लिए MVP यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। सिंगल हैंडेडली इस बंदे ने 10 फिनिशेस यहाँ पे निकाले हैं। रिमेंबर गाइस, एक छोटा सा नोट यहाँ पे डालना चाहूंगा दैट ओनली 42 प्लेयर्स वर इन दिस लॉबी, 16 आउट ऑफ विच 16 प्लेयर्स हैव बीन taken down by team ACBC, and out of that 16 players, 10 players have been taken down by this guy which is known as Capron. What a tremendous performance, guys. What an amazing performance. Well, definitely a big shout out for Capron here from us as well for this amazing performance from him. He actually carried the team towards that winning streak, I should say. So that should actually, get him a qualifying slot for the next qualifiers as well. And meanwhile, you are looking at Battlegrounds Mobile India Gaming Masters here, presented by, powered by JioGames and presented by MediaTek here. And this is happening for a prize pool of 12,50,000. And we are looking at the qualifiers J2, which is actually happening. And amazing tournament, amazing matches that are being done. And let's wait and watch what's going to happen. So we'll be back after a short break, and this will be resuming in just 10 minutes, guys. So stay tuned. Don't go anywhere. You can actually check out MediaTek websites for your social media handles, which are given in the description below, for some exciting products that they have. And also, you can also check JioGames app on the Play Store, where you can download it. You can also go for JioWatch. You can create your own streaming content. You can actually be a streamer as well on that platform. So kindly to check it out. So saying that, we'll be back in 10 minutes, guys. Stay tuned. Don't go anywhere. Be right back. Adios, guys. Bye-bye. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G.
We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek hyper-engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G. We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek hyper-engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G.
We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek hyper-engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G. We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek hyper-engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G.
We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek Hyper-Engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G. We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek Hyper-Engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G.
We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek Hyper Engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G. We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek Hyper Engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot. Well, hello and welcome back guys. Once again we are back with another match लेके आ चुके हैं आपके लिए फिलहाल कि हमारी लॉबी नंबर 15 दिस इज गेमिंग मास्टर्स प्रेजेंट बाय जियो एंड यहाँ पे आ चुके हैं आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग एक और मैच यहाँ पे लेके रैंकल का मैप आपको देखने मिलेगा भैया 15 टीम्स एंड 59 प्लेयर्स आई गेस इन द लॉबी सो दिस इज गोइंग टू बी अ क्वाइट इंटरेस्टिंग मैच और काफी ज्यादा एक्साइटिंग ये पूरा बैटल यहाँ पे रहने वाला है स्लॉट नंबर 1 पे वी हैव टीम U7 एंड ऑल यहाँ पे लॉबी आपको एक बार दिखा देता हूँ फटाफट से सो दैट यू कैन इवेंचुअली नो दैट व्हिच आर योर फेवरेट टीम्स एंड किस टीम को आप लोग यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आ चुके हैं इफ यू आर हियर टू सपोर्ट योर ब्यूटीफुल टीम जरूर से सपोर्ट
करिए। लाइव चैट के सेक्शन यहाँ पे ओपन है, काफी सारे प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे स्ट्रीम चल रही है। वी हैव यूट्यूब, वी हैव फेसबुक स्ट्रीम, उसके अलावा जियो गेम्स एंड जियो टीवी पे भी ये स्ट्रीम यहाँ पे चलती हुई दिख रही है। तो यू कैन जस्ट डाइव इन वेयर एवर यू वांट टू डू एंड यहाँ पे आप लोग एंजॉय कर सकते हो पूरे स्ट्रीम को। सो नंबर 1 पे वी हैव टीम U7 एंड ऑल, बट उससे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ एक बार प्लेन पाथ की यहाँ पे बात कर लीजिए। वेल दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगेन अ डायगोनल ड्रॉप, यहाँ पे फ्लाइट पाथ जाता हुआ दिखेगा फ्रॉम मिल्टा पावर टू ऑल द वे जॉर्जियोपोल। रास्ते में काफी सारे हॉट ड्रॉप्स देखने मिलने वाले हैं। इवेंचुअली आई कैन सी दैट मैक्सिमम टीम्स आर गोइंग टुवर्ड्स नोबोरिपुरई एंड द मिल्टा एरिया एंड maybe military base also, and after that we have Pochinki. Nobody went to Pochinki, nobody went to school, nobody went to school aparts and Rosehock and Water City and all. तो ये कुछ ऐसे ड्रॉप्स हैं जहाँ पे टीम्स इवेंचुअली जाया करती हैं, बट दैट्स एक्चुअली अ बिट इंटरेस्टिंग दैट यहाँ पे टीम्स नहीं गई हैं। कोई बात नहीं, इवेंचुअली देखते हैं क्या यहाँ पे सीन रहता है। काफी सारी टीम्स एक सेफ ड्रॉप लेने की कोशिश कर रही है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी दैट इन दैट लिटिल कॉर्नर यहाँ पे आपको देखने मिलेगी कुछ टीम्स जो कि कामेशकी के लिए निकल रही है। लिपोवका के आगे यहाँ पे जाती हुई दिखेगी, कंपाउंड टू कंपाउंड यहाँ पे लूटने की कोशिश करेंगी एंड छोटी छोटी एरियाज को यहाँ पे लूटते हुए टीम्स आगे जाने की कोशिश करने वाली है। दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट इंप्रेसिव। बट चलते हैं फटाफट से फार्म वाली साइड में, जहाँ पे काफी सारी टीम्स ऑलरेडी लूटती हुई दिखेंगी। काफी सारी टीम्स ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर चुकी है। उस एरिया में देखना काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। तो थिंक बीटेक के कुछ मेंबर्स देखने मिलेंगे। बीटेक इज अ डिग्री है यहाँ पे जो ग्रेजुएशन के लिए होती है। तो बीटेक के मुझे यहाँ पे देखने मिलने वाले पांडु, उसके अलावा एंड्रो एंड उसी के साथ करण एंड उसी के अलावा डोगरा यहाँ पे टीम बीटेक को रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे। बट बीटेक करण इज गोइंग टू फॉल बैक बिकॉज जानते हैं कि कहीं ना कहीं फाइट में दिक्कत होने वाली है। पहली जोन शिंक होगी इन अबाउट 5 मिनट्स आई गेस। तो 4 मिनट एंड 50 सेकंड्स के अप्रोक्सीमेटली हमारे पास टाइम बचा हुआ है। देखते हैं किस तरह का स्टैंड यहाँ पे रहता है, किस तरीके से टीम फाइट रहती है एंड किस तरह की फाइट्स यहाँ पे कंटिन्यू कर पाती है टीम। सो बीटेक करण इज अगेन गोइंग टू गो इन द जोन राइट, लेकिन करण को स्पॉट किया जाएगा। वेल बैक स्टैप्ड एंड इजीली फिनिश ऑफ करते हुए दिखेंगे। करण को कहीं ना कहीं लगा था दैट उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये ओपनिंग है जिसकी वजह से फॉल बैक कर सकते हैं, बट ही वाज प्रीटी मच रॉन्ग बिकॉज बहुत ही ब्रूटली उनको पिक ऑफ यहाँ पे किया जा रहा है। इजीली देखिए आप यहाँ पे सामने टीम के मेंबर आते हुए दिखेंगे, पिक किया, फायर लिया, यहाँ पे माइक्रो से पूरा फिनिश यहाँ पे करते हुए दिखेंगे। वेल दैट वाज क्वाइट इंप्रेसिव एंड काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे देखने मिला। तो लॉबी का सबसे पहला फिनिश टीम बीटेक के यहाँ पे आई गेस एक प्लेयर को किया जा रहा है। टीम बीटेक के एक प्लेयर को फिनिश ऑफ यहाँ पे किया जाएगा। दैट वाज क्वाइट इंप्रेसिव, देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगा ये चीज यहाँ पे कहने के। बट ऑन दैट पॉइंट गाइस मैं कहना चाहूंगा टीम सफर कर रही है। देखिए इनिशियल जोन है, इनिशियल ड्रॉप है, यहाँ पे होना नहीं चाहिए इस तरह की चीजें, बट यार मेरे को देखने को मिल रही है कुछ टीम्स यहाँ पे काफी लैक कर रही है अपने परफॉर्मेंस में। कुछ यहाँ पे लूट नहीं मिल पा रही, तो कुछ एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, वो चीजें इनके लिए काफी ज्यादा बुरी रहेंगी। बट पहला प्लेन पाथ की अगर हम बात करें, पहले प्ले जोन की हम बात करें, प्रीटी मच हमारा जो 10 to 15% ऑफ द प्ले जोन इज इन वाटर्स राइट नाउ। और बाकी का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉर्दर्न एरिया देखने मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल वी हैव झारकी, वी हैव आई गेस सेवर्नी, वी हैव स्टैल्बर इन द जोन, वी हैव shooting range, Georgipol Northwest City, Georgipol containers, we have Gatka 6 houses, I guess we have hospital, we have ruins, we have school aparts and all, but वहाँ पे टीम्स जाती हुई नहीं दिखी है। काफी ज़्यादा सेंटर्ड वो एरिया देखने मिलेगा, बट टीम्स वहाँ पे नहीं गई है। वेल दैट इज अ बहुत इंटरेस्टिंग थिंग। बीटेक डोगरा यहाँ पे देखने मिलेंगे, दोबारा से यहाँ पे एंगेज करने की कोशिश टीम नंबर 6 इनके ऊपर अगेन चढ़ाई करती हुई दिखेगी। अगेन इनके लिए एक बड़ा कॉम्पिटिशन यहाँ पे लाती हुई दिख रही है टीम। तो देखते हैं किस तरीके से बंदा डील कर पाता है। फर्स्ट एड लगाने की कोशिश, बिल्कुल यहाँ पे फर्स्ट एड लास्ट मोमेंट तक लगाने की कोशिश करी है, लेकिन नहीं हो पाया। यहाँ पे फिलहाल इजीली पिक ऑफ किया जाएगा इनको। दैट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट डेथ फॉर द गाय एंड इजीली पिक ऑफ यहाँ पे किया जाएगा। टीम पीएम इज जस्ट रोलिंग द होल फाइट एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे टीम नंबर 10 की बात करें जाए, उनके जो एक और प्लेयर देखने मिलेंगे इनके हाथ में PP19 बाइजन अलॉन्ग विद अ ब्यूटीफुल 6x इज देयर। यू गाइस नो दैट यहाँ पे एसएमजीज के जो रिकॉइल है वो थोड़ा सा यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड थोड़ा सा ज़्यादा बड़े होते हैं, बट मेरे हिसाब से ये गलत डिसीजन था। मेरे हिसाब से ये जो इतना दूर यहाँ पे स्प्रे देना, इतनी दूर तक पिक ऑफ यहाँ पे निकालना, आई गेस दैट वाज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। इनको यहाँ पे वेट करना चाहिए था। ही शुड हैव कैम्प्ड, ही शुड हैव वेटेड स्ट्रेटेजिकली और इजीली यहाँ पे पिक ऑफ कर सकते थे इवेंचुअली जब टीम यहाँ पे सामने आती लूट करने के लिए। बट देयर वी गो, अब यहाँ पे फॉल बैक करने की कोशिश करेंगे। शॉट्स विल बी फायर्ड, आई गेस शॉट्स यहाँ पे लिए जाएंगे। या दैट्स व्हाट हैपेंड, शॉट्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं। गाड़ी पे अच्छा खासा डैमेज, बट ही विल सर्वाइव इन दिस फाइट। बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वाइव करते हुए दिखेंगे। इजीली जोन के अंदर जाने की कोशिश यहाँ पे करी जा रही है गाइस। मल्टीपल प्लेटफॉर्म से हमारी ब्यूटीफुल स्ट्रीम चल रही है, तो एंजॉय करिए। मैं हूँ रेडर, मेरे साथ यहाँ पे आपको बाबा गेमिंग बहुत ही जल्द देखने मिलेंगे ऑन द कास्टिंग डेक। तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आएगा आई गेस पूरी की पूरी स्ट्रीम के अंदर एंड इवेंचुअली एंजॉय करिए। देखिए अनफॉर्चुनेटली इनकी टीम के 2 प्लेयर्स ऑलरेडी लॉस हो चुके हैं, 2 प्लेयर्स का इनको लॉस ऑलरेडी हो चुका है। बट अब जो 2 बचे कुछ प्लेयर्स हैं उनको अपनी टीम के लिए एक और मोटिव यहाँ पे सेट करना है, दैट दे हैव टू अचीव सम फिनिशेस पॉइंट। बिकॉज देखिए किल पॉइंट से निकालना अब इनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है, तो क्यों ना फिनिश पॉइंट के लिए यहाँ पे जाया जाए। फिनिश पॉइंट पर जाएंगे, मे बी ही विल सर्वाइव इन द लॉबी। और ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट यासना एरिया, यासना में आपको अगेन कुछ टीम्स देखने मिलने वाली हैं। वी हैव टीम नंबर 4, उनके अलावा यहाँ पे टीम M7 देखने मिलेगी विच इज द अपोनेंट। एंड यहाँ पे टीम नंबर 4 के अलावा मुझे यहाँ पे देखने मिलेंगे टीम नंबर 4 के पर्सपेक्टिव से। लेट्स टॉक अबाउट द प्लेयर्स नेम। तो यहाँ पे मुझे देखने मिल पा रहे हैं IND राजपूत, आफ्टर दैट वी हैव कलैक राजपूत एंड उसके अलावा कैदी 0703 यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। कैदी नंबर 703 आई गेस दैट्स द नेम।
एंड उसके अलावा मुझे यहाँ पे मासूम राजपूत देखने मिलने वाला है। आई गेस दिस इज टीम राजपूत because that's what the title says. And उसके अलावा टीम एमसेन के मुझे यहाँ पे 2 नहीं देखने मिलेंगे। वी हैव रेडियो, वी हैव नंदा एंड वी हैव डेविल इन द सीन व्हिच आर गोइंग टू फाइट बैक। बट करंटली अगर हम बात करें ऑन फुट टीम लूट करते हुए दिखेगी फटाफट। दिस गाय डेविल हैज ओनली 3 पेन किलर्स एंड 3 एनर्जीज, नॉट इवन अ सिंगल बैंडेड, नॉट इवन अ सिंगल फर्स्ट एड किट, नॉट इवन अ सिंगल एड्रेनलिन सिरिंज एंड एक भी इनके पास मेड किट नहीं है। वहीं अगर हम बात करें किसी और प्लेयर की, फॉर एग्जाम्पल नंदा की बात करें जाए तो उनके पास 3 फर्स्ट एड किट्स और कुछ अच्छी खासी गेटअप्स यहाँ पे देखने मिलेंगी। 3 फर्स्ट एड किट्स के साथ 2 एनर्जी रिंग्स, एक अच्छा खासा बैंडेज का 5 का जो पैक है वो देखने मिलेगा। रेडियो की अगर हम बात करें उनके पास आपको देखने मिलेंगे एक ब्यूटीफुल मेडकिट जो कि यहाँ पे इन्होंने लूट करी है यासना में। देखिए यासना एक बहुत बड़ा कंपाउंड है। पूरे बीजीएमआई की अगर हम बात करें उनमें सबसे बड़ा जो कंपाउंड होता है वो लॉस एंजेलिस होता है इवेंचुअली। बट अगर हम मिरामार की बात करें छोड़ के, उसके मिरामार को छोड़ के अगर हम रैंगल पे यहाँ पे चले कहीं ना कहीं, तो रैंगल में यू हैव द बिगेस्ट कंपाउंड विच इज नोन एज यासना पोलियाना। तो यहाँ पे टीम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आ सकती हैं। इवेंचुअली 3 से 4 स्क्वाड आराम से लूट कर सकती है, अच्छी तरीके से फाइट यहाँ पे ले सकती हैं एंड एक दूसरे से बच बचा के यहाँ पे कहने के निकल सकती है। इजीली 4 स्क्वाड्स कुड स्टे इन दिस कंपाउंड। तो अभी यहाँ पे मुझे देखना मिलेगा दैट हमारे पास एक छोटा सा मार्कअप आ चुका है दैट वो जोन विल श्रिंक इन अबाउट 30 सेकंड्स। 30 सेकंड से भी कम में हमारी जोन श्रिंक होने वाली है। आप देख सकते हो टीम्स कुछ हार्ट ऑफ जोन देखने बनेगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टीम 14 विच इज प्रीटी मच इन प्रिज्मॉक एट द मोमेंट। प्रिज्मॉक के अंदर हमारी टीम लूट करती हुई दिखेगी विच इज नॉट ग्रेट फॉर देम। बट यहाँ पे एक इतने बड़े कंपाउंड में अकेले लूट करना दैट मीन्स आपके पास एम्पल लूट मिलने वाली है। अच्छी खासी तरीके से आप फर्स्ट एड वगैरह एंड यहाँ पे सब कुछ इकट्ठा कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें आगे इवेंचुअली हमारे नोवो रुकने वाले एरिया की, तो नोवो में आपको यहाँ पे देखने मिलेगी टीम टीएच की स्क्वाड जो कि अभी के लिए यहाँ पे बिल्कुल अपना बैटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल यहाँ पे वेट कर रही है टीम टीएच नोवो के अंदर लूट करती हुई दिखेगी। एंड अगेन एज टीम नंबर 14 ये भी टीम जो है हमारी टीम 16 इजीली यहाँ पे लूट कर सकती है। बहुत ही अच्छा खासा लूट इनको यहाँ पे मिलने वाला है नोवो रुकने के एरिया में एंड दे विल इजीली रिटालिएट व्हेनेवर दे हैव द लूट एंड दे हैव द काइंड ऑफ गन पावर व्हिच is required in a fight। 3 और 5 की बात करी जाए काफी ज्यादा क्लोज एंड मासूम राजपूत को पिक ऑफ किया जाएगा। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली पिक ऑफ करने की कोशिश करी जा रही है। वी हैव सम अदर गाइस राइट हियर, वी हैव तांत्रिक ओपी मैजिकल एंड साथ ही अगोरी भी देखने को मिलने वाले हैं। Well, definitely, Raider. ये जो team fights है ये तो आगे आने वाली है and we are looking at team number 5 right now. They are actually here, hold out in these compounds, and which are really a bad idea to actually be here in this time because like you will be looking to actually move into some more compounds here, which will be having a much more hard cover. And meanwhile, the Yasnia fight. That is actually the apartments. They are always an area where you'll be getting the highest grounds that you want. And also the police building that you have. So a couple of teams are already in Yasnia, and outside we have team number 5 already there, Aguri, OP and his team. And the rest of the teams are actually making the rotations right now. And meanwhile, we have a northern circle which is actually showing into the map. And Rozok, still we can't see any teams there. School seems to be pretty much empty, as you said, and also the apartments and near the school seems to be pretty much empty. Team has actually entered Pochinki, maybe into getting some loots. Georgiapol cities seems to be Georgiapol containers seems to be pretty much populated right now with a couple of teams. And meanwhile, we also have a team actually making a rotation, really early rotation, making towards the northern part of Severny as well. So I think we are still in that phase where teams are happily looting. They have a lot of breathing space. They still have a lot of space to actually move around. Agori has actually spotted out team number 3 there up ahead and Yasnia. Maybe they will be giving some shots. Yes, VSS. That's something interesting. Tantric already operating on a VSS. If you can actually gauge the bullet drop on a VSS, it's a very deadly weapon because it's a sniper. It's an automatic sniper, I should say. Those 10 bullets are gonna hurt a lot. That's what I would like to say right now. Yeah, it is a very deadly weapon and साथ ही stealthy weapon यहाँ पे देखने मिलेगा because you never know that where the shots are coming from. But देखिए टीम 5 ने already अपनी पोजीशन expose कर दी है by putting some DMR shots and all. That is why they have been exposed. But अगर हम बात करें VSS का, तो यहाँ पे VSS एक ऐसी गन है, अगर आप थोड़ी दूर से यहाँ पे I guess 100 और 150 मीटर्स दूर से यहाँ पे आप शॉट्स दे रहे हो, तो the guy that enemy will never know that यहाँ पे आपके ऊपर शॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से वो डैमेज हो रहा है, वो बिल्कुल यहाँ पे बोलते हैं guys, he will be surprised. That will be an element of surprise for him that how he has to move now and ये सारी चीजें. M7 नंदा को पिक ऑफ यहाँ पे क्या जगह दे देखो. नंदा वाज टेकन डाउन बाय दैट ब्यूटीफुल DMR शॉट्स एंड यहाँ पे नंदा का जो नॉकआउट है वो देखने मिलेगा आई गेस टीम 4 की तरफ से. यहाँ पे SKS भी लेके बैठे हैं. उसी के अलावा क्या 07 देखने मिलेंगे विद दिस ब्यूटीफुल मिनी 14. आई गेस दिस वाज द गाय. अब यहाँ पे मोलोटोव कॉकटेल डालने की कोशिश कर जाएगी. फटाफट से देखते हैं कनेक्शन बन पाएगा या फिर नहीं. एंड टाइम पे कैंसिल यहाँ पे करते हुए दिखेंगे. द स्मोक्स वर देयर. अब यहाँ पे रोटेशन करते हुए दिखेगी. बहुत ही बढ़िया क्लोज इन आता हुआ दिखेगा. कैदी 0703 हैज टू डू समथिंग अमेजिंग इन द लॉबी एज यू कैन सी. रेडियो एंड नंदा आर द गाइस जो यहाँ पे
रिवाइवल लेते हुए दिखेंगे। फटाफट यहाँ पे एक मॉलोटॉव कॉकटेल डालने की कोशिश, इल प्लेस्ड मॉली डालने वाली है एंड ये मॉली से किसी को भी डैमेज नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। या दैट्स व्हाट हैपेंड, मॉली डाली जरूर से। मासूम राजपूत वाज टेकन डाउन बाय टूनी विद अ ब्यूटीफुल कनेक्टेड शॉट एंड पट से हेडशॉट एंड दैट मार्क्स दैट एलिमिनेशन। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से नॉकआउट किया जाएगा टूनी की तरफ से। देयर वी गो गाइस, इस तरह के नॉक्स, इस तरह के जो फाइट्स होते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग निकल जाते हैं। यहाँ पे मिनी 14 निकाल दिए कैदी ने। एंड गाइस आप लोगों को बता दूं, यासना एक ऐसा मैप है, यासना एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कहने के लॉन्ग रेंज वेपन्स बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, काफी इफेक्टिव रहते हैं वो लॉन्ग रेंज वेपन एज कम्पेयर टू द क्लोज रेंज कॉम्बैट्स। Well, definitely, because like you get those higher angle from these apartments, and definitely you'll be on top. You'll be having a visibility on the 360 degrees. Meanwhile, you also have some fights happening near Severny, where the teams are actually taking some rotations. Teams from JioGames have actually moved in, and also we have another team on the way. So they are engaging in a fight number 10 already here. So Team BTech, as you said, like they are trying to get a master's degree, an engineering degree in BGMI mostly. So they are here engaging on a fight with team number 13 here. So we can see them already here. So GGL team already up ahead on them. And this team, like it's a really early fight for them, and they still have the chance to actually move away. So two of them have been lost really early in this match. So the rest two will be going for some position point. They don't have some really good loot. Level 3 vest already there. So level 2 vest already with him, and a level 1 helmet. I would say that he has to move into Severny, get some really good loot, at least a level 2 helmet and a vest, and he should, like focus on his abilities like the health kits, the med kits, the adrenaline syringes. Like currently he has none. He has only like 8 first aids. Okay, sorry, that's team number 13. So team number 10 does not have enough for first aids here. Yeah. So I think they should actually focus on getting those first aids, getting those health kits, getting those energy drinks, and maybe get some really good loot. So yes, I think they heard me. They are actually moving in towards Severny. Maybe, like scout out a little bit if there are any teams. Like most of the times the teams make a mistake that they don't want to go on rotation, anticipating that there might be enemies in those locations. Yeah. But I would say always send a guy, scout it out, check whether there is anybody, check whether there is any movement, rather than slamming in directly. And then try to keep your cover as much as possible. That kind of a communication always builds up the teamwork, always gives the multiple choices that you can make in a match. And meanwhile the zone actually closes in, and the teams are actually closing in on our 70 right now. We have a team coming in from the east on the Stalbo side, we have a team coming in from the west from the Zaki side. So I think now the matches are going to be focused on Yasnia, man, because 3 to 4 teams are concentrated on Yasnia. They'll be trying to get those fights. But meanwhile, GGL, Rocky goes down, and yes, the fights are on. So let's see what's going to happen. Back to Raider. I think Yasnia will be the point where we'll be seeing an elimination right now. या ऑफ कोर्स काफी ज्यादा फाइट्स यहाँ पे देखने वाले वाली ऑन द वे, बट आई गेस यहाँ पे टीम नंबर 11 यहाँ पे आ चुकी है। वी हैव टीम ओपी, आई गेस वी हैव नरेश, वी हैव कल्याण, वी हैव टेक, एंड इसके अलावा नरेश रॉक यहाँ पे देखने वाले वाले। प्रीटी मच यहाँ पे गाड़ी वाड़ी फोड़ेंगे, एक अच्छी कवर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप एक आता हुआ दिख रहा था। उस ड्रॉप को लूटने के चक्कर में कहीं ना कहीं टीम सफर करती हुई दिख रही है। एज यू कैन सी, इस ड्रॉप को लूटने के चक्कर में कहीं ना कहीं टीम यहाँ पे आई थी। क्लोजअप यहाँ पे दिया था, नरेश रॉक ऑलरेडी एक अच्छा फिनिश यहाँ पे निकाल चुके हैं। दैट्स ब्यूटीफुल। बट यहाँ पे टीम अगर बात करी जाए कल्याण ओपी की, अगर हम बात कर लें, लिटरली लुक एट इट हेल्थ, इनकी हेल्थ देखिए यहाँ पे एकदम 0 HP पे, आप एकदम डॉट HP पे देखने मिल पाती है। आई वाज नॉट able to check out the health at the moment, but यहाँ पे वो मार्कर है वो आ चुका है दोबारा से। यहाँ पे हेल्थ इन्होंने हील कर दी है, एक फर्स्ट एड किट लगा दिया है। PP19 बाइजन यहाँ पे देखने मिलेगी, पीछे से पूरा बैकअप यहाँ पे दिया जा रहा है। बट टीम नंबर 11 हैज बीन सैंडविच्ड एट द मोमेंट, बिकॉज दोनों तरफ से इनको यहाँ पे टेक आउट करते हुए देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए रॉकी देखने मिलने वाले इन द व्हीकल। वहीं अगर बात करें यहाँ पे इस बंदी की, दैट इज सिनर, ये एक अलग इफेक्ट यहाँ पे देखने मिलेगी। ब्यूटीफुल फॉरवर्ड आउट एंड एक अच्छा नॉकआउट यहाँ पे देखने मिलेगा। नरेश रॉक को पिक ऑफ किया जाएगा। कल्याण ओपी ट्राइंग टू पुट दैट अलग फ्लैंक, एक अलग डिफरेंट फ्लैंक यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे, बट कल्याण ओपी सक्सीड्स इन दैट बहुत ही अच्छे तरीके से। एक अच्छी वुडन शाक यहाँ पे होल्ड करते हुए देखेंगे। फर्दरमोर वहां से फाइट लगाने की कोशिश करी जाएगी। वहीं अगर हम बात करें किस तौर पे इसकी डी वॉर्ड, तो वो देखिए आप यहाँ पे इस एज पे आ चुके हैं। रॉकी की बात करी जाए, रॉकी बहुत ही ब्यूटीफुली पिक ऑफ करते हुए दिखेंगे। एंड बाय दैट आई कैन सी दैट टीम नंबर 11 इज गोइंग टू सफर अ लॉट। आई गेस यहाँ पे नरेश ओपी को रिवाइवल दिया जा रहा है, टेक ओपी यहाँ पे देखने मिलेंगे। प्रीटी मच यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं गेम प्ले को, बट कल्याण ओपी हैज टू डू समथिंग अमेजिंग इन द लॉबी, बिकॉज उनके पास एक अच्छा फ्लैंक है। बाकी की टीम बिल्कुल स्पॉटेड आउट है। दे देखो नरेश ओपी को पिक ऑफ किया जाएगा। कल्याण वाज द ओनली गाय लेफ्ट, एंड यहाँ पे वो अकेले बंदे आप बचते हुए दिखेंगे। देखिए आप कल्याण ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट सम स्नीकी नॉकआउट, बट क्या ये हो पाएगा देखना चाहूंगा। पीछे से स्लैमिन आ चुका है यहाँ पे बहुत ही जल्द, एंड स्लैमिन इज हियर राइट नाउ ऑन द वे। रॉकी के पास देने की कोशिश, बस गलत टाइम पे इल प्लेस पे देखने की कोशिश, और कल्याण यहाँ पे हो चुके हैं। सुपर डुपर लेट फर्स्ट एड अप्लाई करने की कोशिश। आई डोंट थिंक ही विल सर्वाइव इन दिस फाइट, एंड या दैट्स व्हाट हैपेंड। मार्क्स दैट एलिमिनेशन, एंड टीम नंबर 11 सेज गुड बाय टू द लॉबी विद ओनली 1 फिनिशर एट द मोमेंट। यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से टेक डाउन किया जाएगा। नाउ टीम GGLZPR हैज सिक्योर्ड आई गेस 5 फिनिशर्स। वेल दैट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एंड विद दैट गाइस वी हैव द जोन कमिंग in about 20 seconds. बहुत ही जल्दी ये जोन ब्रीचिंग होती हुई दिखेगी आफ्टर दैट। एंड लेट्स टॉक अबाउट टीम नंबर 7 which is going to fight back with the I guess team number 5 जो is known as King OP, तांत्रिक,
मैजिकल एंड उसके अलावा गोरी ओपी देखने को मिलेंगे. दीज आर द मेट्स फॉर टीम नंबर 5 एंड यहाँ पे टीम नंबर 7 की बात करनी चाहे वी हैव वंश अग्रवाल, वी हैव साइबर किंग, आफ्टर दैट वी हैव मैं हूं नूब एक्चुअली एंड उसके अलावा वीपर एक्सोटिक देखने मिलने वाले हैं. टीम नंबर 5 वंस अगेन गोइंग टू पुट सम सीवियर डैमेज इन द लॉबी एंड यहाँ पे टीम नंबर 4 का जो रोटेशन कर रहा था कहने कि उसको कट ऑफ करने की कोशिश करी गई थी बाय टीम नंबर 5 बट दे वर अनसक्सेसफुल एट दैट मोमेंट. Well, definitely, team number 5, King OP, is still there, camped up in those hardcover compounds. And meanwhile, they will be, this compound is actually really interesting because from here, you can actually make a quick getaway onto the northern side through that bridge. But only you have to keep eyes if there's anybody, already having eyes on the bridge, unless and until you can make a really good getaway. They have all those vehicles, all those buggies already on the ready. So they are still having those eyes on those ridges. If anybody is there, they will be trying to take them out. If nobody is there, they can actually make a really good getaway onto that portion of the zone where if if there's a hardship, they can actually get towards there. So meanwhile, a nade already coming in, a pre-nade already coming in, but he didn't even pop the glass. But that was an animation glitch for us. And there you go. The nade actually comes in inside. So team number 5 still being unscathed right now. Another smoke. Okay, another nade also being popped in right now. Let's see if this actually makes any connection. I think yes, it does, but doesn't get any knockout yet. It doesn't get any damage because King OP is completely on the back end. They know that throwables are going to come in, so they are completely ready for it. So team number 7 versus team number 5 will be happening in this compound. Still a fight already going on. So King OP goes down here. Now there's an opening. Let's see how they capitalize on this. Tantric OP will be given a hand immediately by his teammate King OP here. But now we'll be seeing a push in from team number 7. I think team number 7, if they don't take it really carefully, they could be eliminated on this angle. So team number 5 still having all those sensors, will be getting on the vehicles. Maybe it's time for them to actually make some rotation. So what do you think, Raider? I think team number 5 should actually rotate right now. Yeah, they should flight from to this location. यहाँ पे fight लेने से अच्छा flight करना चाहिए इनको. यहाँ पे बचना चाहिए फिलहाल because zone में shrink होती हुई दिखेगी and you never know that किस तरह का zone shift यहाँ पे होने वाला है because पीछे यहाँ पे ऑलरेडी टीम बैठी हुई, 2 टीम्स एक्चुअली इवेंचुअली फाइट लेती हुई दिखेंगी. तो इससे पहले देर ना हो जाए वहां पे रोटेशन काटने की जरूरत है. एंड एक्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड. तार तरीके से ऑन बोर्ड एंड बाकी के प्लेयर्स यहाँ पे निकल चुके हैं विद द बगी एंड देयर वी गो. द हॉकिंग इज ऑन राइट नाउ. फटाफट से यहाँ पे निकलने की कोशिश करी जाएगी बट क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे ये जानना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. ऑन द अदर हैंड वी हैव टीम जीजीएल. वी वर अनएबल टू कैच दैट फाइट बट यहाँ पे अब देखिए सिनर के पास 4 फिनिशेस, रॉकी के पास 3 फिनिशेस यहाँ पे देखने मिलेंगे. सिंगल हैंडेडली ये टीम डोमिनेट करती हुई दिखेगी. इफ यू रिमेंबर द वर्ड डोमिनेशन, आपको याद रहेगा दैट पिछले मैच में कहीं ना कहीं टीम एसीबीसी ने भी एक्जैक्टली कुछ ऐसा यहाँ पे करके दिखाया था. एक्जैक्टली वही चीज यहाँ पे देखने मिल पा रही है. मतलब क्या ही गेम ये टीम खेल रही है. दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव टू सी एट द मोमेंट. बट टीम M7 की तरफ चले अगर यहाँ पे थर्ड जोन बन चुकी है गाइस. देयर वी गो. दिस इज द काइंड ऑफ थर्ड जोन व्हिच यू कैन सी. बट उससे पहले टीम टीएच पे जाना चाहूंगा फिलहाल बिकॉज टीम टीएच के प्लेयर काफी सफर कर रहे हैं. यहाँ पे अकेला एक प्लेयर यहाँ पे देखने मिलेगा. द लास्ट मैन स्टैंडिंग इज स्टिल हियर बट उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा बाय टीम M7 एंड जस्ट लाइक दैट टीम M7 सिक्योर्स 5 अमेजिंग फिनिशेस. दैट इज ब्यूटीफुल विदाउट अ लॉस ऑफ इवन अ सिंगल प्लेयर. यहाँ पे हालांकि नॉकआउट जरूर से देखने मिल पाएगा. अब इस सिचुएशन पे कैपिटलाइज करना चाहिए टीम नंबर 5 को बिकॉज जानते हैं दैट ओपनिंग यहाँ पे निकल चुकी है. काफी सारी फाइट्स ही अगर ओपनिंग यहाँ पे निकाली इन्होंने तो दैट वुड बी लवली फॉर देम. बट यहाँ पे टीम नंबर 5 की बात करें जाए तो ऐसा बैकफुट पे टीम देखने को मिलेगा. एंड वी हैव द थर्ड जोन व्हिच इज गोइंग टुवर्ड्स 70 एट द मोमेंट. वी हैव 70 इन द जोन, वी हैव शूटिंग रेंज इन द जोन एंड सराउंडिंग कंपाउंड्स अ लिटिल बिट कंपाउंड्स आर आल्सो देयर इन द जोन. एंड इफ यू टॉक अबाउट टीम नंबर 1, वेल काफी ज्यादा जल्दी अर्ली रोटेशन उन्होंने काटी थी एज पर बाबा गेमिंग. उन्होंने देखा था, उन्होंने चेकआउट किया था दैट ये रोटेशन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अर्ली देखने को मिली थी एंड इस चीज को फ्रूटफुल भी काफी ज्यादा देखने को मिल पा रहा है बिकॉज पिछले लास्ट 3 जोन्स के अंदर ये टीम इजीली इस पूरे कंपाउंड को कैपिटलाइज करते हुए दिखेगी. यहां से अपनी फाइट निकालने की कोशिश कर रही है. वी हैव ऐश इन द सीन, वी हैव पॉश, वी हैव ब्रॉली एंड उसी के अलावा मुझे यहाँ पे संजू देखने को मिलने वाले फ्रॉम टीम नंबर 1 व्हिच इज टीम U7 गोइंग टू फाइट बैक एंड किंग ओपी रिटेलिएट्स वंस अगेन. उनकी तरफ से यहाँ पे कुछ रिटेलिएशंस यहाँ पे देखने मिलेंगे. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट फाइट. यहाँ पे राइट नाउ किंग ओपी आपको देखने मिलने वाले इन दिस एरिया. किंग ओपी इज गोइंग टू फाइट बैक विद दैट फाइट. So let's see what happens. टीम नंबर 7 के लिए मुश्किलें बढ़ा दी इन्होंने. टीम नंबर 7 is going to cut their rotation from another angle and ये यासना ब्रिज से यहाँ पे जाने की कोशिश करते हुए दिखेंगे. बट as you all can see that pressure was literally irreversible और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर दिया था. तो टीम नंबर 7 की अगर बात करें, मैं हूँ नूब को फिनिश ऑफ करने के बाद अब यहाँ पे बचे हमारे पास वीपर एक्सोटिक, वी हैव साइबर किंग एंड यहाँ पे रश अग्रवाल भी देखने मिलने वाले हैं जिनको जोन के अंदर प्रीटी मच यहाँ पे जाना पड़ेगा. बट 50 मोर सेकंड्स टू गो. आफ्टर दैट द जोन इज गोइंग टू पंच इन. तो प्रीटी मच यहाँ पे रोटेशन को एक अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश करेंगे, एक अच्छा रोटेशन यहाँ पे काटेंगे सो दैट इवेंचुअली ये लोग जोन के अंदर पहुंच के एक अच्छा स्किल निकाल पाए. Well, definitely, looking at the alive right now, we still have 42 people alive and 12 teams are still there in the lobby. And comparatively, looking at Wrangle and looking at the zone, which is the third zone now, which is being done, I would say the teams still have a really good breathing space and not looking onto the way where you're driving makes you
like a heavy driver, as you saw. So that's what happened, and he actually slammed onto Virok. But luckily for him, he was not being targeted by team number 2. Currently on the back end, they are also making the rotation. They are being very cautious right now. All 4 members in one vehicle. That's also really not good, because if there's somebody who's spotting you, giving a really good ADS spray, you could be taken out. At least 2 guys would be taken out in one spray. And let's see what's going to happen. So the teams, as I said, are still having a really good breathing space. But meanwhile, team number 7 seems to be, like taking it really hard on the breathing part, because Cyber King seems to be the only guy who's left. They just slammed in onto this compounds, and they came onto another team who are actually targeting them right now. And let's see what's going to happen. And it's team number 1 here already on the close-in. They have spotted them when the slam-in was made. They're already there, but Sanju already here looking at Tuni here. So M7 already coming in. Tuni and Nanda also flanking on the right side. Now Sanju will have to pop in some nades, or maybe, be ready with that staircase. Like there will be a push right ahead on those staircases, and nades already being done. And oh my god, beautiful nades. And I think he is in deep trouble right now. So throwables being used to the maximum, and back-to-back throwables. He's getting damage after damage. Ball is also being done, and I think Sanju has nowhere to run right now. Yeah. And he goes down, but Brawley giving some pre-nades, already being spotting him out, and he takes a 1v1, but yes, he goes down. So Team U7 being eliminated on the 12th position in this match, and right now M7 looking to actually extend their lead. Now they know that there is also one more team there on the opposite side, team number 7. Still now, they have not finished those revives. I'm not sure what they are doing. They have spent some really quality time trying to do those revives. Back-to-back knocks being done, double knocks already being done, and now there's only one guy left, which is will be Exotic here, and let's see Exotic, will he be able to hold down as much as possible? But I think they will be trying to finish it off with those nades. I think I'm expecting some nades or mollies, but no, staircase, and he gets it done. Team number 7 also being exited on the 11th position so far in the game, and M7 extending with that lead. They already had 7 finishes, now 3 more to their count, so that means like 10 finishes for the team so far. And Devil, what a gameplay from these guys. So they have shown some really good aggression. Now let's see what's going to happen on the next zone. So the teams are actually rotating in. And as I said, the teams from Yasnia, they actually came in through those bridges. They had a little bit of a fight, and then they came in. Now we are looking at the top 10 team scenario. And now the zone has actually taken a hard shift. The zone is not in 7 anymore. So those teams have to come in towards the southern side as well. So teams from Rozhok actually moved in towards the northern end. And I think this is pretty much an open space. They have only 1 hardcore compounds here. So let's see how the fight actually progresses. Who is going to get that winner chicken dinner? Will it be GGL? Will it be M7? Both these teams have actually proven their worth. So we have to wait and watch, Raider. Who is going to get that dinner? I really have no idea as of now. आई कैन से दैट यहाँ पे कुछ टीम्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से जोन के अंदर स्टैब्लिश करते हुए दिखेंगे, बट हैट्स ऑफ टू टीम M7 फॉर कंपाउंडिंग एंड फॉर स्लैमिंग ऑन दिस कंपाउंड एंड कैपिटलाइजिंग इट, बिकॉज द थिंग इज इन्होंने यहाँ पे 2 टीम्स को टेक आउट किया. टीम U7 को पिक ऑफ किया, एंड आफ्टर दैट इन्होंने यहाँ पे टीम नंबर 7 को भी बहुत ही ब्यूटीफुली पिक ऑफ किया विदाउट अ सिंगल लॉस यहाँ पे. लेकिन नंदा के ऊपर लॉस जरूर से देखने मिलेगा, बिकॉज नंदा कहने के अपनी ही मॉली के अंदर फंस के यहाँ पे नॉकआउट हो चुका था, यहाँ पे उसके बाद फिनिश ऑफ हो गया दूसरे मॉली के अंदर. तो दैट वाज अ बैड डिसीजन फॉर हिम. बट जिस तरीके से ट्रेड लिया गया, देखिए एक प्लेयर के लॉस पे अगर आप 10 फिनिशर्स यहाँ पे निकाल दे रहे हो, वेल दैट्स नॉट अ बैड ट्रेड. और मैं कहना चाहूंगा कि काफी इंटरेस्टिंग ये सीरीज निकलती हुई दिखेगी. बस इसी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू अगर टीम M7 रखती है, दे वुड इजीली स्कोर द चिकन डिनर विद सम ब्यूटीफुल फिनिशेस, बिकॉज इस मैच की जो लॉबी थी वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हमें देखने मिली थी. आई गेस 60+ मेंबर्स वर देयर इन द लॉबी, एंड ये चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है. दैट इफ यू मैनेज टू फिनिश आई गेस 15+ और 20+ किल्स, एंड उसी के साथ साथ अगर आप चिकन निकालते हो, दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड ऑल. एंड यहाँ पे आपका एक अलग लेवल का मोनोपोली बन जाएगा लॉबी के अंदर, एक प्रेशर बना देंगे. कार 98 दैट वाज अ डैम गुड कार 98 फ्लिक दे यू गाइस, क्या बात है. एम करा, मतलब हम एज अ कास्टर भी यहाँ पे नहीं देख पाए कि उनका हेड कहाँ पे था, बट इन्होंने एम किया डायरेक्टली, वो पट्टे से हेडशॉट यहाँ पे कनेक्ट किया. दूसरा शॉट कनेक्ट करने की कोशिश, हालांकि शॉट की कनेक्टिविटी नहीं थी. अगेन एक हम किस तरह यहाँ पे जाते हुए दिखेंगे. फिलहाल आप यहाँ पे देखिए टूनी का जो गेम प्ले है, दैट इज ऑन फायर एट द मोमेंट. बहुत ही बढ़िया इन्होंने शॉट्स की कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करी, एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट मैंने वो चीज को कवर किया यहाँ पे, वो चीज को देखा, बिकॉज जो फ्लिक था वो कहने के काफी अमेजिंग था. आई गेस रेडियो वुड ऑल्सो वांट एंड टोनी वुड ऑल्सो वांट दैट मेरा ये फ्लिक कहीं ना कहीं कवर होता है. मैंने यहाँ पे वही चीज मुझे यहाँ पे देखने मिली. दैट वाज एब्सोल्युटली लवली. लेकिन टूनी की तरफ से यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लैंक यहाँ पे आता है दिखेगा. नाउ टूनी हैज टू डू समथिंग अमेजिंग. इनको एक अच्छा 1v2 निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ही कुड हैव बीन इन ट्रबल राइट नाउ. ये डिसीजन इनका गलत भी जा सकता है, या फिर एक अच्छे खासे 1v2 की तरफ रिजल्ट यहाँ पे कर सकते हैं. तो देखते हैं दोनों में से क्या चीज यहाँ पे होने वाली है. रेडियो ऑलरेडी टेकन डाउन बाय एक्स न्यूक. तो नाउ टीम नंबर 3 यानी कि टीम M7 ऑलरेडी यहाँ पे अंडरमाइंड हो चुकी है. 2 प्लेयर्स इनके यहाँ पे सिर्फ बचे हैं इस समय फिलहाल, एंड इन्हीं दोनों प्लेयर्स को स्ट्रगल अपना जारी रखना पड़ेगा. दे हैव टू बी समहाउ ग्लोरियस एंड लॉबी के अंदर स्टैंड आउट यहाँ पे करना पड़ेगा. इफ आई टॉक अबाउट टीम नंबर 10, दे आर गिविंग सम कांस्टेंट सेटबैक टू टीम नंबर 3 आई गेस. टीम नंबर 3 के सामने जो पे
देखने मिलेगी फाइट अगेन यहाँ पे डैमेज दिया जाएगा, टूनी के ऊपर प्रेशर यहाँ पे बनाया जा रहा है, फिर भी टूनी यहाँ पे बसते हुए दिखेंगे, दैट्स लवली। इफ वी टॉक अबाउट डेविल भी कर सकते हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं, बिल्कुल डैमेजेस का पे रिकूपरेट करते हुए दिखेंगे, बट यहाँ पे आप देखिए नेट का कमबैक यहाँ पे आता हुआ दिखेगा, नेट से बचने की कोशिश, टूनी वाज टेकन डाउन बाय दैट ब्यूटीफुल नेट, और ये गेम बदलता हुआ दिखेगा, जी की यहाँ पे स्क्वाड इनको करेगी फिनिश। बहुत ही बढ़िया गाइस गेम प्ले देखने मिलेगा, टीम M7 का जो होता है खात्मा वो आपको यहाँ पे देखने मिल पाएगा गाइस, दैट वाज एब्सोल्युटली लवली। टीम जी की अगर हम बात कर लें, इनकी तरफ से आपको देखने मिलेंगे 10 अमेजिंग फिनिशेस, सो अगेन वी हैव अनदर कंटेंडर फॉर द winner chicken dinner streak. Well, definitely, that was some fight that I actually expected to watch. So GGL versus M7, that was really amazing to watch. Tooney, despite getting that early knockout, that rotation was being done in a wrong way, and because of which, the first guy was being taken out, and they were already not having all the 4 members in their squad because Nanda was already being lost out in that molly on the earlier push. Yeah. So GGL, despite getting that first knock, they were able to come back in a really good way, and they have a really good chunk of the zone right now, and they are closing in on it. And the top 8 team scenario, that's what we are looking at right now. And we have LOD Hunter also here on the screen, and we are looking at the map, guys. So look at GGL. They are having a really good chunk of the zone. They will be having some really good ridge on that side. I think they can spot a lot of teams who are actually on the back end, making the rotations, multiple vehicles already coming in. So vehicle sprays will be given out here by GGL, and 2 guys inside the zone, 2 guys are outside the zone. They are trying to gatekeep as much as possible for all those rotations. So BTech Panda already coming in. Sorry, Pandu, I guess. So he's already coming in with that vehicle. So team number 10 still trying to move in with those 2 people remaining for the team. And yes, they have succeeded in actually finding a cover for the time being. But the vehicles being smoky right now because the sprays are being given from team number 6, immediately bursting out those vehicles. So Pandu, how long can he actually hold himself out? So meanwhile, as I wanted to say, AKM and a K9 combo, that has been really famous right now. Toonie was using it, now Pandu is also using it. So everybody seems to be using, AKM here. And meanwhile, on the earlier note, I also saw guy from GGL using AKM with a 6x sprays as well. So that's what we saw. King OP meanwhile doing some tricks with his vehicles, and there you have it. All the vehicles are actually coming in line. So GGL God actually trying to spot it and trying to get those sprays as much as possible, giving those sprays with that M4 and a 3x, unable to connect it. He has a buggy for cover, but how long can he withstand? We have to wait and watch. God still trying to get those loots. Level 3 gears already intact for him. Level 3 helmet already in for him. Level 2 vest still intact. So I think he's still in a really good position. 8 first aids already he has. 15 bandages, 1 energy drink, we have 4 painkillers and 1 adrenaline syringe as well. So on the loot section, he seems to be pretty much heavy. So I think that would actually give you a lot of confidence when you have a really good loot, when you have a lot of ammo, when you have all the utilities that you need. You can get into fights as much as you want because you know that you are really good on the loot section. So that's what God is actually doing here. He gets a really good chunk of the zone. And look at his position right now on the map. He has the zone. He has captured it. He is waiting with that buggy there. He has made his cover. He has made his artificial cover. I think it's just a matter of time for him. Pops in an adrenaline syringe. He wants to be boosted up. Rocky already comes from the back. And GGL looks poised to get a winner chicken dinner. What do you think, Raider? I think it's got to be GGL. Yeah, of course. The thing is that Team GGL has such a motivation and such a high ranking finishes right now that they could easily take that chicken dinner. But यहाँ पे pressure बाकी teams भी बनाते हुए दिखेंगे because every team which is in this top 6 has made their own journey. उन्होंने भी अपनी कोशिश यहाँ पे बिल्कुल करी है, अपने तरीके से कहीं ना कहीं काफी अच्छा खेला है यहाँ पे. If I talk about team number 14, तो देखिए उनके सोलो सर्वाइवर यहाँ पे देखने मिलेंगे. Aggression is right here, Egregor is right here. यहाँ पे इनकी तरफ से नीड्स वगैरह डाले जा रहे हैं, but he doesn't know that यहाँ पे इनके enemies हैं किधर. तो फिलहाल यहाँ पे randomly इन्होंने नेट थ्रो किया, अपनी एक यूटिलिटीज को यहाँ पे वेस्ट जरूर से कर दिया है, बट स्टिल गाइस ही इज मेकिंग श्योर दैट इनके आसपास मेंबर है तो नहीं, बिकॉज देखिए वेस्ट फुल्ली भी नहीं था ये. एक तरीके से इन्होंने मेक श्योर किया कि आसपास इनके पास कोई एनिमी ना हो, कोई इनको टेक डाउन यहाँ पे ना कर दे, कोई इनके लिए मुसीबत ना पर खड़ी कर दे यहाँ पे फिलहाल. तो उस चीज पे कहने के काफी अच्छे तरीके से स्टैंड करते हुए दिखेंगे. बट इफ आई टॉक अबाउट टीम नंबर 8, काफी देर से हमने इस टीम को नहीं देखा है. द रीजन बिहाइंड इट इज दैट दे वर नॉट इन द हाइलाइट्स, दे वर नॉट इन द फिनिशेस राइट नाउ. जो किल फीड थी उसको फॉलो करते हुए कहने के हम यहाँ पे कास्टिंग करते हैं. बट फिलहाल अगर हम बात करें टीम नंबर 8, यहाँ पे वंश देखने मिलेंगे. गाड़ी के टायर को पंक्चर किया गया, लॉर्ड बोल्ड को पिक ऑफ यहाँ पे किया जा रहा है. फाइनली आई गेस टीम जीजी इज वंस अगेन अंडर सम हेवी शेड एट द मोमेंट. फंगीन यहाँ पे फाइट लेने की कोशिश करते हुए दिखेंगे. टीम नंबर 6 की अगर हम बात करें, टीम बीएम के प्लेयर्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे. 6 फिनिशेस ये टीम भी निकाल चुकी है, लगातार कंपटीशन के अंदर स्टैंड करते हुए दिखेंगे टीम. बट कैन दे एक्चुअली स्टैंड इन द कंपटीशन, बिकॉज बीटेक के पांडु अकेले बच गए अब अपनी टीम के बिल्कुल जोन के अंदर रिटालिएट करते हुए दिखेंगे. एक अच्छा खासा रोटेशन यहाँ पे, एक अच्छा खासा चंक एस्टैब्लिश करने की कोशिश, अगेन जोन के अंदर जाने की कोशिश. ओह माय गॉड, दैट वाज अ डैम गुड शॉट. यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हेडशॉट कनेक्ट किया, इजीली फिनिश ऑफ करते हुए दिखेंगे. इफ वी टॉक अबाउट टीम नंबर 2, लॉर्ड लूसीफर वाज आल्सो टेकन डाउन बाय टीम
टीम नंबर 6 बहुत ही बड़े कंटेंडर टीम GGLZ के यहाँ पे एक बड़ा कंटेंडर बनती हुई दिखेगी टीम PM बिकॉज दे हैव द 4 मैन पावर एंड साथ ही कहने के यहाँ पे अगर GGL की बात करें जाए लुक एट इट 16 फिनिशेस गाइस दैट इज अमेजिंग इफ यू रिमेंबर टीम ACBC स्कोर्ड 16 फिनिशेस इन द लास्ट मैच विद सम ब्यूटीफुल चिकन डिनर बट इस मैच में अभी भी 7 फिनिशेस और बचे हैं इस टीम के लिए 7 के लिए टीम और यहाँ पे कर सकती है दे हैव द ओपनिंग क्या ये कर पाएंगे किस तरीके से हैंडल करेंगे फाइट को ये जानना चाहूंगा बिकॉज अब कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है एंड डे बाय डे आप देखिए मैच बाय मैच यहाँ पे करने की काफी सफर करेगी टीम लेकिन पिक ऑफ होते हुए दिख रहे हैं वेल देयर यू गाइस ओपनिंग शायद यहाँ पे ना निकाल पाए टीम डिफिकल्ट होता जा रहा है पूरा अपना मैच फिर भी कोशिश यहाँ पे पूरी रहने वाली है इनकी कि किसी तरीके से वो पिन पॉइंट यहाँ पे कर पाए फाइट को गॉड की बात करी जाए उनके पास आप फिनिशेस देखने मिलेंगे फाइट टॉक अबाउट अनदर गाय यहाँ पे अगर सिनर की हम बात करें सिनर की तरफ से भी एक अच्छा स्टार्ट यहाँ पे देखने मिलेगा बट यहाँ पे आप देखिए एक प्लेयर को फिनिश ऑफ किया जाएगा पीक एंड फायर करने की कोशिश टीम नंबर 8 के ऊपर लगातार यहाँ पे स्पेस दिए जा रहे हैं पिक ऑफ करने की पूरी कोशिश यहाँ पे रहने वाली है हमारी टीम की सिनर की बात करी जाए 7 ब्यूटीफुल फिनिशेस एंड दे आर स्टिल इन द लॉबी टीम PM की बात करी जाए हाईएस्ट मैन पावर बट वी हैव कॉन्ग द ओनली सर्वाइवर जिनके पास यहाँ पे एक हेल्थ बची है जिनके पास यहाँ पे अलाइव होने का खड़े होने का स्टैंड करने का फाइट यहाँ पे बचा है उनके पास बट अभी के लिए रिवाइवल देते हुए दिखेंगे हेली 7 इज बैक ऑन द फाइट राइट नाउ टेंसाई की बात करी जाए उनको यहाँ पे रिवाइवल देने का इस समय सोचा नहीं गया है वहीं ड्रैग की बात करी जाए उनको फटाफट से रिवाइवल देते हुए दिखेंगे एंड यहाँ पे ड्रैग की बात करी जाए this guy has the ghillie suit which is actually very advantageous in this kind of open zone but अब वहीं पे बंच की हम बात करें जोन के अंदर पुशिंग करने की कोशिश टीम GGL के ऊपर यहाँ पे पूरा पुशिंग करते हुए दिखेंगे डायरेक्ट स्लैम यहाँ पे दे दिया दिस कुड बी फेड सेट बैक एंड यहाँ पे होता हुआ दिखेगा एक्जैक्टली वही चीज जिस चीज से हम यहाँ पे डर रहे थे बात करें मेंटल रश की काफी ज्यादा दूर देखने मिलेंगे इफ वी टॉक अबाउट स्टॉक ओपी वो यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं बट ही इज आउट ऑफ जोन करेंटली और ये चीज इनके लिए बिल्कुल भी यहाँ पे खतरनाक हो सकती है बिल्कुल आउट ऑफ जोन यहाँ पे देखने मिलने वाले सो दिस कुड सेट हिम बैक रियली वेरी बैडली हेल्थ किट लगाने की कोशिश बहुत ही अच्छी टाइप पे यहाँ पे इन्होंने हील जरूर किया लेकिन आप यहाँ पे देखिए अकेला प्लेयर लास्ट मैन स्टैंडिंग इज हियर राइट नाउ द स्टार कॉपी गाय जो कि अकेले बचे अपनी टीम के लिए अब देखिए इनके पास एक मिनट किट बचा है बट आई कुड डैम से आई एम डैम श्योर दैट ये हील नहीं कर पाएंगे सही टाइम पे शायद इनकी हीलिंग ना हो पाए यहाँ पे फिनिश ऑफ होते हुए दिखेंगे ना एक्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड बिकॉज मेडकिट को हील होने में मेडकिट को पूरा अप्लाई होने में कहीं काफी टाइम लग जाता है यहाँ पे आई गेस इट टेक्स 6 to 9 सेकंड्स जहां तक मुझे लगता है बट टीम PM की आप बात कर लीजिए फिलहाल 4 के 4 प्लेयर देखने मिलेंगे टीम GG की अगर हम बात करें 17 फिनिशेस फॉर द टीम राइट नाउ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट सम ब्यूटीफुल चिकन डिनर क्या ये चिकन निकलेगा स्प्रे देते हुए दिखेंगे डेडली लेकिन इतने क्लोज कॉम्बैट फाइट के अंदर 6s का स्कोप इज नॉट वर्थ इट एंड यही गलती शायद ये करते हुए दिखेंगे सिनर कुड हैव बीन स्पॉटेड बहुत ही इजीली सिनर को यहाँ पे स्पॉट किया जाएगा एंड मे बी बहुत ही जल्द इनको पिक ऑफ भी यहाँ पे कर दिया जाए तो दैट वुड बी वेरी सैड फॉर हिम इफ आई टॉक अबाउट गॉड तो वो देखो यहाँ पे वेट कर रहे हैं मौके की तलाश में सिनर की हम बात करें हर एक एंगल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता हुआ दिखेगा बंदा MG3 लाइट मशीन गन के कॉम्बो के साथ निकले यहाँ पे स्प्रेस देने की कोशिश बट ही हैज बीन स्पॉटेड लेकिन टेंसाई को पिक ऑफ करते हुए दिखेंगे दैट्स ब्यूटीफुल एक और मेंबर को पिक ऑफ करने की कोशिश हेलिसॉन के ऊपर पूरा डैमेज यहाँ पे जाता हुआ दिखेगा वेल दिस कैन बी वेरी फेटल लग रहा है दैट यहाँ पे एक अलग स्टैंड आता हुआ दिखेगा लग रहा है एक अलग फाइट यहाँ पे देखने को मिल पा रही है यहाँ पे पुशन देने की कोशिश करी जाएगी हेलिसॉन के ऊपर पूरा चार्ज करेंगे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पिक ऑफ सिनर वंस अगेन परफॉर्म्स दैट समथिंग अनटचेबल इन द लॉबी एक और बार वही एग्जैक्ट चीज देखने मिलेगी अब ये फाइट 2v2 की जाती हुई दिखेगी गॉड इज द गाय व्हिच इज गोइंग टू गो इन थॉमसन वन ऑफ माय फेवरेट गन इज गेटिंग यूज्ड एंड देखते हैं क्या होता है यहाँ पे निकले जरूर से थॉमसन का स्प्रे देने की कोशिश क्लोजअप बनाएंगे लेकिन नहीं बन पाया यहाँ पे सिनर की बात करी जाए अकेला प्लेयर देखने मिलेगा MG3 लाइट मशीन गेटिंग स्पेस करेक्ट किया एक और शॉट यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से अब कॉन्ग अकेले बचे हैं दोबारा से अपनी टीम को सर्वाइव कराने की कोशिश करेंगे स्पॉट किया एंड देयर वी गो गाइस विनर चिकन डिनर फॉर टीम GG बहुत ही बढ़िया के तरीके से इन्होंने अपना गेम यहाँ पे निकाला सिनर वाज द गाय विद 11 फिनिशेस इस टीम की तरफ से यहाँ पे टोटल आपको 21 फिनिशेस विद अलोंग विद द चिकन डिनर यहाँ पे देखने मिलने वाला है वेल दैट इज ह्यूज गाइस Oh, well, definitely. Like if it was Capron on the first match, now it's Sinner actually coming on the second lobby here. Absolutely. So Sinner was actually able to give a clutch of more than 10 finishes here, 11 finishes for him. And the team actually amassing a total of, look at that, 11, 20 and 21 finishes domination in the qualifiers right now. And that was something else. So GGL, really congratulations for you guys on getting that winner with chicken. So let's see on the second match, what are they going to do? So second match will also be up, and meanwhile, this is actually Baba Gaming as well as with me is Raider, and we are hosting here Battlegrounds Mobile India Gaming Masters Quest for the Best, presented by MediaTek and also powered by JioGames. So kindly do check MediaTek social handles, which is given in the description below. They have some exciting cool products and also new gadgets, which you can actually see it on the social handles. And meanwhile, JioGames is available on Play Store for download, guys. Kindly do download it and be a streamer of yourself. You can go to JioWatch, you can stream your content that you want, and you can be a streamer as well. So saying that, we will be right back for the next match, which will be for the same lobby, and let's see what GGL is going to do on the second match of the day, and which will be the last match of the day as well. And this is Qualifiers Day 2 Minded, and we will be right back, guys. See you soon. Bye-bye, guys. Incredible. Incredible is being there when you're almost there.
Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G. We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek Hyper Engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love. Guys, let's play football. It's lockdown for all. अब बोलो क्या करेंगे? जियो फाइबर कर ले आओ. जादू के डिब्बे का मैजिक चलाओ. Get high definition games only with JioFiber. अब हर घर JioFiber. Guys, let's play football. It's lockdown for all. अब बोलो क्या करेंगे? जियो फाइबर कर ले आओ. जादू के डिब्बे का मैजिक चलाओ. Get high definition games only with JioFiber. अब हर घर JioFiber. Guys, let's play football. It's lockdown for all. अब बोलो क्या करेंगे? जियो फाइबर कर ले आओ. जादू के डिब्बे का मैजिक चलाओ. Get high definition games only with JioFiber. अब हर घर JioFiber.
Guys, let's play football. It's lockdown for all. अब बोलो क्या करेंगे? जियो फाइबर कर ले आओ. जादू के डिब्बे का मैजिक चलाओ. Get high definition games only with JioFiber. अब हर घर JioFiber. Guys, let's play football. It's lockdown for all. अब बोलो क्या करेंगे? जियो फाइबर कर ले आओ. जादू के डिब्बे का मैजिक चलाओ. Get high definition games only with JioFiber. अब हर घर JioFiber. So hey guys, we are here for the last match of the day, and this is the second match for this lobby right now. And let's see if this match GGL is going to get the dinner as well. And meanwhile, we have 13 teams in the lobby, and this is Sanok map. And kindly guys, a reminder for the teams who are actually playing in this lobby that it is being hosted on a tournament card, and you should not leave your lobby unless you complete both of your matches. It has been mentioned already, so that was a kind reminder from the team as well. So kindly do not leave the lobby unless both of your matches are finished. So meanwhile, that's what we are looking at here. So Sanok map seems to be a little bit thin with the teams here. Kapo is already having a cluster of teams. I think a couple of teams are already there. GGL is still coming in. I think GGL still has a really good chance to actually win this match. And this is Battlegrounds Mobile India Gaming Masters here. Quest for the best, presented by MediaTek and powered by JioGames. And looking at that, coming back to the game, I think we have a cluster in bootcamp as well. I think maybe a couple of teams in bootcamp. And I think this match might also be winner chicken dinner match for GGL, I guess. So what do you think is going to happen, Raider? वेल ऑफ कोर्स अगर टीम जीजीएल इस मैच के अंदर भी चिकन यहाँ पे लेके जाती है दैट वुड बी ग्रेट फॉर देम. बट करंटली अगर हम बात करें एक अच्छी ड्रॉप यहाँ पे देखने मिलेगी, टीम एक अच्छे एरिया में यहाँ पे देखने मिलने वाली है. बट देखिए पहला फिनिश यहाँ पे टीम जीजीपीएल की तरफ से पे निकलता हुआ दिखेगा, GGLZPR. वेल दैट्स आई गेस फुल नेम ऑफ दिस टीम. और यहाँ पे करंटली निकालती हुई दिख रही है अपने फिनिशेस. यहाँ पे देखने मिलेंगे डी गॉड, इनके हाथ में यहाँ पे देखने मिलने वाली एक माइक्रो उसी, उसके अलावा एक देखने मिलेगी. शॉट्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं, इजीली पिक ऑफ करेंगे. एंड यहाँ पे आप देखिए दैट दो फिनिशेस यहाँ पे ऑलरेडी टीम यहाँ पे निकाल चुके हैं और एक टीम को ऑलरेडी अलविदा कह चुके हैं यहाँ पे लॉबी से. वेल दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग. और इसी तरीके से इनका गेम यहाँ पे अगर निकलता रहा पिछले मैच की तरह 21 फिनिशेस तो नहीं निकाल पाएंगे बिकॉज सैनक में उतनी लॉबी नहीं बनी है. यहाँ पे फिलहाल 41 मेंबर्स यहाँ पे आई गेस लॉबी के अंदर प्रेजेंट थे. एंड करंटली उनमें से भी दो प्लेयर्स ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुके हैं. एंड ऑल थैंक्स टू GGLZPR. दैट इज एब्सोल्युटली लवली. बहुत ही बढ़िया कार्नेज एस्टैब्लिश कर रही है. और देयर इज अ लॉन्ग वे हेड बिकॉज 12.5 लाख का इवेंट यहाँ पे आपको देखने मिलने वाला है. दिस इज क्वालिफायर. इसके बाद बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी आपको, बहुत सारे इन्विटेशंस आपको इसी चीज में देखने मिलेंगे. कुछ अच्छी खासी टूर्नामेंट मतलब कुछ अच्छी सारी सीरीज देखने मिलने वाली है. तो अगर ये परफॉर्मेंस इस तरह का डोमिनेशन अगर ये टीम यहाँ पे अप्रोच करके रखती है दैट विल बी ग्रेट फॉर देम. कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इनको काफी ज्यादा ये हेल्पफुल रहने वाला है. बट कॉम्पिटिशन आप देखिए बढ़ता ही जाएगा. इट्स नॉट लाइक कि ये जो मैच है इस मैच के अंदर जिस तरह का इनको कॉम्पिटिशन देखने मिला है, जिस तरह के कार्नेज जिन्होंने एस्टैब्लिश किया, दिस इज इट. इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू इवॉल्व डे बाय डे, आर बाय आर, मैच बाय मैच. इवॉल्व करना पड़ेगा अंटिल अनलेस यू वांट टू एक्चुअली बी द सुपर पावर, बी द मोस्ट एलीट टीम इन द इंडिया. बट यहाँ पे अगर हम बात करें बाकी टीम्स की तो देखिए कहीं ना कहीं टीम्स यहाँ पे कैंप अल्फा की तरफ भी जा चुकी है. कुछ टीम्स यहाँ पे एकदम वेस्टर्न ड्रॉप लेती हुई दिखेंगी. कुछ टीम्स काफी सदर्न यहाँ पे एरिया में आ चुकी है. फॉर एग्जांपल टीम 16 इज देयर इन सेमी, जो कि पिछला मैच में यहाँ पे एक आई गेस सेकंड आई थी. एंड इसके अलावा टीम कैंप चार्ली देखने मिलने वाली है, जो कैंप चार्ली में बैठी है. यहाँ पे क्वेरी के पास यहाँ पे टीम M7 देखने मिलने वाली है. द वेरी गुड कॉन्फिडेंस वाज देयर इन द लास्ट मैच फॉर टीम M7. वहीं अगर बात करी जाए यहाँ पे बूट कैंप के अंदर भी दो क्लैश यहाँ पे देखने मिलेंगे. तो चलिए बूट कैंप पे एक नजर वहाँ पे मार ली जाए फटाफट. देखते हैं बूट कैंप में यहाँ पे किस तरह का सैमन चल रहा है टीम्स के रिगार्डिंग, किस तरह की फाइट्स यहाँ पे चलती हुई दिखेगी. लेट्स टॉक अबाउट दैट फीचर एंड देखते हैं किस तरीके से टीम्स यहाँ पे अभी स्टैंड लेती हैं अपने रिकॉर्डिंग. Well, definitely.
and BTEC Pandu, you can see that three-man squad. They are here. I think one guy could not actually. Maybe he left the room, or like he could not join. I'm not sure. So AKM combo already still going on. M4 already on the hands of Karan here. So I think this is a BTEC squad. I think a squad of engineers are actually in the lobby right now in boot camp, and they are here to actually play Sanok map, and will be trying to get those kills. Level 1 helmet already here. Still looking on the loot section, looking really thin here, and they'll be trying to capitalize on that. So let's see what's going to happen. So Sanok map, we still have 39 people alive, and team number 7 has been the early exit of this match, thanks to GGL team, who were able to wipe them out in an instant in Kao. That was the drop location. An unfortunate incident for team number 7, I should say, or else they could have actually climbed the ranks, maybe spend some more time in the map and maybe try to get some more kills. Meanwhile, team TH is actually looking at here. Ankit already moving up ahead on that ridge. He has a level 1 helmet and the vest. So still, loot sections are not being done completely from the teams. They are still moving around. Rotations are being done already. So the circle, let's look at it. So I think the circle is on the eastern side, and no teams in Kampong or Docks, as we can see. 2 teams in Kawo here already there. So I think the ridge fights will be happening on that end. Lord team is actually there in the quarry area. They are capitalizing on those locations, on those hard covers. Near Lakawi, we still have a team. They have gotten a buggy. So BM Halcyon already here on the cave on top of it. He will be having his looting session, but M7 Tony already closing in on them. Team number 6 versus 7 will be happening here. So team number 6 versus 3. Okay, Tony already closes him on the right side, but Thompson on his hands. It's a really good closing weapon. And there you go. Jiggle already been given, and he actually takes him out. Tony already down to 1 HP as well, but he will be trying to do a 1 HP catch. Oh my god, that was a really good, but jump shot already coming in. And Tony goes down. He gets taken down instantly. And Nanda is actually coming in from the back, but he was not able to make it in time. But will he be able to capitalize on that? Yes, he does. Dempsey goes down here on that cover fire. Nanda gets him down. Halcyon already been knocked out. And now we have 2 more guys. Okay, 1 more guy remaining from team BM here. He's on the backdrop. Will he be going in for the run, or will Nanda be pushing in? Let's wait and watch what's going to happen. So team number 6 already trying to capitalize on this situation, but I think only 1 guy remaining. He can't do much. Halcyon has to be revived. Nanda already coming from the right hand side, and I think he knows there's only 1 guy left. So Devil already comes in from the back. Proper cover fire might be given. Nanda already taking a 1v1. Jiggle shots being given. Nanda goes down as well. So there you have it. Nanda also being lost. So 2 men down for M7 here. And meanwhile, BM gets eliminated. But that was a really unfortunate finish for M7 here. Losing 2 members on this a really early game. Devil is still there, but he was not able to make it in time. And unfortunate incident for M7, losing those 2 guys. But BM gets that early exit on that 12th position. And that's what we saw. A beautiful fight in the cave direction that we had. And excellent finishes from Devil as well. And now they'll be having a lot of loot. Let's see what's going to happen in Sanok, because even if you have 2 guys left in Sanok map, you can still make a lot of difference. So the match is still on, guys. So let's wait and watch. क्या गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे मैच हमारे स्टार्ट होने की, तो फिलहाल स्टार्टिंग से मैच की अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 फिनिशेस आपको ऑलरेडी देखने मिल चुकी हैं. 2 टीम्स एलिमिनेट हो चुकी है. टीम नंबर 7 के साथ ही साथ मुझे यहाँ पे टीम नंबर 6 भी एलिमिनेट होती हुई दिखेगी. पिछले मैच में काफी ज्यादा बढ़िया स्टार्ट था उनका. बट वही टीम बीटेक की बात करी जाए, उनके लिए भी ट्रबल यहाँ पे ज्यादा देखने मिलेगा, बिकॉज टीम ईए के अक्षय की तरफ से ब्रूटल नॉकआउट यहाँ पे देखने को मिला. हालांकि अक्षय को भी पिन पॉइंट यहाँ पे किया जा रहा है. कुशल इज राइट हियर. उसके अलावा टीम बीटेक के आगे यहाँ पे टोगरा पिक ऑफ हो चुके हैं. सो टोगरा को दिया जाएगा एक सक्सेसफुल रिवाइवल, बट दैट वाज अ रियली वेरी गुड फाइट जो कि हमें पीछे यहाँ पे बैकड्रॉप में देखने को मिली थी, व्हिच वाज इन दैट एरिया, जो कि हमारा पास डॉग्स के पास यहाँ पे जो पूरी फाइट देखने को मिली. टीम M7 टू बी एग्जैक्ट यहाँ पे जो फाइट ली थी, दैट वाज लवली. एंड डोगरा को अगेन यहाँ पे पिक ऑफ किया जाएगा, दिस टाइम बाय कुशल. पहले टाइम यहाँ पे अक्षय ने पिक ऑफ किया. एंड नाउ ये जो नेट का डैमेज था वो कहने के इनके लिए काफी खतरनाक बन चुका था. मोलोटोव कॉकटेल इज राइट नाउ. बहुत ही ब्यूटीफुली ये मोलोटोव कॉकटेल प्लेस था. बट द थिंग इज दैट यहाँ पे ये नीचे स्टेयर्स पे थे, दैट इज व्हाई अभी के लिए यहाँ पे बसते हुए दिखेंगे. दैट इज एब्सोल्युटली लवली. बट क्या अक्षय एंड यहाँ पे कुशल किसी तरीके से यहाँ पे इस पूरी फाइट को अपने फेवर में कर पाएंगे, बिकॉज द मैच इज ऑन. और उसी के साथ साथ कहने के कॉम्पोजिशन इस टीम की यहाँ पे देखने को मिलेगी. अक्षय यहाँ पे क्लोजर देने की कोशिश करते हुए दिखेंगे. राइट में यहाँ पे घुसते दिखेंगे कंपाउंड के अंदर, बट अक्षय ड्रॉप डेड यहाँ पे नॉक होते दिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे टीम ऑलरेडी वेट कर रही थी, ऑलरेडी मौके की तलाश में थी. एंड एक्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड. क्यूबीसी इज अगेन अन अनस्टेबल गन. इसको यूज करना थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट जरूर रहता है, बिकॉज 2 रीजन है इसके. पहली तो ये चीज काफी ज्यादा, ये जो गन है इसके रिकॉइल अच्छा खासा है, एंड साथ ही यहाँ पे जो इसका स्पेस है उसका कनेक्टिविटी भी थोड़ा सा अलग है. लेकिन अगर हम बात करें दूसरी चीज़ की, तो वही सैनॉक के मैप. सबसे बड़ा रीजन जो मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्यूबीसी पे किसी का हाथ एक्यूरेटली यहाँ पे नहीं बैठ पाता, दैट इज द मैप. बिकॉज इस मैप को काफी कम जगह यूज किया जाता है, काफी कम लोग यहाँ पे खेलते हैं. एज ए कॉम्पिटेटिव पार्ट भी एक्चुअली गो फॉर मेरा मार. एंड यहाँ पे आप जाते हैं इरांगल के लिए, बिकॉज सैनॉक एक ऐसा मैप है जहाँ पे आप लिटरली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि कौन सा एंगल से आपको पिक ऑफ कर लिया जाए, कौन सा एंगल से आपके साथ फाइट यहाँ पे कर ली जाए. तो ज्यादातर टीम्स अवॉइड ही करती है. व्हेन दे एक्चुअली वांट टू इंप्रूव देयर एग्रेशन, या फिर आप क्लोज कॉम्बैट को इंप्रूव करना चाहते हो,
इन अ प्रॉपर मैप, इन अ प्रॉपर शेड्यूल, तो वहाँ पे कहने की टीम्स खेलती हैं इस मैप को, लेकिन उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ, मैं एंड मेरे साथ ही कहीं ना कहीं ई स्पोर्ट्स जो प्लेयर्स होते हैं ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। बट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा दैट हर एक मैप इंपॉर्टेंट है एंड यूज़ करना इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं आप देखिए टीम जीजीएल की जो किल फीड है वो अगेन आपको शाइन करती हुई दिखेगी, अगेन टीम यहाँ पे फाइट के अंदर एंगेज करती हुई दिखेगी। 3 फिनिशेस फॉर द टीम राइट नाउ एंड नाउ दे आर गोइंग टू टेक फॉरवर्ड टीम एलो एट द मोमेंट। एलो के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं यहाँ पे। डार्क सोल, सीबी एंड एलो एंटर आर अगेन गोइंग टू फॉल बैक। सुमित इज अगेन टेकन डाउन एंड देयर इज नथिंग ही कुड डू। Well, definitely team number 9 gets eliminated on the, 12 position. Okay, team number 9, only one guy gets eliminated. So we still have Hunter already moving in with his vehicle. So bikes are being used here. I wouldn't advise, even using bikes in Miramar or, even in Sanok, because it's a really, really frail vehicle to be used. Shots can be connected really easily on a single stretch. And meanwhile, Hunter already comes into that hardcover compounds here. And meanwhile, looking back at those bootcamp fights, we also had Team TH on the backdrop. We had... Okay, TH already pushing in on that warehouse building, so I think it will be against TH versus BTech, which might be happening really fast. And in this position, Kushal is being completely being sandwiched between those two teams. I don't think he has any idea of leaving bootcamp right now, because if he wants to leave, he can't do that. So Rishi already comes in towards the other side of bootcamp. We can see him already prowling on the center buildings. I think it might be Kushal taking a 1v1 against Rishi. And yes, Rishi already looking for those footsteps. He knows somebody is there. He's already taking those TPP angles, but Kushal is still on the top of the terrace. He is there poised. He's not giving any foots. So Rishi's still here, coming in, checking every nook and corner if there's any team here. But right now, we have to check at BTech. BTech already coming in from the left-hand side. They are also coming in towards the main building. Rishi will be giving him those calls. So he needs some support right now. So I think this might be the interesting fight that we're waiting for. So BTech versus TH. Who is going to get it? Or will Kushal be able to do a third party on all these guys? He's still waiting on top. Okay, he gives the footsteps right now. So Rishi must be knowing it right now. And yes, he's coming up the stairs. And I think Rishi versus Kushal might be happening anytime right now. And Harshit already on the backdrop. Rishi taking a TPP. And I think Kushal is being spotted completely. And they will be popping in some nades. It's only a matter of time before he gets eliminated. So let's see how it's going to happen. So what do you think, Raider, is going to happen now? Yeah, something will go happen. And यहाँ पे अगर हम बात करें टीम ये की, देखिए डिफेंड करने की कोशिश यहाँ पे करती हुई दिखेगी। मीनवाइल अगर टीम जीजीपीएल की बात करी जाए तो उन्होंने यहाँ पे पैराडाइज रिजॉर्ट के पास में जो स्क्वाड थी उनको ऑलरेडी यहाँ पे टेक डाउन कर दिया। एंड अगेन यहाँ पे कॉम्बैट देने की कोशिश अगेन क्लोजर आता हुआ दिखेगा। दैट वाज ब्यूटीफुल। एक बंदे को पिक ऑफ यहाँ पे जरूर किया, कोशिश यहाँ पे जरूर करी जा रही है कौशल की तरफ से कुछ अच्छा, कुछ मैजिकल स्टेप्स यहाँ पे लेने की। बट फिर भी यहाँ पे देखिए फर्स्ट एड पे फोकस यहाँ पे करेंगे, फटाफट इजिली हील अप करते हुए दिखेंगे। लेकिन शायद फर्स्ट एड की आवाज सुन ली गई होगी एंड को क्लोजर देने की कोशिश। डैम गुड भाई, क्या बात खेल रहे हैं यहाँ पे, क्या बहुत ही अच्छा फाइट यहाँ पे लेता हुआ दिखेगा बंदा। बट हाथ में क्यूबी से निकाली, पीछे ध्यान नहीं दे पाए थे, लेकिन इसीलिए एलिमिनेट हो गए। अदरवाइज यू कैन सी दैट कुशल वाज ऑन फायर। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम उनका यहाँ पे देखने मिला था। बट टीम बीटेक फाइंड्स दैट अपॉर्चुनिटी, और ये अपॉर्चुनिटी को टीम बीटेक अपने फेवर में जरूर से यहाँ पे लेने वाली है। तो देखते हैं टीम बीटेक यहाँ पे क्या कर पाती है, बिकॉज अंकित 77 इज स्टिल अगेन इनटू द फाइट, और अगेन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रबलसम फाइट के अंदर देखने मिलेंगे। दिक्कतें बढ़ चुकी है इनके लिए। तो देखते हैं हाउ ही विल एक्चुअली मैनेज द होल फाइट, किस तरीके से टेक डाउन यहाँ पे कर पाएंगे, बिकॉज कॉम्पोजिशन टीम्स का और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए जा रहा है, और भी ज्यादा दिक्कतें बढ़ती हुई जाएगी इस टीम की। तो देखते हैं किस तरीके से हैंडल करेंगे अपनी पूरी फाइट को, बिकॉज अंकित 77 हैज अ ब्यूटीफुल गन दैट इज थॉमसन। 50 बुलेट्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, बट सामने है पूरी के पूरे 3 प्लेयर्स। तो रिवाइवल अपने प्लेयर को देना इंपॉसिबल है, और फाइट के अंदर एंगेज करना भी इस समय इंपॉसिबल सा होता हुआ दिख रहा है। तो टीम बीटेक के कारण यहाँ पे देखने मिलेंगे टोगरा एंड पांडू ऑल टुगेदर आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस गाय। ढूंढ रहे हैं मौके की तलाश में कि कैसे इस बंदे को पिक ऑफ करें, किस तरीके से फिनिशर्स यहाँ पे निकालें, किस तरीके से टेक हिम डाउन। एंड देयर वी गो, यहाँ पे क्लोज अप आता हुआ दिखेगा। 3 के 3 प्लेयर चढ़ने वाले हैं, तीनों चढ़े यहाँ पे, लेकिन नॉट इवन अ सिंगल प्लेयर नॉकड आउट। एंड यहाँ पे फिराश अंकित को फिनिश यहाँ पे किया जाएगा जस्ट लाइक दैट, बिकॉज 3 प्लेयर का जब पोजीशन आता है कहीं ना कहीं, यू नेवर नो दैट कौन से फ्लैंक को कवर करें, नॉर्थ एरिया कवर करें, वेस्ट एरिया कवर करें, या फिर ईस्ट एरिया कवर करें। डायरेक्टली पोजीशन के अंदर यही चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डिलेमा में डाल देती है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड। अभी यहाँ पे देखिए पहली जोन हमारी इवेंचुअली श्रिंक होती हुई दिखेगी बहुत ही जल्द, एंड वी ओनली हैव 8 टीम्स एंड 25 प्लेयर्स स्टिल लेफ्ट इन द लॉबी। तो बहुत ही जल्द ये जो जोन है वो आपको श्रिंक होती हुई दिखेगी। यहाँ पे टीम्स काफी ज्यादा कम बची हैं कैंपाओं के अंदर। टीम नंबर 14 इज वेटिंग एंड टीम M7 इज वेटिंग नियर क्वेरी। एंड वहीं अगर बात करें जाए टीम नंबर 2 की, तो वो भी यहाँ पे क्वेरी के पास में ही लूट करते हुए दिखेंगे, वहीं से अपना एंगल निकालने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें आगे टीम्स की, तो वहाँ पे फिलहाल टीम नंबर 16 भी देखने मिलेगी कंपैरेटिवली कैंप चार्ली के पास एंड केव के पास। वहीं अगर हम बात करें टीम नंबर 5 की, दे आर इन द पाइनान एरिया। एंड इफ आई टॉक अबाउट टीम U7,
तो U7 के अकेले प्लेयर यहाँ पे देखने को मिलेंगे. बॉस इज राइट हियर एंड यू कैन सी दैट. इफ आई टॉक अबाउट ड्रैग, तो आई गेस ड्रैग इज आउट ऑफ जोन एंड वो प्रीटी मच AFK यहाँ पे बैठे हुए हैं. दैट इज व्हाई ही इज गोइंग टू गेट आउट एंड यहाँ पे इजीली फिनिश ऑफ होते हुए दिखेंगे. वहीं U7 बॉस की बात करी जाए, वो जोन के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे. अगेन वी हैव अ गुड ड्रॉप. यहाँ पे ड्रॉप आता हुआ दिखेगा विद दिस ब्यूटीफुल ग्रोजा. दिस इज ड्रॉप नंबर 3. ग्रोजा के अलॉन्ग यहाँ पे देखने मिलने वाला है लेवल 3 वेस्ट हेलमेट एंड बैकपैक अलॉन्ग विद 60 एमओ ऑफ 7.62 एंड अ ब्यूटीफुल पेन किलर फॉर 60% प्लस 60 बूस्ट यहाँ पे. उसके अलावा इनके अपोजिट में अगर हम बात करें, टीम GGPL के मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे इजीली लूट करते हुए दिखेंगे फटाफट से ये टीम. एंड मोर ओवर ये टीम 6 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुकी है एंड राइट नाउ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट सम मोर फिनिशेस. द बैक टायर ऑफ दिस स्कूप हैज बीन बस्ट. दैट इज व्हाई इनका जो रोटेशन है वो थोड़ा सा स्टफ यहाँ पे जरूर से रहने वाला है. Well, definitely GGL again coming into those zones. So they already successfully eliminated 2 teams right now so far in the game, and 25 people alive in the lobby so far, and they seem to be having really good loot as well. So level 2 vest, level 2 helmet, and level 2 bag already. The 3 health kits and 15 bandages for God here with an M4 and a 3x also here. So I think he's pretty much happy on the loot section that he wanted, and he seems to be having a double M4s on his bag. And looking at that, he'll be playing it out. And meanwhile, team number 13, GGL, will be looking to get that winner winner chicken dinner. Meanwhile, we have all the remaining teams already coming in. So 8 teams lobby here. And meanwhile, near GGL, we have Lord Lucifer, Red Zone Mahesha, Imran, as well as Golu. So this team, tier number 2, are completely being camped. They are not actually letting anybody know that they are here. So QBZ with the 3x already there on the hands of Mahesh. We can see Lord Golu already completely prone down as well. Level 1 helmet for him, level 2 vest as well. 1 first aid and 5 bandages in. So no energy drinks, no painkillers. Imran quite on the foot with Lord Lucifer will be closing in on those locations. But tier number 13, GGL, is really close towards him. So I would say that caution is to be advised. They shouldn't be giving out any shots. They shouldn't be giving out any footsteps. They shouldn't be giving out any heads out. They shouldn't be giving any movements out at all. Because if they get noticed, then definitely they'll be taken out. So BTech also coming in after the successful fight in boot camp. They are into those rotations right now, closing in on the center. Let's look at this zone right now. Is it going to be a hard shift? We have to wait and watch. So Kampong already has a team. They are outside the zone. So again, the zone closing in on GGL here, and they have the center zone right now. So Lord already giving some shots onto M7 team, and now they have the attention of we have team GGL on their attention. And this thing, I think, what is going to happen? GGL will be trying to push in on that squad. They'll be trying to eliminate Lord here. And eventually, Lord will be trying to gatekeep, M7 or who else is actually trying to get onto the zone. So, team number 10, which is actually BTech, is also coming in on the back end. Dogra and, Pandu, they are actually coming in. Even though they are a 3-man lobby, they have actually gotten as much kills as they want. And I think this could be a game of anybody, but still GGL looks poised here with those kills and the loot that they have. I think they have a really good chance to actually get a dinner here. या ऑफकोर्स कहने के डिनर निकालने के लिए कहने के इनके पास काफी अच्छे खासे स्टांसेस देखने मिलेंगे. यू कैन सी दैट प्रीटी मच यहाँ पे टीम्स क्लोज आती हुई दिखेंगे. इनके पास 3 टीम्स आ रही है. टीम बीटेक व्हिच हैज सक्सेसफुली टेकन डाउन द होल बूट कैंप, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे टीम लॉर्ड देखने मिलेगी जिनकी तरफ से अभी फिनिशेस नहीं निकल पाए हैं, हालांकि एक्सपोज जरूर से करते हुए दिखेगी अपनी पोजीशन को. वही टीम GGL की स्क्वाड की अगर बात करी जाती है, ऑलरेडी सक्सेसफुली अचीव्ड 6 फिनिशेस. तो वेल दैट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. वहीं अगर हम बैकफुट से बात करें, सदर्न एरिया से आपको टीम M7 आती हुई दिखेगी जिनकी तरफ से 4 फिनिशेस आई गेस देखने मिल पाए थे. 4 या फिर 3 फिनिशेस, या 3 फिनिशेस जिन्होंने टीम BM को टेक डाउन किया था. If we talk about team number 8, this is the team जिनकी तरफ से अभी फिनिशेस नहीं निकल पा रहे हैं. एंड यहाँ पे आपको याद होगा गाइस, दिस वाज द टीम जिन्होंने यहाँ पे पिछले मैच में काफी ज्यादा अच्छा खासा स्टैंड होल्ड किया था इन द टॉप 3, बट फिर भी गाइस वहाँ पे नहीं निकाल पाए थे. वहीं अगर हम बात करें टीम नंबर 14 की, सम स्टंट्स आर गोइंग ऑन. यहाँ पे ये वही टीम है जिनकी तरफ से नेट्स वगैरह थ्रो किए गए थे इन द लास्ट मैच. सो ये टीम अभी यहाँ पे लकावी को लूट करके निकलती हुई दिखेगी आराम से. अच्छे खासे फर्स्ट किट यहाँ पे ये लेने वाले, हेल्थ किट्स उठाने वाली है टीम. आप यहाँ पे देख पा रहे हो उनके पास मात्र 1 फर्स्ट एड किट देखने मिलेगी. दिस गाय हैज 3 फर्स्ट एड किट एंड दिस गाय आल्सो 3 फर्स्ट एड. ऑल टुगेदर इनके पास 10 फर्स्ट किट्स देखने मिलेगी. लेकिन फाइनली यहाँ पे फाइट के अंदर सिनर देखने मिलेंगे. सिनर अगेन शाइन से यहाँ पे एक अच्छा नॉकआउट करते हुए दिखेंगे. एंड नाउ ये वो गलती करने वाले हैं जो गलती शायद मैं एक्सपेक्ट ना करूं. एंड एक्जैक्टली वही चीज देखने मिली. ओपन एरिया से यहाँ पे भागने की कोशिश करी, इन्हें दिखा कि एक नॉकआउट कर लिया, तो चलिए यहाँ पे निकलते हैं, कुछ फिनिशेस निकालते हैं. एक्जैक्टली दैट वाज द बिगेस्ट लॉस ऑफ दिस टीम. लेकिन यहाँ पे रिटेलिएशन जरूर देखने मिलेगा गॉड की तरफ से. बहुत ही अच्छा खासा नॉकआउट यहाँ पे गॉड ने किया. बताएंगे क्या रॉकी को सर्वाइव यहाँ पे किया जाएगा. इफ रॉकी विल बी रिवाइव्ड, तो हाउ ही विल बी रिवाइव्ड. देयर वी गो. रॉकी कैन बी रिवाइव्ड बिकॉज इनको एक अच्छा चांस मिल चुका था, एक अच्छा मौका मिल चुका था. एंड इस एरिया के अंदर, इस गैप के अंदर रखी, इसलिए इनको रिवाइवल यहाँ पे दिया जाएगा. मीनवाइल गाइस, थर्ड जोन इज गोइंग टू श्रिंकन, एंड बहुत ही जल्द हमारी ये थर्ड जोन भी श्रिंक हो जाएगी. उसके बाद आपको 4th, 5th, 6th एंड 7th जोन यहाँ पे देखने मिलने वाली है, जिसके अंदर कुछ अमेजिंग फिनिशेस, कुछ अमेजिंग स्क्वाड वाइब्स, कुछ अमेजिंग क्लचेस आपको यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं. टीम GGL ZPR इज अगेन ऑन द बैक फुट राइट नाउ. अगर हम बात करें इमरान को पिक ऑफ करने में सक्सेसफुल यहाँ पे रहते हुए दिखेंगे.
Team number 2 is again on the crosshair right now. Imran was taken down. We have Mahesh, we have Lucifer, we have Golu in the scene. And meanwhile, all the other teams are going to come closer. कहीं कहीं पास आने की कोशिश करते हुए दिखेंगे. काफी ज्यादा फास्ट मोमेंटम देखने मिलने वाले हैं टीम्स का. और देखना चाहूंगा कौन एक्चुअली ओवर पावर कर पाता है पूरी फाइट को. बीटेक पांडू अगेन वेटिंग फॉर द होल पर्सपेक्टिव. किस तरीके से इनके किल निकलेगी, किस तरीके से हैंडल करेंगे पूरी फाइट को, ये जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है. बैटल कहीं कहीं सुपर पर यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा. लॉर्ड गोलू वंस अगेन लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट सम मोर फिनिशर्स. बीटेक की टीम यहाँ पे ओपन एंडेड घूमती हुई दिखेगी. लिटरली वो काफी ज्यादा ओवर एक्सपोज्ड है एंड इट माइट टेक देम ओनली वन सिंगल शॉट. एंड देखो शॉट लिया यहाँ पे फिलहाल, लेकिन पांडू का क्रॉसएयर इनके ऊपर बना हुआ था. लॉर्ड गोलू को दिया जाएगा एक इंस्टेंट ट्रेड आउट एंड वही चीज आपको यहाँ पे देखने मिली. दैट गोलू वाज टेकन डाउन. फिलहाल GGPL की तरफ चला है, GGL की तरफ चले तो GGL अगेन ऑन द फायर राइट नाउ. यू कैन सी दैट यहाँ पे गोलू के बाद यहाँ पे कहने का पिक ऑफ निकालने की कोशिश ये टीम लगातार करती जा रही है. बहुत ही अच्छी तरीके से ये कॉम्पिटिशन अपने आप में होल्ड कर रही है टीम. अगर हम बात करें अगेन जोन शिफ्ट है, तब जोन इज गोइंग टुवर्ड्स भान राइट नाउ. जहाँ पे आप कहने के स्पॉन होते हैं उसी तरफ हमारी पूरी जोन जाते हुए दिखेगी. टीम GGLZPR इट्स प्रीटी मच क्लोज टू दैट जोन एंड यहाँ पे वो निकलती हुई दिखेगी फटाफट जोन के अंदर. 9 फिनिशेस फॉर द टीम स्टिल इन द 4 जोन राइट नाउ गाइस. 9 फिनिशेस ये टीम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुकी है इस मैच के अंदर भी. 15+ फिनिशेस करके अगर ये टीम चिकन निकालती तो दे वुड बी अनबीटेबल. वैसे अभी भी अनबीटेबल है बट फिर भी एक अच्छा स्कोर खड़ा करने में क्या ही जाता है. Well, definitely, GGL is actually going into those that final zone, जहाँ पे actually you don't have any squads who actually come in. Right now, Team X is actually coming from the right hand side, but meanwhile, GGL will be having eyes on team number 10, BTEC, who is actually pushing in on that squad. Team number 2 is being completely wiped out here. So 7 teams remaining in the lobby right now. Boogie already having that bike. It actually gives an additional speed in his rotations, and that's what he's doing it. So team number 8 also closing in on that zone. Boogie already coming in from the back, and now he's actually inside the zone. Now they'll be taking that rotations. Mental Rush already closing in on them. So GGL versus team number 8 will be happening here on this Regis. So I think they already knew that there's a team here. They must have heard the footstep. They must have heard the motion here. Now team M7 coming from the backdrop. We also will be having BTEC here coming in. So I think they want to zone block BTEC. Yeah. They don't want them to cross out. So I think it's only a matter of time before GGL actually starts firing at BTEC, because they'll be coming out in the open, and yes, that's what we are looking at. So let's look at BTEC right now. Are they crossing in? Are they getting those shots? If they are, then they are in deep trouble. Yes, there you go. Shots are being fired. I think BTEC is in a bad position right now. Karan goes down as the first one, and now the remaining people will be in a deep trouble. So zone block being done. Excellently done from GGL here. Beautiful zone reading capabilities from them. Dogra already has a really slight cover, but he has to pop in a lot of smokes to actually go ahead. But team number 8 also on the top. They will have to work a miracle. If team number 8 actually pounces on GGL team, that would actually give the time for BTEC to actually close in into those compounds. So let's see what's going to happen. All they have to do is just wait for a minute. Wait for 2 minutes to run it out. Let the teams fight. In midst of those fights, they can actually cross the roads. यस ऑफ कोर्स. वहीं अगर टीम नंबर 5 की बात करें जाए, उनकी तरफ से भी काफी अच्छा खासा क्लोजन बनता हुआ दिखेगा यहाँ पे. काफी बड़े कॉम्पोजिशन, बट देखिए यहाँ पे कार्नेटेड का ब्यूटीफुल शॉट यहाँ पे देखने मिला है. इसकी वजह से मैजिकल यहाँ पे हो चुका है सुपर डुप्लेट. ही हैड लेवल 3 वेस्ट यहाँ पे, उनके पास लेवल 3 का हेलमेट यहाँ पे देखने मिलेगा टू बी एग्जैक्ट. दैट इज व्हाई ही इज स्टिल स्टैंडिंग इन द लॉबी. बट द थिंग इज टीम GGPL वंस अगेन यहाँ पे स्टैंड करते हुए दिखेंगे. GGL के यहाँ पे मेंबर दोबारा निकलते हुए दिखेंगे. फिलहाल टीम नंबर 8 के लिए यहाँ पे दोबारा से मुश्किलें खड़ी की जाएगी. वंश के ऊपर डिस्प्ले देने की कोशिश टीम नंबर 8 के लिए भी यहाँ पे काफी मुश्किल चढ़ता हुआ दिखेगा. यहाँ पे वंस अगेन तांत्रिक वाज टेकन डाउन बाय टीम M7. That is absolutely beautiful. Mental Rush also taken down. तांत्रिक की टीम को किया जाएगा एलिमिनेट. यहाँ पे 10 फिनिशेस टीम ऑलरेडी कर चुकी है. एक्जैक्टली अगर हम बात करें GGL की यहाँ पे जो फाइट है वो कहने के काफी ज्यादा एक अच्छा टर्न लेके आती हुई दिखेगी लॉबी के अंदर. वंस अगेन टेकन डाउन. टीम नंबर 8 के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है. मेंटल रश वाज द ओनली गाय लेफ्ट, लेकिन उनको भी किया जाएगा टेक डाउन. एंड जस्ट लाइक दैट पूरी की पूरी टीम कह देगी अलविदा. यहाँ पे अगर टीम नंबर 8 की बात करी जाए, टीम नंबर 8 की तरफ से CCR स्टार को भी देखने मिलेंगे. पिछले मैच में भी आई रिमेंबर ही वाज द ओनली लास्ट सर्वाइवर, और इस मैच के अंदर भी अपनी टीम के लिए आखिरी सर्वाइवर देखने मिल पाएगा ये बंदा. और देखिए 0 फुट्स यहाँ पे देते हुए दिखेंगे. बिल्कुल मूवमेंट यहाँ पे नहीं कर रहा है बंदा. बिल्कुल जानता है दैट फाइट को निकाला जाए, बट इनके बगल में एक प्लेयर आके बैठ गया था. इनको पता ही नहीं था यहाँ पे फिलहाल कहीं ना कहीं, एंड दैट इज व्हाई सिनन मैनेज टू टेक हिम आउट. बहुत ही अच्छे तरीके से पिक ऑफ कर रही है टीम GGLZPR इज जस्ट लाइक प्लेइंग अ चार्म. एक बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रही है गेम एंड इजी फिनिशेस यहाँ पे निकालती हुई दिखेगी टीम. मानिए ना मानिए, टीम के 13 फिनिशेस हो चुके हैं. एंड टीम BTEC अब इनके क्रॉस एयर पे देखने मिलेगी. डोगरा ऑलरेडी बीन पिक्ड ऑफ. पांडू इज द गाय लेफ्ट राइट नाउ. पांडू ट्राइंग टू रिटेलिएट, पांडू ट्राइंग टू डिफेंड. यहाँ पे 7 फिनिशेस टीम BTEC निकाल चुकी है, बट दिस इज द लास्ट फिनिश फॉर देम. एंड या टीम BTEC is eliminated. Now we have 3 teams and 9 players still left in the lobby. Team M7 with 5 finishes, and after that we also have team 14 with the highest manpower of the lobby, but with the lowest number of kills. Well, definitely. Team number 14 has been completely out of the fights. And look at that zone. Nobody is actually in the zone right now. M7, who are actually currently out of the zone for most of the maps, and they are actually entering it. But they will get spotted from Salad here. And yes, he goes down. And I think that's Blade. Okay. So Blade actually spots him out, takes him out as well. So Devil goes down.
So Devil kill will be confirmed. Radio actually tries to come in, and now Blade. This was a really bad move from him because he's currently outside the zone. He shouldn't have actually taken any shots. Even though in a really low lobby, you have all the time you want. You can actually go on the backside as much time as you can take, because it's such a less lobby. So taking those shots, getting that knocks will actually give you one kill, but definitely your team will not reach onto that point where they can get any position points. So that's what happened. So Blade trying to come in, but Radio is not actually looking to actually make a zone block. He's going for those position points. So top to mid scenario, and yes, he comes in and close out, and he gets taken out. So Radio gets an easy kill as well. So Blade gets taken out, but Radio gets spotted from GGL here, and he gets finished. And now Rocky already, that's a top 2 team scenario. So let's see what's going to happen. It's a 3v3 scenario right now. Aggregor already here. So the team with the lowest number of kills, as you said, is here against the team with the highest number of kills. So that's what this lobby is, but anything can happen in Sanok, and whatever happens in Sanok stays in Sanok, guys. So let's see what's going to happen here. So 3v3 fight right now, but Sinner, Rocky, and everybody already here. Sinner pops in a smoke, puts in a few bandages, but Rocky already has the numbers. He has actually spotted it out. He marks it out for his team. God already there taking a flank. Sinner must have spotted him out, and now Nuke already down to 10 HP. He has been really low right now. Aggregor on the back end already coming in, and I think this match also goes to GGL, guys. Back-to-back dinner might be on the way. Yes, Aggregor goes down. Now it's a 3v2 fight right now, and they'll be trying to move in close and close. So the positions must have been marked. God already moving in up close here. M4 already in his hands, and he's having a scope ready. So I think Sensei already up ahead on those covers, and yes, he goes down as well. There you have it. God also goes down. The last man has been spotted. Nuke is the last man remaining. So it's a 3v1 fight right now. And I think GGL is actually moving ahead for again another 20 kill dinner. So is it 20 kill or maybe 17, 18 kill dinner, I guess. So 18 kills dinner, and Sinner again coming in with 10 finishes here. So beautiful gameplay from this guy, and he actually deserves a shout out, man. This guy has been showing some exceptional gameplay for the team, and he must be the best assaulter the team has, and definitely a really good gameplay from Team GGL here. A beautiful teamwork, the way they zone blocked, the way they took the drop fights, and the way they rotated, everything has been on point. Beautiful gameplay, and congratulations for Team GGL on getting that winner chicken dinner on your second match as well. So that was some beautiful gameplay, guys, and you were watching Battlegrounds Mobile India Gaming Masters here, quest for the best, presented by MediaTek and powered by JioGames. And along with me, we have Raider as well. So it was very beautiful for us to host the matches on day 2 as well. So you're watching Qualifiers day 2. So these matches will go on for 4 days continuously. Qualifier day 3 and day 4 as well. We will be with you guys. And that was an amazing experience. So kindly, guys, if you want to visit MediaTek social media handles, that link is given in the description below, where they have some exciting products, gadgets, everything else on offers as well. So kindly to check it out. And also you have a JioGames app available on Play Store. Kindly to download it, and which has a Jio Watch platform exclusively for streamers. So those who want to create content, stream yourself, you can actually use the Jio Watch handles as well. And meanwhile, this event is being presented by MediaTek and powered by JioGames, which is happening for a prize pool of 12.5 lakh rupees, and we are looking at the underdog phase qualifiers, which is actually happening right now, and really exciting matches for the day 2 that we have seen. And this was the last match for the day. And saying that, thank you so much for coming in, guys. Those who are here, kindly do subscribe to the channel, also hit the like button as well. This match has been live on 4 different platforms, on Facebook, on JioGames official YouTube, and also on Jio Watch, as well as on Jio Live. So that's what we had. And saying that, we would actually like to take a leave. So Raider, I think it's better for us to take a leave and let the guys to have enjoy the winning streak that they had. So thank you, guys. Love you all. Sayonara. Hasta la vista. Bye bye. Guys, let's play football. It's lockdown for all. अब बोलो क्या करेंगे? जियो फाइबर कर ले आओ. जादू के डिब्बे का मैजिक चलाओ. Get high definition games only with Jio Fiber. अब हर घर Jio Fiber.
It's lockdown for all. अब बोलो क्या करेंगे? जियो फाइबर घर ले आओ, जादू के डिब्बे का मैजिक चलाओ. Get high definition games only with JioFiber. अब हर घर JioFiber. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G. We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek Hyper Engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G. We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek Hyper Engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love.
Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G. We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek Hyper Engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. It's the #1 power source to smart speakers all over the world, and it answers to names like Alexa. You may ask, what's the technology behind the smart speaker technology? The answer, of course, is MediaTek. By powering the brands you love. Incredible. Incredible is being there when you're almost there. Incredible is capturing that perfect shot for your best friend, not followers. Incredible is playing a game that never ends. We understand what we put in the technology positively affects what you get out of it. That's why we have a simple philosophy. Incredible in, incredible out. With MediaTek Dimensity, expect incredible, all on 5G. We've made 5G speeds up to 20% faster than others. The dedicated 4K HDR video capture engine, cameras that give incredibly detailed photos, and the latest MediaTek Hyper Engine gaming technology. With MediaTek Dimensity, expect incredible. MediaTek powers 2 billion smart TVs around the world. Let's look at the Chromebooks powered by MediaTek. They've got everything you need in a laptop. Won't you say why you're a stranger now? Your eyes escape mine when I sit you down. Don't you feel like we're holding on onto a fairy tale, but the magic's gone? Been months of buffing the blushes and faking the butterflies. Wake up, yeah, I'm kicking the castle down. Ooh, yeah, I think it's time to
to notice we've been losing touch.